piss themselves. मैं 2 पराठे खा लेते देर में। घोस्ट यार रुक जा, मैं खाना पड़ता है। घोस्ट मांग वेलकम। डीगल दो। Can I get this? नया वाला डीगल दो, अपग्रेडेड नहीं दे सकता, अपग्रेडेड नहीं है मेरे पास कुत्ता। नया वाला अपग्रेडेड। ये ले घोस्ट। वेलकम इज ऑनलाइन। तो मत स्लेयर पे है ना, स्लेयर पे घोस्ट मांग ये ले क्लासिक का। फिनिशर नहीं बट बाकी सब तो है। क्या करना है, पुश करना है कि मिड लेना ए बी की आली रे, बी की आली डिफॉल्ट वॉल डाल यहां जाके। हर राउंड जानी चाहिए वो वॉल, चाहे आप बी चाहे बी जाए। मैं हूं ना साथ में वॉल के लिए। ऑन माय मार्क। कर दिया, बैकस्टेप लगाना। फॉलो कर दिया है, फॉलो कर दिया है। ओ भाई ऐसे पे बाव में हम जरूर ऑल स्टिक कर रहा हूं मैं। ये जे भैया बैक स्टेप कुछ चल लगा दिया। ऑल स्टिक यहां। अरे इसका ट्रिप्स है मतलब। क्या मॉल डाली है? साइफर लो, एक एचपी। He's out. साइफर 80 भाई। मार दिया। अरे वेलकम, तू क्यों नहीं ऑल किया? आई जस्ट वॉल डाउन हुई इसकी। मैं फाइट तेरा करना था बट मैं फाइट के बीच में था बाबा जब डाउन हुई। बैक स्टेप देख के एमजे। हां स्टेप से इधर है। जेगल ले रहा हूं। अब फेड 30 टैग लेकिन हील हो गया होगा आई गेस। Bot coming back. फेड पे क्लासिक थी, 100 एचपी होगा। 30 सेकंड। 30 seconds left. T60 90 मारा, देखा 90 डक कर जाते हैं एक तो साले मिनट से पहले। वो गाना गा रहा था इसलिए पिंगू ने भेज दिया उसको वहां पे कि मोमेंट है उसका वो चालू है। मोटिवेट नहीं कर रहा यार तू, वेलकम हाइप नहीं कर रहा भाई। हाँ ना भाई, गाना गा रहा है यार भाई वॉल नहीं करता भाई यार। गाना इसका। वाइपर 70 था यार, वो जेट मरता ना। एक्सीडेंट। अबे वो वॉल हमेशा राउंड चालू होने से पहले ही डाल दिया चलेगा, कोई भी टिक नहीं। 8 से पुश कर रहे हैं वो लोग आपको। 2 लोग पुश किए, 3 लोग पुश कर रहे, 3 लोग पुश कर रहे हैं, 3 लोग पुश कर रहे हैं, डॉग वॉक कर रहा है। मार 55। ब्रो दिस वाइपर इज गन ले सकता है तू जेट का। फैंटम थे Last player standing. ब्रो नाइस वन 70 टैग इसका है ब्रो। Bro, you do know you slowed yourself there, आई right? नो बट उसको टाइमिंग नहीं पता ना मैं कब निकलूंगा उस कोने से। They look like us. लेकिन बंदे 3 है ना भाई तेरे सामने। तो एक तो रिलोड पे गया, दूसरा भागने लगा इसलिए तो निकला। ये टाइम पे तू जो वो करता ना इधर जाके ये खोल के वो जाता उधर। चल सुनो मेरी वाइपर इधर या फिर इधर खेल रहा है, ठीक है। उनका साइफर ये वॉल डालना तू अर्ली होता राउंड ही डाल डाल दिया। तो रहा हूं, रुक जा। पहले ही डाल सकता है मेरे भाई, उनको वो डिफॉल्ट वॉल है मतलब। जाना है क्या? ए भी जा सकता है पर सुन ना, बी का ऑयल बुटाते, ए का ऑयल बुटाता गुस्सा। कोई एक ए होल्ड करो, मैं बी का ऑयल लेके आया। वेलकम एक बात सच बोलो, ये और क्या राउंड खेलना बंद कर दे यार। अरे अल्ट है ये राउंड भी एंटर। वाइपर वो लोग मिड पुश कर रहे थे। स्काई लिंक नाइस। स्काई मिड लेन डेड लेट्स गो। वेट एक पुश था। आना साथ में पुश करेंगे ना उस पे। आ जा। ए मेरा उसको लग रहा मिड क्लियर है। मेरा स्लेयर हील नहीं है। हां देखो आराम कर भाई। स्लेयर फॉलोइंग डाउन नाउ। आ जाओ, राइटिंग होगा। वॉल दूंगा मैं, जाओ आगे चलो। है कि इधर भी है। बैक साइड एक आई गेस हो सकता है, बैक साइड हो सकता है अभी थोड़ा वो साइड पे गया था। 8 से मार 8 से तो आया। अरे 25 टैग साइफर यार, तीनों एंट्री चले गए हो। साइफर गन लेगा मेरी। लेट एमजे पिक फर्स्ट।
फ्लैंक देखो फ्लैंक आ जाओ वाला बड़ा गन ले बैक साइड और आठ बैक साइड और आठ मैं सेफ खेल रहा, ये लोग मारे तो अल्ट है मेरे पे। One enemy remaining. क्लोज नहीं नहीं बढ़िया। हल्कन गन आउट अरे मैं था तो उस बार से जो तू बोला मारे तो मैं फिर अल्ट कर दूंगा। अरे अभी बट अपने टीममेट है भाई अपने क्या कर रहे है हैं ना 8 पे वो लोग इन्फो ले रहे हैं, इन्फो लेकर ये पुश मार रहे हैं, ठीक है। यस मैं तो सब अरे नहीं फोन पे चैट कर रही। बाय कर लो उनकी, कौन भी डाउन है। तू होल्ड डाल वाइपर थोड़ा ऐसा यहाँ से ऐसा ब्लॉक करने की कोशिश करना है ऐसा। हाँ यही कर रहा हूँ ब्रो, मैं यही कर रहा हूँ। ये देखना। हाँ ऐसा कर, वो यहाँ पे गैप मत दे बस वो ना। कहां जा रहे हो? बी आए वो ये लड़का है, देख लो। इन्फो पे खेलेंगे ना, सीरियस खेल रहे भाई। क्लियर अभी नहीं रुक जा, अभी वॉल मत देना तू। आई हैव डॉग, आई कैन डॉग फ्रॉम हियर। अबे तेरे तो रोको क्या डॉग? पॉज लेके जा रहा मैं डॉग। कॉलिंग अप। एक्टर क्या? अरे पिक पॉज एक हॉल राइट साइड। हॉल से पिक किया एक आई कैन फ्लैश थ्रू दिस। इट यू कैन प्लांट। ऊपर कैम देख रहा हल्का वॉल गोइंग डाउन। अबे कहां ये भाई, ये कहां छुपा है जेट यार? 120 जेट 120 भागा। ये पॉकेट भाई नहीं लोग क्या क्रॉस एक्सक्लेमेशन स्टार क्रॉस है वो Last player standing. 74 उसका है। स्टार क्रॉस ये लिखा। मेरी कॉल सुनो, ये मिड पे आगे जाके इन्फो लेने का मतलब नहीं है, मिड पे मारो ना 8 पे। चल मिडी चल साइबर मिडी यहाँ खेल रहा है, यहाँ से इधर खेल रहा है और कुछ नहीं खेल रहा हो चुका है। यार ठीक आपने ट्रिप्स पे वही खेल रहा है बस। सुनो जेट आगे आ रहा है फेड के साथ, लाइक लो दिस पिक कर रहा है, मारो एक्सक्लेमेशन दिस। क्या चल रहा है अपने पास? ए मार्शल दे। Help a girl out, would ya? Cheers, mate. आई दिस भाई जो नाम लिखा है STAR डॉगिंग मैड 8 बोलो। एक डोर, दोनों वो इनिशिएटर। एक यहाँ पे ब्लाइंड हुआ। मैं को वाइट कर फ्लैश कर रहा है स्मोक थ्रू। कैन फॉल बैक। 3 मिड है, दोनों इनिशिएटर और जेट। वाइपर ए पे है। जेट पुश किया। कम बी ये पुश में एज वेल ए करना है उसको। इसका स्पाइक। गाइस गो एक जेट डिंग 120 Spike down. Attacker spawn. 110 स्काई 120 जेट। ओ भाई एक साइड पे कहां खेल रहा है? आजा भैया साइफा है भाई आ गया इधर यार। स्काई 110 जेट 120। रुक जा एक मिनट, मैं तो को लिख Last के दे player रहा standing. Spike down. पीछे देख। एंडी भाई मिड अच्छा ले रहे हैं यार वो। मिड मारो सालों को। अरे सुनो ना भाई, एक चीज, ये वॉल हर राउंड चाहे अपन बी जाए और ना जाए, ये वॉल डाल ए की तरफ खेलेंगे, 8 की तरफ खेलेंगे, मेरा है बी निकलना होगा, बी निकल के तेई वॉल पे खेल सकते हैं। और वहाँ पे सुन, ते को स्टार्टिंग में वही होल्ड करना है, यहाँ पे खेल, यहाँ पे अपना फ्लोर वाइपर ऑफ डाल। मेरे पे अल्टी बी जा सकते हो तुम लोग, ए पे जाके अरे जो अभी बोला क्या बहरा है क्या? खेलना डिफॉल्ट खेलना थोड़ा, डिफॉल्ट खेल ले थोड़ा बोल। अरे मिड पे थोड़ा हैवी खेलो। तेरे इधर मैं अगला डॉग कर वो डॉग कर रहा हूं। बैक ले लो कोई। वहाँ पे वाला वॉल डाल है। डॉग पर काउंटर पेट 40 जाए नहीं है। मेरा डोर देखो। ए क्या कोने में है? लेफ्ट साइड कनका से लेफ्ट साइड। वाईफाई का वॉल पे वाईफाई ए दो है डोर्स के पास दो है। होल्ड अरे बी पे जाने का साउंड दो ना, फिर बी को ए बी फेंक करो ना अभी। जेट पिक नाइस। काय भी था वहां पे। देखो कहां पे है। पीछे जा, वाइपर पीछे आ, स्पाइक लेके आ। तेया काम लेट आएगा। स्पाइक नहीं मिल पाया। आ जाओ। एक और है तेरे लेफ्ट में, एक और है। काट अकेला है वो। मोबाइल किधर है हल्का नो? मैं अटका हूँ भाई, मैं सीज हूँ भाई। एक चीज समझ सुनने नहीं आती, सबको अपना ही चलाना है भाई। फिर अरे तूने कहा बी पे आवाज दे तो मैं आगे गया थोड़ा सा। देखो नहीं बोल रहा मैं। मेन था। एमएन कुछ होगा शायद।
ये पुशअप नहीं किया वो। Blocking sight. 30 seconds left. वाइपर अल्ट है अपने पास। डगआउट होल्ड कर, डगआउट रह सकते हैं। ये लो हाँ नहीं, पहले टैप करना। सीरियस खेलना है, जब कोई कॉल देगा सुनना नहीं है भाई। हाँ ठीक है इसको भाई, एकदम- उसका हम लोग गए थे, लाइक तू जो भाई- बोला ना। डिफॉल्टिंग खेलो ना थोड़ा यार, समझ में नहीं आता। भाई जैसी अल्ट क्लिक करी साला सामने आ गया। तो आएगा। और सुनना, यहाँ पे खड़े हो, देखो एक पता तो यहाँ से ऐसा ऑल प्ले हाथ में, यहाँ पे बाउंस का फेंक दे। उनको गेसिंग पे रख कि तू भी आ सकता है, बट तेरे को बी अप्रोच करना नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस। बी पे साउंड करना और बी पे घुसना। यहाँ तक घुसा है तू बिना हेडफोन के खेल रहा है, ईयरफोन पहना है। आर्ट इन्फो ले रहा यहाँ पे अरे इतना आगे जाने की जरूरत नहीं है। अब कर, रुक जा, अब कर, मार दे उसको। है। डाउन कर। आई थिंक उसको मिड इन्फो नहीं मिला। वॉल अप का कि सीधा डाउन का इंस्टेंट। जेट डैश डॉट मिड पे था। वो तीनों मिड ही खेल रहा है, ए पे फेड खेल रहा, सॉरी ए पे वाइपर खेल रहा और एक वहां पे खेल रहा। दो, एक आर्ट खेल रहा है, दो कनेक्टर खेल रहा है और एक ए एक बी। यहाँ पे जेट, अबे यार जेट ए चल लो ना, जेट यहाँ पे तो वो स्मोक कप पे क्या। हाँ लेट्स जस्ट गो आ जा वापस कम है। और काउंटर वेलकम स्ट्रीम गाइस, लाइक ठोको बे। वेट से लार्ट ही कैन पुश। देखो आना है जल्दी। इधर से ऑफ करो, इधर से ऑफ करो, इधर से ऑफ करो। मेरे पास डॉग है, दो फ्लैशेस पे वॉल है। आई कैन अल्ट आल्सो। चलो इफ आई गेट अ पिक अल्ट कर लो। है ओनली अब अभी काइंड ऑफ वॉच्ड अप हो गया गेम। मैं डॉग सबने कर ही लिए। राइट साइड राइट वाले को ले पिंगू, लेफ्ट से वॉल की मेरे। फ्लैश करो उसको। 1 HP हो। अबे यार 30 seconds left. विनेबल है। गन उठा। बस कैन वी टेक डगआउट, से डगआउट हो ना। बैक साइड गन गन ले ले वहां पे। या गन फ्लावर, एक फ्लावर। नाइस One enemy remaining. नाइस वन। सीडी नाइस 55 वो पीछे है। आई एम गोइंग बैक। शॉटगन आया, शॉटगन। मैं सेव खेल रहा अरे पिंगू पीछे है। पहले कैन यू टेक फर्स्ट कांटेक्ट, पहले कांटेक्ट ले सकते हो। 75 एक गोली का है वो। यू हैव टू मॉलीज ब्रो, टू मॉलीज। अच्छा ठीक है, मॉली कर दे। टैप अप किया तो एक भाई हाँ हो गया, मुझे अपलोड करना है। थोड़ी बची है, थोड़ी हो गई है। 40 क्लिप्स हो स्पाइक गए। Thrifty. नाइस। देखा लाइक जस्ट प्ले डिफॉल्ट। कॉल सुनो, जीतेंगे भाई। पता नहीं सबको मिड राउंड में गायब हो जाते। अरे नहीं, स्टार्ट ऑफ द राउंड सुनते हैं, मिड राउंड पे कुछ भी कर लेते हैं। बस सुनो कॉल, खेल से निकलता मैं। हाँ लाइक My ultimate is ready. वो बात नहीं है। केजल, वी कैन जस्ट गो। या चल इस बार वी को स्लो चलेगा। वी हैव वर्ल्ड स्वीप। मैं डॉग से उसका ट्रिप तोड़ने की कोशिश करता हूं। मेरा अगर मेरा डॉग पकड़ा गया तो तोड़ देना पिंगू हैंडल दे। Need a drop. Thanks. सुन टेको डॉग। ए सुन, वॉल पहले ही अप कर देना, जब अल्ट रहेगी ये क्लियर करना, फिर हॉल जाना, ठीक है? अभी नहीं, मैं वॉल बोलूंगा देखो कब अप करना है। ठीक है। फ्लैश कर। रुक जा, मुझे कैच कर डालने दे। आप एक वॉल है वो। हां ठीक है करूं? नहीं यहाँ पे जाके अल्ट कर पहले। ओके जे ओके Alarm bot. अल्ट कर। क्लियर डॉग पे लेफ्ट वाला नेवर माइंड। एक ट्रिप तो तोड़ गया साइड का। ठीक है होल्ड करो, ठीक है अल्ट तेरा मॉली पे क्यों कर रहा है मुझे? मैं अल्ट करूंगा वी पुश सिटी। और पैक गाइस Spike down B. वन वेलकम डिटेन। वॉल अप कर। बॉल गोइंग डाउन। अबे स्टंड। नाइस 1 एक्सपी। स्ले होल्ड दैट। मैं पीछे देख रहा हूं। डॉग कर रहा हूं। डॉग के साथ पुश किया। नाइस। एक्चुअली बस जिंदा है। अबे ब्रो शॉट का ब्रो व्हाट द फक। भाई मेरे बुलेट्स इधर उधर गए यार। फक। हेडशॉट के बाद कैसे? आई थॉट आई किल्ड हिम। मेरे को लगा मर गया, इसलिए मैं शॉट ही निकला इसको मारने के लिए। नेक्स्ट ट्राई। फक भाई वो मैं तो भाई अरे सुनो ना, ये वाला प्लान की जरूरत थोड़ी है। यहाँ पे करो ना, वही बॉल जहाँ ऊपर पे करना चाहिए। यहाँ करो ना प्लान। एक सेकंड वही। बात सुन लो। अरे मेरी बात सुन लो यार, मैं स्पैम हो रहा था इस साइड, 3 गोली मुझे उधर ही पड़ गई थी, मुझे आगे जाना पड़ा। मैं कोव डाल रहा हूं, डालते तू वहां चल हाँ गया। वेलकम। देखो ये वॉल करना था, तू वॉल क्यों नहीं कर रहा? आई डोंट नो।
तू कर ना भाई, उसका है आई नो, बट तेरा इंपॉर्टेंट है ज्यादा। अल्ट डाला था अल्ट के मालूम है, बट तभी भी लाइक उसका अल्ट है, देखो करना है तभी वॉल, कुछ भी हो गया तो कौन सा भी इस पे देखो अल्ट करना ही है वॉल। बाय दे बाय कर ऐसे स्लेयर ले कुछ भाई गन ले मको दे हाँ, स्लेयर, लेट मी टेक और मको और लेने दो, ये ले स्लेयर वो दे मको दे, लेट मी टेक और लेने दो। क्या क्या कर बस कर, रुक जाओ। My ult, what's this? Reloading. वॉल अप का है। Bro, Cypher will always लेट play मी here. ट्राई टू गेट वन ऑन वॉल, डाउन कर वॉल डाउन कर। करूं डाउन ये ले। हां कर दे Trip तोड़ रहा उसको। मैं वाली वॉल डालता हूँ। He's on the right, he's on the right. Reloading. रुक जा वी डोंट हैव टू गो। अरे wall में flash to it. मैं वॉल डाउन होती थी, वॉल अप का। ऑल ये Trip कर। 30 मारो। आई विल फ्लैश। कहाँ से इसका इतना क्लोज कहाँ से आ गया भाई? Spike down B. वॉल के थ्रू जाना बंद करना पड़ेगा यार। हां अपन अभी नहीं करना था, अपन घुसने रहे थे ना। घुसा मार्शल था मेरे पास में, मुझे लगा तू पीक ले, इसलिए मैं पीछे ज्यादा पीछे का वॉल किया ताकि तू पीक ले पाए, एटलीस्ट कुछ तो कर पाए। तो दे पिक पे खेल ए रहा मिड लेते हैं, मिड स्लेयर यहां से डॉग करना डायरेक्ट राउंड का शॉट पे। भाई अपनी वॉल डाल के चलेगा भाई। हाफ करो नेक्स्ट राउंड पे आ रहा है मेरा। वाली वॉल दो ना, उनका फेड और जेट यहां पे खेलता है एनर्जी ना। साइफर साइड हाँ ये वॉल का यहाँ पे कनेक्टर पुश है। कर डोर पे। Scout destroyed. ले है रे उसका भी इस फ्लैश कर, मैं जाऊंगा। अबे Still there. फ्लैश नहीं दो स्टिल भी मैं यार 2 है मिड पे। Last player standing. Enemy spotted in. यार जब हम बी जा रहे हैं तो बी पे 3 है, जब हम मिड आ रहे हैं तो मिड पे 4। अरे वो एकदम फास्ट रोटेशन ही कर रहे वो अरे वो एक ए पे बिठाया है, एक बी पे बिठाया है, 3 मिड खेल रहे हैं तो उनका अगर रोटेशन। मिड आया तो फिर वो मिड आ रहा है, वो एकदम फास्ट रोटेशन पे खेल रहा है। अरे एक काम करो ना, फिर सीधा ये घुसो, क्या दिक्कत है? चलो इतनी जल्दी आ ही रहे हैं तो। वॉल डाल क्या उन लोगों को लग भाई वंडरफुल समझ जाते हैं कि ए आएंगे, आए तो वॉल डाल दिया, वॉल है ना भाई। मुझे वॉक अप कोई आ भी नहीं रहा। वहां तक वॉक वॉल डाल, करते हैं। आजा। पिंगू अचानक से डैश मारना, मैं तेरे हेल्प में यहाँ पे पिक करके निकलूंगा। साउंड नहीं वही पर हाँ चलेगा, ज्यादा अच्छा है, मैं क्रॉस कर सकता हूँ। और जाने दो, मुझे क्रॉस करने दो वॉल पे। If I get the और बाइक कैनल। अभी नहीं वो दे दी। I'm ready for the wall. Call क्लियर देना। आल्ट कर वॉल कर। डैश कर पिंगू। डग आउट वाइपर। अरे I'm mollied, wait. Dug out clear. which is- डग आउट डेड बैक साइड। Flower flash कर रहा हूँ। प्लांट कर, तू प्लांट कर भाई। अच्छा फ्लावर ने 8 है। I need heal. अब फ्लावर फेड। Swarm grenade. क्लियर उधर आया आ गया Hey, flower out. फ्लावर आउट है। रुक जा पिंगू। 899 इसका है। तेरा लेफ्ट वॉल किया मैं। One enemy Nice. remaining. नहीं पता। कैन बी लाइक Reloading. बैक साइड। देखना भाई। Last round before the switch. Don't save anything. Last chance to use our stuff. बी फेक हल्का सा। ए आई कैन बाय स्लेयर, वी कैन बाय यू। Help a girl out. इधर कैस्केट डाल। क्या वही कैस्केट डालूंगा, एक फ्लैश का और वाइपर की वॉल आप होके डाउन होगी। Cheers, mate. मैं बस मिड पे एक बार एक कोई स्पॉट ही मत हो। नहीं हाँ ठीक है, एक्चुअली हाफ ठीक है, मैंने दिखा रहा नहीं। चाहिए तो एम कंट्रोल लेना, एम कंट्रोल लो भाई। मुझे एमएन कंट्रोल कहां से ले भाई? साइड कैसे जाएंगे फिर? हाँ ठीक है अपन जाएंगे, बस एमएन होल्ड करो बस, अगर आए तो बी फेक करना है तो एम कंट्रोल लेना है ना। कर वॉल अप कर दे जरा। कर दिया। मिड पे जेट है, डैश आउट किया है। फ्लैश कौन हुआ? अपना किया कि तू हुआ? एमजे कॉल वो हुआ तू म्यूट है एमजे। खाली है, रुक जाओ, होल्ड कर रहा हूं। एमन पूरा तो लेने दो। जेट मिड था, डैश किया है। जेट था मिड पे, आई थिंक स्काई पे। वॉल अप कर, वापस वॉल अप कर। रुक जा, आन तो दे भाई। मैं सोलो नहीं कर दिया है। अल्ट पॉइंट ले सकता है।
जब ये वॉल dog है? वाले अल्ट पॉइंट घुसो अरे ना कर डॉग कर इधर को डॉग होने दो कटर पे यहाँ पे क्यों है? रूम में डेप्थ तो क्या करता बैक साइड कहाँ है मेरा उसको मेरी एंट्री वो है साइड पे डेड मैं Let me अल्ट plant खाया guys, उसका I want- फ्लैश करो मैं हाँ यू कैन अल्ट वहीं पे अल्ट कर वहीं पे अल्ट कर वहीं पे अल्ट कर दे हाँ ब्लाइंड डॉट आर्ट इन आया लो है वो नाइस दो डॉग आउट मैं दो wall डॉग कर रहा। आउट दो डॉग आउट दो डोंट पिक देम दे हैव डिडंट गो One enemy. भागा हो नाइस लेट्स बोला ना नशेड़ी खेल रहा हूँ मैं आज तो मिड होगा फिर मोल डाल रखी मैंने क्या जी हल्का हाँ, कोई ना बात नहीं जरी क्लिक कर ये मुंह पे मार बढ़िया Nice one, nice डिस्क्या one. हो गया डिस्क्या मारा उसको बोला हाँ, ना नहीं, देख इसकी आवाज एकदम डिफरेंट है प्लेयर शेयर Help a girl out, would you? बस टाइमिंग पे वो खेल वाला पता है टिक्किया वाला गाना। ये लोग वाले ना फुल टाइमिंग पे पता है वो लोग भी यार, अच्छे हैं तो अपने को घोसट- टाइमिंग पे खेलना पड़ेगा अपने को टाइमिंग का एडवांटेज लेना पड़ेगा वैसे ही जीत सकता पर यार घोसट दे घोसट अरे है ना वेलकम के पैसे मांग लिया कर अरे हाँ मैं भूल गया था अरे Bingo. डबल इनिशिएटर उन पे वॉच आउट आज वो भी आएंगे मैं मेरी कॉल पे वॉल अप करना अभी नहीं ठीक है बी पे आवाज आई है वेट करना और अभी। तेरा जब 20 वाइपर वॉल पे आया बिल करो पे करो वॉल अप करो थोड़ा कर दिया भाई रिवील हो क्या मुझे 10 भाई हमने 8 छोड़ रखा है नाइस वन बढ़िया रे केजे दे आर गोइंग बी Wall down, वॉल के हेल्प कर रखा है वॉल कर डाल दिया वो करती है One enemy remaining. नाइस लाइन आउट आउट है इसमें ये क्लोज है Down B. यहाँ पे Reloading. 38 है लास्ट बस मुझे एक्सपी थी जब 20 कहाँ पे इसका क्या यहीं पे कहीं लगा हुआ ऊपर ठीक है मेरी जो डी का- पे मत वन मैन नहीं आई गॉट अक्रॉस डिफॉल्ट पे क्या है छोड़ दिया इजी नो ऑनियंस आई एम वॉलिंग ऑफ आई हैव फ्लैश Hawk out. Blinded. क्लोज ब्लाइंड हुआ क्लोज है स्लेयर के कांटेक्ट पे मैं ये एंगल के देखा तू क्लोज देख अपना प्लेयर स्विंग करो तेरे देखो वॉल लॉक करने का सोचा मैं वॉल ऑफ कर दिया मैंने बाहर से कर वालकन भाई ज्यादा क्यों सोच रहा 30 1v3 seconds left. वालकन उसके बाहर से कर भाई वॉल गोइंग डाउन उसको दिखेगा हल्का सा स्लेयर को No. जो भी है टाइम ही नहीं उस पे चूते पे आना है उसको आगे लेगा भी अभी उसको 1v1 दे दिया वालकन ये गंदा सा वॉल है ये भाई 1v1 मत दो मुझे लगा नहीं ऐसे टाइम पक्का पे उसको वॉल वापस ऑफ करने का सोच Player रहा मैं है। I'm like bro why you thinking so much just play on हाँ ना contact भाई। easy game I can't. स्लेयर मार्शल Help a girl out, would you? heal ने लिया मैं बट I have dog and flash ये ठीक है। वालकन तू मैप के बाहर से भी ला सकता है ऐसा घुमा के बाहर हाँ आई नो तो और एक कैस्केट था मैं कैस्केट भी डाल ही सकता था थॉट मैं उसको वही like, player मिड अपने मिड केयर चाहता था। मिड केयर हाँ मैं वक्की लेके बैठा मैं आन दे उनको अबे वो वॉल डाल और यहाँ पे अपना स्मोक डाल कर तो रहा हूं भाई आन तो दे रुक तो स्मोक जा कहीं पे डाला तू तो सेवर कैम है सुन स्मोक क्या डाला कर नेक्स्ट राउंड से मैं हूँ लाइक मैं एक छोड़ दे उसका कैम डेड हमने ए एंट्री छोड़ रखी फॉर सम रीजन यहाँ पे सेवर है पे मेड मे पे Mid देखो मैं देख लूंगा स्टेयर आराम से मेरा पूरा दो फेड और वाइपर ए कोई तो आर्ट आके देखो ना मैं ये जमीन देख सकता मैं ए जाके देख रहा हूं मॉली दिया हट जाओ ओके तेरा है वो लर्क करेंगे सेवर से लिया सेवर से लिया वॉल अप फॉलो करना फॉलो मैं फ्लैश करूंगा इससे तू पिक कर लेना नहीं मैं नहीं पी लेना नहीं पी ले रहा हूं दो लोग मैं ब्रो व्हाट सिर्फ उस पे यार एक और रुक जा फेड भी था रुक जा नेवर माइंड सेवर ऑन अस वॉल डाउन कर ये स्पाइक है पुश कर रहा हूं आएगा वो पीछे यहाँ पिलर आई थिंक ना आई डोंट नो मे पे आई गेस क्लोज है लो नाइस वन अपन बस देख अपने को सिर्फ टाइमिंग पे खेलना है इन दोनों टीम का सेम निकाल लेंगे बी पूरा छोड़ दो यार बस एक एयर कर लो भाई ये वैसे बात तूने गलत करी एम दोनों टीम का सेम नहीं उनका खराब है अरे वहां पे वॉल नहीं वहां पे कुछ नहीं अबे देखो बी का भाई
बी का डाल तो रहा हूँ भाई, ए का बिल्कुल नहीं डालूंगा कुछ। अरे मैं हूँ ना, मैं दूसरा स्मोक करनी हूँ क्या? अरे तूने तो कहा कि ये वाली बॉल डाल दे, मैंने डाल दी। पगला गया क्या? मैंने बोला वॉल वही और यहाँ पे स्मोक स्मोक मतलब और अच्छा 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 अच्छा। ए मैंने वॉल अप क्या जल्दी? मैं रोटेट कर रहा हूँ, मैं रोटेट कर रहा हूँ। कर दी सारे मार दे, टच होते हुए आएंगे, सारे मार दे। आउट डैश आउट चर्चे क्या Planting? मेरे साथ कोई आओ ना, मेरे साथ कोई आओ ना, I'm gonna flash to this. Spike planted. एक और डगआउट नाइस वन। दो विनेबल गन से गाइस, इधर होल्ड विनेबल। टैरेट लगा साइफर मेन, आई कैन वॉल। कर एक डिफॉल्ट है बेबी, स्टिल डिफॉल्ट वन। Enemy. नाइस। Down. डिफ्यूज कर। बहुत बढ़िया। भाई को दे दो, तू बाइट ना। अरे बा आने तो दे उसको, वाह। Swarm grenade out. इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स। No, you don't deserve my invention. भैया अरे क्या कर रहा है? चेक अरे आज तक वो मार्शल कभी उठा ही नहीं, तो चेक कर रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा। बस बहुत पैसा है। अरे वेलकम, पता है क्या, जो तू ये वाला जो स्मोक मांग रहा है ना, हाँ अगर मैंने वहाँ पे स्मोक डाला तो वो बहुत मोटा स्मोक है, वो पुश कर जाएंगे, देख ले। सुन ना, वन वे इधर बता, ऐसा ले, यहाँ खड़े हो, यहाँ पे मार, वन वे हो, यहाँ खड़े हो। अरे साले इतना टाइम नहीं है। छोड़, अंदर डाल, ऐसा चिपका के डाल जल्दी। अबे मॉली डाल दे, तेरे पे आ रहा है, तुम लोग पे आ रहा है। मॉली डाल दे। टर्रेट है बॉयज। अबे मॉली डाल दे बोल रहा हूँ, डाल ही दिया। अबे कुत्ता मार, क्या करो साले? मैं क्लास के लिए टैलेंट है, क्लास के लिए टैलेंट है बॉयज। गाइस दे आर टेकिंग आउट, आई कांट वॉच इट। जाओ हेल्प करो, वेलकम, जाओ एक और आई एम रोटेटिंग। गो अमीर नहीं, वॉल दे दी उनको, खेलेंगे वो लोग। ये ज्यादा हार्ड है। आई थिंक दे आर फकिंग अराउंड मिड ओनली। इधर ही अब भाई कर दिया 28। डोंट टैलेंट है कि चिल कर। ए गन पे खेलना भाई। वो गन लिया। नहीं लिया, नहीं आया वो इन। ब्रो इधर भाई, इधर एक और अप ब्रो, एक और अप 28 लो है वो। One enemy remaining. एमजे कुछ भी आया दिया उसको लग। कहीं आ सकता है यहाँ देना पे। होता है यहाँ पे। अबे तूने अपनी फैंटम पे बड़ी चेक किया? हाँ ए मैं आप बाटा पिंगू इसके एमजे की फैंटम देख। अरे मैंने उठाई हुई है। हाँ वही इसलिए बोल रहा बता हूँ। फैंटम बता, दिखा टेक को बता। बड़ी देख पता कहां है? ए उस पे एक्सपी पे एक्सपी आले इधर बूस्टेड रेडियंट। भाई अब तो क्या भाई, MJ drop दियो। इतने गेम से यही देख रहा हूं मैं। भाई ऐसा कुछ नहीं होता। पिंगू वो फुल शील्ड technology खेलने बहुत बहुत अच्छा कॉमन हो गया भाई ये रेडिएंट ही भाई। द फक ब्रो। आई एम ओपिंग बी भाई, मेरे पे शॉट ही नहीं था लास्ट Yeah, राउंड। हाउ हाँ अंदर कोने पे यार बाउंस कर, अंदर डाल और भाग जा। बड़ा वॉल नहीं इधर भाई, वॉल नहीं इधर। ठीक है मैं जा वॉल डाल ये छोड़ दिए हो गाइस। ये पे इतने लोग क्यों हैं? डाल जल्दी वॉल डालो आपका। मैं फ्लैश कर वॉल के थ्रू। इंस्टेंट आप वो भागेंगे। मैं भी यहाँ दिख रहा हूँ, फिर मैं भागूंगा। जेट डैश ऑन मी। He pushed on you guys. या किल्ड हिम। I can't see shit. यार मैं भी ब्लाइंड हुआ यार। भाई दो हॉल्स। स्पाइक ड्रॉप। साइफर Spike down B. 120 यार। One enemy Alt है। remaining. हाँ क्या ये हाँ वॉल किया था। नहीं इधर देख, इधर ही है साउंड साइड है। पे। टैप है, ही वोंट बी। Spike planted. हाँ क्यों अल्ट क्यों नहीं कर रहा? कहाँ लेके? हाँ कर अरे देना मैं था। बहुत लो था, मुझे आईएनजी भी मारता था। बट फिर ना उसको नहीं ट्राई तो कर। ओ अभी भी आईएनजी में मारा, देखा ना चलता हेड दे दिया भाई। वो डिस्प्लेस के लिए भागता ना, उसमें मार सकते थे। भाई वॉल थोड़ा जल्दी कर यार भाई। वेलकम भाई पर सबसे पहले आगे वॉल फेंक। वॉल फेंक के और फेंकना है भाई, उसके वन वे बाद में सीख भाई। भाई वन वे नहीं, मैं नॉर्मल ऑयल भी डलवाया है भाई। क्या नॉर्मल यार चीज को तो ड्रॉप दो ना, एक को तो ड्रॉप दो ना। और दे दे। ट्राई पेट्रोल क्या ओनली अप करना सही कर देंगे। मैं यार देख रहा हूँ वॉल डाल पे रिसर्च आजा। एमएन भाई वॉल कहाँ जाके गिरा ये? गाइस मैं रोटेट कर रहा हूं। एमजे तू डोंट रोटेट ब्रो, यू आर द एंकर ऑफ पिंगू दिस बैठे साइड। bro। जीसस
जीसस भी एंकर है। नाइस वन पिंगू। पिंगू एस। Big bitch. I flash. अरे वेलकन why would you do that ना? Blind हुआ है वहाँ पे। ये जल्दी गिरेगी, ध्यान दे, गिरने वाली है। मैं ये देख रहा। I have right. I have art. I'm on rotation बता दे। इधर main viper right side. One enemy. दोनों वाइट पे भी है, come on. ए से टीम। Ace और के Guys नहीं। I'm sorry। अब वेलकन अरे वो मुंह पे आ गया और इसका फ्लैश जा रहा है भाई। मर जा। I'm रुक sorry। मर जा तो उधर भाई एस था भाई। I know, I wanted आने to, देता। सबसे पहले मैं ही बोला ये, but वो like एक एजल्ट है, we can instinct bro, we गोली have दब like गए। so many ults to retake bro, chill. ओह नाइस वन ट्रिक अच्छी। अरे स्लेयर उसका रिकॉन वगैरह छोड़ो यार आप। एक खेलो Wall डाल, bro, like they bro, if I peek there I don't। अरे तू ही ब्रेक कर भाई एमजे, तू ही यूटिल डालता है देखो। Yes bro, तू वहाँ देखो वहाँ बैठना है, then you have to क्या break it बोला? here. हां मारा क्या तू? I'll come if they're not here. लेकिन आगे जाके फ्लैश करके आता क्या? आठ मिड है, अरे Time bro, I'm at that time. I'm watching big. हेवी आठ वेलकम छोड़ भाग जा वेलकम निकलने का ट्राई Double कर mark, double भाई, बहुत बंदे सब है। अरे ऑल फाइव भाई, बचा। nice. Welcome, पीछे। I'm भाई high. कोई आर्ट देखो, मेरा कोई आर्ट देखो। प्लांटिंग I am ulting them. दे इको गाइस एक दो। चर्च There's ये कौन है शॉटगन? वो गन है, उस पे फैंटम है। व्हाई वुड यू फ्लैग मी? bro, I thought you had a casket there. One enemy remaining. नो अबे यार 120 लाख। तेरा casket था ना? अरे नहीं, मैं आया, वो खत्म हो गया, मैं मिड फाइट हूं। अरे तुम बी पे भाई तीन मैं जने मत minimum खेलो रे, casket मेरे पे देख वाट के लग रही है। I saw that casket. हेलो पे मैं ए पे ऑफ कर रहा, बी पे ऑफ कर रहा, पहले बोल रहा भाई। तू बी पे ऑफ कर भाई, लेकिन एक जना स्विच करो फिर एक ही तरफ। तो जाओ मुझे शॉटगन पड़ी भाई मुंह अबे पे। इसलिए लाइक वो कैस्केट बहुत जल्दी, लाइक कैस्केट शायद 6 सेकंड का है या 5 सेकंड का है, हट जाता है। Bro, I saw it. I flashed through it. हां, End बट of story. मैं उसको मार रहा हूं, मैं फुल फ्लैश, फुल ब्लाइंड। Because we just talked about वेलकन गन मांग discipline ले, yesterday. एमजे से bro. गन मांग ले वेलकन। अरे मैं आगे कुछ नहीं था। Can someone spot me? I think it's gonna be B or something. ए वॉल ए फेड। कमेंट Check तो नहीं कर आई रहा विल हूँ। अल्ट इफ यू वांट। या ही टेक पे ए फेड है, जेट फेड वाइपर, साइफाई भी है, स्काई भी है, ऑल फाइव। Okay. आई कैन ओके नॉट, एमजे अकेला मत We जा। have caged. आई एम डेड है जल्दी कैसे आ अल्ट गए किया वो हूं लोग सीधी? भाई। पांचों है बोल रहा हूं तो सुनता है कि नहीं कॉम्स? आराम से पिंगू। गाइस वाइपर अल्ट है। The god में flash हुआ नहीं। I have dog. Wait, I have dog. जल्दी कर जल्दी कर। Headshot. आई किल्ड हिम दो, प्लीज बैक साइड। लेट्स गो नाइस वन। भाई, उसकी ट्रिप पे अटैक क्लियर ले क्यों? तू अटका, मैं तोड़ा था भी। मैं नहीं तोड़ा, तू मैं ट्रिप पे अटैक तोड़ा के भाई मैं के जितना बहुत लेट तोड़ा है, तेरे को पता है? अरे मैंने भाई मैं एम कर रहा था ना भाई, फ्लिक करके एम करके तोड़ा भाई। क्या तेरे अटकने से पहले साइफर इसको दिख गया था, पता है? वही भाई मैं बंदे पता अटका, मैं साइफर को मारा, फिर भी मैं लाइक ट्रिप तक एम लेके गया हूँ, फिर टूटा वो। तो भाई मैंने भी तो वाइपर और जब मारा है ना। एमजे तू कॉल सुन ना ढंग से, गन आउट खेल। मैं जब बोल रहा हूँ 5 पॉप है तो जेट ऑब्वियसली पुश करेगा ना। Hey, Baba, MJ, how are you the first one to rotate there? जब तू एंकर बस आई एम फास्टर देन। अरे स्काई लिसन तू ए पे खेल, वो ए पे अकेला पड़ता है फिर। नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, ये राउंड ठीक है, ये राउंड ठीक है, नेक्स्ट राउंड चला था। भाई ये क्या ठीक लैग है है? ब्रो ये क्या हो गया? है इसका है। मैं पीछे से खेल रहा हूँ, हम ठीक है? flash। मेरे पास अल्ट है, मैं पीछे से खेल रहा हूँ। वॉल कर दिया है। आजा तू ए देख, मैं उधर निकल रहा है ताकि ते वॉल डाउन होगी, मैं वॉल दूंगा। ए जा मैं हूं। मैं वॉल डाउन करना कर दिया। वॉल मांगना पिंगू, वॉल दू। नहीं मैं वॉल डाउन मांगा। गिव मी अ कॉल फॉर वॉल। Blind हुआ। मत अबे कर यहाँ से ए आठ या ये वॉल अप स्मोक अप। अरे इसका वॉल अप हुआ, ही किल्ड मी स्पैम भाई। वाह तीनों साइफर अकेले नहीं है, बाकी तीनों उधर है। कर दिया साइफर डेड है। बाकी तीनों ऑल थ्री इधर।
अबे हेलो One enemy भाई remaining. वो यहाँ तक कैसे? वैल्कन वो रन कर गया, मैं रिलोड कर रहा था। भाई तो कॉल तो दे, मैं 140 दिया एक तो उसको मुझे फिर भी। कैसे पता चलेगा? नहीं वो भी आपको हाइड कर मारा रहा उसके था, बाद। हाइड कर रहा था वो भी। भाई तो दोनों मेरी गन से- किस्मत उसको 140 दिया हूँ मैं। हट बे फैंटम, ए वैंडल तो भाई नहीं खेलने का फैंटम। थोड़ा बहुत मेरे फैंटम पास का हेड अल्ट तो है, लगा। रीटेक कर लो ये वाला गेम, ये राउंड जी। एमजे रिक्वेस्ट कर उसको ड्रॉप दो बस फेमस। रीटेक हो जाएगी, मेरे पे भी अल्ट है, ठीक है? आई एम मॉपिंग है ब्रो, उसको ड्रॉप दे। मैं दे गाइस पीछे से खेलना है। पिंगू जा, तेरे को कुछ चाहिए ये तो थोड़ा ये कर लो। यहाँ लगा ना अलार्म बट वहाँ के कोने में क्यों लगाया? नहीं वो 3 बार तोड़ दिया मैंने। ओ ये डेज भाई साहब, अरे बट ठीक है नो Spike लिसन दे आर प्रीटी लो, ठीक है? जेट लो है 42। हाउ इज इट नॉट डेजिंग देम? हाउ इज इट नॉट डेजिंग देम? चारों उधर वेलकम। हील कर देगा यार स्काई। भाई सीधा ये पे मुंह पे स्पेक्टर क्यों बुलाया। है? अपने वाइपर पे चढ़ गए ना वो दो। वही भाई। हाँ वो डेज करके चढ़ गए ना उसको। अरे डेज रिवील दोनों चीज करी है उसने। 60 35 पिंगू सेव। 60 Yeah, fade money. 35 yeah we हां can यार do मनी, that। गो फॉर इट। They might try the same shit again. लो है भाई। ओ दे विल ट्राई द सेम शिट, डू वन थिंग, मैं अपना टर्रेट यहां लगा रहा हूं। मैं डीप अरे से और ऑफ कर डाल गया। Guys, गोली करना नहीं, हो, सुनो, और- अपना क्या और था? डाल के गोली Listen, करनी है। लिसन KJ A एंकर नहीं KJ A एंकर KJ A एंकर ए एंकर करना है तेको। यहाँ पे अलार्म बोर्ड डाल, यहाँ पे अपना टर्रेट डाल जो 8 देखेगा बस। एंकर क्या होता है? इस मैं कुछ सुना दूंगा। अरे यार चिल करो यार, कितना गुस्सा होते हो, गेम ही तो अब है। कल भाई इसको डिस्कशन यही में तो है। इसको सुना भाई भाई वो- डिस्कशन। तो कल होता ना ये भाई। तो है, मैं जो हो रहा तो ना नहीं था ना, मैं अच्छी बात है, कल नहीं था। शांत हो जाओ, जीतेंगे, होल्ड करो आराम से। उधर ही आ रहे भाई। और रोटेट करो What a ride. और shit. अब फ्लैशिंग दो। कर 70 टैग है जेट। नहीं गाइस तू अब Can't do shit. ब्रो मॉली कर देना आप। अरे मॉली किया, वो चढ़ता हुआ आ रहा है। नहीं फिर वो मॉली में वल्नरेबल नहीं तो क्या? Ultimate ready. दो बुलेट मारा मैं उसे, वो सीधे डक्के स्प्रे करा। किल के मैं भी लाल बता आप उधर एक करता सीटी से आ रहा है वेलकम। हां अभी डिस्कशन कर रहे बैठ के। आ एंटी क्या भाई इनका देखा डिसिप्लिन स्काई आके हल्का साउंड दिया था कि खेलने जेट दो यार, मेरे को बी पे ही खेलने क्यों? दो, बी पे ज्यादा अच्छा होगा। हाँ अभी खेलने दो उसको। अरे बट 3 जन भी हो गए ना, क्योंकि तेको और जेट को साथ में खेलना है। वाइपर अर्ली और मॉली डाल ड्रॉप दे। दे ब्रो, मेरे को ड्रॉप दे भाई वाइपर। अर्ली राउंड डाल लो, वो घुस रहे हैं, मैं अब जरा दूसरी चीज वाइपर ट्राई मेरे कर को रहा दे, वाइपर हूं। आई कैन गिव यू गन। मेरे को दे गन। वेलकम स्ले ड्रॉप कर। मेरे को गन दे। ये दे दो कोई तो बस, मैं उधर ही ऑफ मॉली कर कर उधर। वाइपर सीधा अर्ली मॉली कर। Say. अर्ली मॉली करना। वाइपर कर रहा कोई हूं भी नहीं देखा। अब Get out of my way. ब्लाइंड हुआ। मेट बॉल अप बिंगो आजा गाइस आई वांट, डेड है वो, ही इज जस्ट डैशिंग आउट आउट। इन पे हील है, निकल डोंट फकिंग KJ ट्राइंग टू कम बैक ब्रो। एंड हार्बर हर्ट। मेरे पे अल्ट है। अरे जेट स्पॉन आ चुका है। लेग्ड Spike planted. हां Player कोई जिंदा ही नहीं बचता है भाई। उनका डब्ल्यू नहीं रुक रहा है रे, एक भी नहीं रुका मालूम। सब स्पॉन आई थिंक, एक साइफर ने दिखा था। अबे ये देख उनका डब्ल्यू नहीं रुक रहा है वेलकन, ही डैश्ड ऑन माय फेस। क्या करूं मैं उधर? भाई जज लेके बैठ जाओ। Switching sides. Overtime. हां Occupational hazards aside. अरे क्या गंदा डैश है भाई, इधर से ये डैश कर रहा हो, लाइक व्हाट द फक। या राइट। ए ही हो सकता है अपने से गाइस। नहीं बी फेक पहले। ए पॉप होगा बट बी फेक सेम स्काई फ्लैश। इधर आ, यहाँ पे अपना ये ऑर्ब डाल। Right there. बस ले तुम वॉक करो एमजे, तो आ मेरे साथ। हाँ तुम दोनों वो ये वॉक करो। अरे बहुत अबे, आगे मत चले जाना। अभी रुक जा। यहाँ पे अपना ऑर्ब डाल, यहाँ पे खड़े हो, एक्सपी इधर खड़े हो, यही से एक्सपी इधर खड़े हो, Right there. कोने पे चिपक और यहाँ पे एम का अपना ऑर्ब पिक। अबे हट मुझे निकलने दे, अभी मुझे निकलने दे। हाँ कोने में खड़े हो, यहाँ डाल, Right there. बाउंस कर ऊपर थोड़ा दीवार पे कर, Walk out. दीवार पे बोला। फ्लैश कर। फ्लैश नहीं हुआ।
गाइस इधर 3 लोग हैं। ऑयल ले ले अपना वापस। Why is there no turret on mid? तुम लोग फ्लैश हुए हो जब बी Yes. फेंके तो? अरे दे नो वी आर फेकिंग गाइस। तू फ्लैश होगा तो नो होगा ना अनपढ़। मैं ही हुआ भाई चुप बैठ। इट्स ओके। पीछे राउंड खत्म नहीं हुआ है अभी भी है। चिल चिल चिल। Oh dog. वॉल अप डाउन अप एंड डाउन 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 तो डाउन। आप कलेक्ट कर रहा हूँ मैं। बे तो वही ऑल क्यों डाउन किया फिर? 50 seconds guys. ठीक है You ठीक है need to go somewhere get some picks. ठीक है। Door है door है door आठ है. और एमेन वॉकअप करो। कर डॉक कर। हाँ ए उसके साथ एक्सपी मत जा डॉग पे मत। जेट के तोड़ पास दिया. जेट के पास जाओ। I can try. साउंड देना है यहाँ एमेन पे साउंड यहाँ पे दे वी नीड टू एंटर फास्ट। कोई हो नहीं यहाँ पे. मैं वॉल दे रहा हूँ तुम लोग के हिसाब से आ जाओ 30 seconds left. आओ नाइस गाइस वी कांट पुश। वी एक और कांट close, वाइपर close, मारिए close, ऐसे को on वाइपर your मारिए नाइस Nice. नाइस पीछे से खेल सकते हो तुम लोग। गो वाइप केजे मारिए तो डाल दे उधर। Blinded. Dug out. वन डग आउट खेल लो पीछे। भागो। Turret down. प्रो इज तेरा गेम है। पहला कांटेक्ट स्लेयर को लेने दो। स्लेयर जंप स्पॉट कर टैप पे। एक कार्ड इजी ही डजंट नो। देख बहुत लेट आना है एमजे सब मरने के बाद तू आएगा। Enemy remaining. कोई इनकी target. जेट क्लोज नाइस। एमजे तू भी वो क्योंकि वो एक्सपी पे पुश करेगा ना चलेगा वो लेट ही आएगा उसको मालूम। वो यहाँ तक एक बार चले के बैठो. एक्सपी से पहले वो स्पॉट हो जाएगा बात वो है। नहीं Spot होगा लेके बैठो भाई. इतना गधा अरे नहीं सुनो हो गया राउंड खत्म हो गया भाई. चिल। ड्रॉप हो जाओ। जस्ट लेके आन बैठ दे जाओ इसको मिडी आन दे इस बार इसको मिडी दिखाऊंगा। मैं 8 पे अपना वो कर लूं क्या सेटअप? 8 पे लगा 8 पे कर लगा। ले bro. बहुत फास्ट आ रहा है। जैसा तुझे सही लगे। आठ का यहाँ पे मैं कर लूंगा। सुन एक्सपी जल्दी वॉल डाल मॉली लेके आइडिया अभी के लिए मैं स्मोक नहीं मत छोड़ो ना मैं उधर ऑफ करता उसको। लेट हिम कम। हां कर ले। आए हाँ मैं वॉल ऐसा करूंगा। पीछे एक्सपी ए पे होल्ड कर तुम दोनों ए खेलो। जाओ तुम लोग जाओ। आई हैव दिस रुक जाओ। वॉल दिया मैं ए पे। पीछे फॉल बैक फुल फॉल बैक 5 मैन रीटेक। They could be dug out. उसके वॉल को तो फ्लैश करूंगा वेलकम. साथ चल मेरा. हां ना सर इजी होल्ड वी हैव टाइम मैं मिड देख रहा हूं। Blind हो. आ लिया भाई यहां ले रुक वो कुछ भी दिया हाफ ब्लाइंडेड था वो पता नहीं कैसे भी। Hey, I think flower क्या? Flower. पिंगू ले उसको। Not is flower. सर जंप करके मार सकते मार दे। नहीं है गया निकल गया वो पीछे। हम लोग मॉलिड है गाइस। Main. गार्ड हो जाएगा। आई विल किल द मेन गाय। आई हैव मेन। मैं तो होल्ड कर रहा। Blinded. 80 फेड एंट्री। पीछे से आया रे। ही प्लेड अस जेट प्ले किया है। जेट घुमाता गया बस। अरे he went flower then he went dug out. हाँ वो डग आउट गया फ्लावर गया भाई अकेला क्या ही कर रहा Switching टीम को भाई। sides. वो भाई खेल लिया भाई उसके पहला। एक को खेलना पड़ेगा मैंने गड्ढा आउट एटलीस्ट यहाँ से होल्ड करना पड़ेगा। लाइक पीछे खेल लो बट केजे को फ्लैश खेलना करके पड़ेगा ना। केजे सेट तुम लोग फ्लैश कैसे नहीं? तुम लोग यहाँ पे वॉल था ना डग आउट पे। नहीं था बॉल. तुम लोग को पॉप फ्लैश करना था मालूम क्या? पॉप फ्लैश तेरे का फ्लैश उसका wall नहीं था ये I only gave for info but नहीं भाई पॉप फ्लैश करना था क्योंकि वी नो हमेशा पुश कर रहा है उसको मारना ही है पहले उसको ही मारना है बाकी वो पता है यहाँ खड़ा था यहाँ पे Right there. अभी फ्लैश मत हम पीछे रुक तेरा टैरेट है पहला का ना पीछे आओ ना पीछे यहाँ पे बैठे हो। तेरा टैरेट लगा सही हो बस यार। तेरा टैरेट लगा बस उधर जाके आगे जा। वॉल स्मोक अप मैं फ्लैश नहीं कर पाया नो इन्फो. 2 जने कम से कम। ही डिडंट फ्लैश। ऑपर भी होगा। स्मोक डाउन कर रहा हूं। जेट इधर विद डैश ऑन। आ जाओ नहीं रुक ना स्मोक अप होगा उसके बाद निकलूंगा मैं। रुक जा मैं कर रहा हूं। आके और वापस ले डॉगिंग लेना। मैड इज डॉगिंग मैड। अबे वो वॉल के आगे से खेल रहा है। टर्रेट डाउन है भाई. हां आ जाओ घुसना ए मत कुछ नहीं अच्छा मैं ऑफ ले अच्छा ठीक है छोड़। टाइम नहीं है उसको पहले लेना था। इधर एक डग आउट। अगेन नो आ जाओ जल्दी आओ वी हैव टू अब डॉग वेट लेट मी डॉग. तो डॉग कर वेलकम ऑल कर दिया। गाइस होल्ड करो। होल्ड नहीं आ जा भाई अबे राइट क्लियर. डग आउट कनका से डग आउट. ए स्काई प्लांट से स्कोप दिया One more dug out. एक और डग आउट आया कोई भाई वो इतने जल्दी टाइमिंग rotate कर लिया। मिस हो गया अपना मालूम।
तो भाई ये लोग स्काई यहाँ पे, स्काई यहाँ पे। हील स्काई स्लेयर दो लोग One out. Let him go back. Need healing. भाई कॉल को काटेंगे तो यही होगा ना, टाइमिंग मिस होगी। स्लेयर हील देना स्लेयर। 114 क्या होता है? Heal up, squad. भागो साइफर अकेले उधर। वॉल कुछ है ना। फेड 1 HP है। फेड 114 है, साइफर एचपी है बस फुल। मेरे पास अल्ट है गाइस। सेफ प्लान कर, जो भी करो जल्दी करो। ए टाइम अरे टाइम भाग भाई और 10 seconds left. प्लांट ही नहीं हो पाएगा भाई। सेफ प्लान कर, सेफ प्लान कर। होगा हो गया हो गया प्लांट। 114। लास्ट 1 एचपी है, चल। Time to back planted. Playing halls. चलो हॉल से खेल लो दोनों। क्या दिखेगा हाथ? नहीं दिखेगा। ट्राइड है ना, ट्राइड पता बजेगा नहीं एंगल उधर नहीं पर। I flash on your turret. ठीक Alarm मत bot करो भी। बस डोंट पिक, इट्स ओके। बैठे रहे तो जिगल भी लेने की जरूरत नहीं, समझ लेते हो। Turrets लिंक destroyed. नाइस भाई। एमजी कॉल काटे जाएगा वहां पे, अगर पिंगू ने ले बोला भाई, घुसना वो है तो timing घुसना जाता। है। Switching sides. टाइम हो जाता है। यही चीज है, ये छोटी छोटी चीज है ना। तू बोले क्या है, उतने ही तो बोला भाई। इट अफेक्ट द राउंड। तेरे को बोला इनके साथ टाइमिंग पे नहीं खेला तो नहीं जीत सकते। मैंने मैच चालू होते ही बोला था ये चीज। इनको अपने को टाइमिंग पे ही हारना है। ए पे मैं अभी ए पे रुक, लेट हिम कम। अभी ये मार खाएगा मेरे हाथ से जट। जेट को चाटे दो। क्या बॉल अपना उसकी। वाइपर भी भाई। अरे वो मुंह पे डैश कर रहा है। ऑलवेज बी वॉल एक्सपी। इधर मेरे साथ ही खेल, मेरे साथ ही खेल। इधर 8 खेल, इधर खेल। भाई बी बॉल की बात नहीं, मिड पे वो ऐसे घुस जा रहे हैं ना, तो बी पे स्मोक डालना पड़ेगा मुझे। बी वो अभी बी का स्मोक अप करके मैं बोल देता हूं। मैं ये जेट एस के मेरे पे। घुस रहा है। नाइस प्लेयर, हाइड भाई सामने मर गया। ये देखो कोप दे हमें। स्काई मिड पे। मिड देख हर बार। नाइस वन, एक और मिड पे। आ रहा मैं पे आ रहा। एक और पीछे गया। पिलर क्लियर। बॉल अप कर। दोनों है। एक था यहाँ पे। Spike down A. 78 बहुत लो है। शांत 72 डाउन। शांत। Cool. 10 seconds Get to on flash. now. They didn't plant. टाइलेट प्लांटिंग। वेट हु प्लांटेड? एक एम इन। Sky planted. फेड नहीं स्काई पीछे है। Didn't मतलब जो plant. भी Didn't plant. पेड़ Just पीछे waiting है। us. Rocket duck out. Have to get duck out. Wait. बस स्काई की नॉट गाइस प्लांटेड। होल्ड कर लो, दोनों होल्ड कर लो। पहले वेलकन का गेम है। लेट मी पाइनएप्पल God गाइस। पे flash नहीं हुआ। नहीं, भाई इतना बोलोगे? Planted. I've got your trail. मैं पिक कर। One enemy remaining. बढ़िया। भाई कितने बोलोगे, बोल रहा हूँ मेरा प्ले है। हां Just तू hold. आगे जाते जा रहा है इसलिए बोल रहा ब्रो। तू आगे से चले जा रहा है। तो वहाँ नहीं जाना है, हिडन स्पॉन ही होल्ड करना है, स्पॉन ही हाँ होल्ड करना है। यहाँ तेरे को विजिबल ही नहीं होना है। वही क्यों नहीं समझ रहे यार। Time. अरे स्टेयर हेलो, ये क्या था? तू आगे जाते जा रहा था इसलिए बोल रहा था ब्रो। तू अकेला जा रहा था, एक साथ भी नहीं। भाई किसी ने तो दिल भेजा भाई लास्ट में मैसेज। अरे ब्रो मैं पीछे ही रुका हुआ था, इसका मतलब ये नहीं इसलिए है बिल्कुल वहीं पे बैठे like, होंगे हाँ, स्पॉट पे। बैठना है। जब मैं प्ले बैठना बना वही रहा हूँ तो, तो पहला बैठना उसका है। वो content भाई 26 plus हुआ है just because of that fucking bullshit. ये अभी अरे मैं आता हूँ, मैं कुछ खा के आता हूँ। एक गॉड ने मारा सबको भाई। ले रेडिएंट। स्लेयर क्या लिखा? ठीक है ना भाई, चूतिया साला। कौन था कौन स्लेयर उसमें? जेटी होगा होगा भाई। जिस तरीके से मारा जेटी होगा भाई। 11 फर्स्ट ब्लड है उसके, 11। अरे वो हरामखोर किधर भी डैश कर रहा था। उसके सुन ना, उसके टीम के मिला के 15 है, उसके अकेले के 11 है। सोच ले तू भाई। ये भी ओटी चले गया था वेंचर। ऐसे पागल जैसा मैं खेला ना, मैं ट्रेड हो जाता मालूम है। बट मेरा दिमाग एक तो आदि भाई इसको पहले भाषण समझा दे अपना कल का, वरना इसको भाई बोल काटे जा, वो भी काटे जा रहा है। बोल के थक गया मैं भाई। जिस राउंड बात सुनी गई है उस राउंड हम जीते। और मैंने स्टार्टिंग ऑफ द गेम बोल दिया था इनको टाइमिंग पे ही हरा सकते हैं, और टाइमिंग पे ही हरा है। जो राउंड अपन ने टाइमिंग मिस की है ना एंट्री पे, अपन मरे। जिस राउंड टाइमिंग पे घुसे हैं अपन जीते हैं। But Loki keyboard feels great though. ट्रू। अबे यार अब चौथा। Why didn't I do this earlier? स्किन खरीदना था ना। Skin तो खरीद भी लिया ना मैंने। अरे पैसा। अरे उसने बोला तेरे को स्किन खरीदने में ज्यादा बिजी था इसलिए तुम्हें कीबोर्ड नहीं खरीदा, अकॉर्डिंग टू हिम। भाई ये जेनीटो आ रहा है, बुलाऊं क्या?
हाँ नहीं बुला लो ये यार नहीं मैं यार, ड्राइव चल रहा भाई, पिंगू मैं निकल रहा है। उसके साथ नहीं खेलना है। अच्छा तो खेला था उस दिन स्लेयर मेरे साथ। ठीक है, तो तुम दोनों डुओ कर लो, हम दोनों ट्रियो कर लेते हैं। अरे अरे हम सीरियसली दोनों बोल रहा ट्रियो कर लेते। हूँ। हाँ तुम दोनों डुओ कर लो, हम तीनों ट्रियो नहीं कर भाई, लेते मेरे को डुओ ट्रियो नहीं करना है, मैं हार चुका हूँ उसमें बहुत ज्यादा, अब नहीं भाई। करना। 5 मैन में बेटर है मेरे लिए, हर मैच जीतता हूँ मैं 5 मैन में मोस्टली। स्टार्ट देखा, अरे मैं जीतता हूँ मोस्टली। स्टार्ट तो ऐसे होप के साथ करता है भाई, एंड अप मोस्टली। लास्ट में एंडेड अप तो मोस्टली ब्रो। एंड में थोड़ा सा ऐसा रियलिटी दिखाना पड़ता ना। लॉल ब्रो 26 आई मीन लाइक शीश। बट बट माइनस होना होता तो 27 होता वहां की चीज। मेरा 27 प्लस हुआ है। ये किस्मत नहीं, अभी पता है यहीं पे रैंक अप में होता तो 26 मिलता, बट नॉर्मल गेम भी होता तो मुझे 10 पे मिल ही जाता, चाहे मुझे 16 प्लस मिला होता फिर भी भाई साला। वैल्कन भी नीचे आ गया डायमंड 3, व्हाट, मेरे को लगा रैंक अप हो गया होगा दे, 2 बार डी रैंक हुआ, 2 बार रैंक अप। अच्छा हाँ, अच्छा हाँ, मैं करियर में देख रहा था ना तो उसमें दिखा रहा था। तो एक ही गेम लाइक डी रैंक हुआ, अगला गेम जीता, वैसा सी। मैं डी रैंक हुआ फिर हारते गया। यार क्या सीन है, ढंग का पाँच भाई, यही बात है ना, कोई सुनता नहीं है, तू भी नहीं सुनता बात भाई, वहां दिमाग खराब होता है, वो ट्रिगर होते फिर। कुछ बोल मुझे रहा बुला ले हूँ मैं पिंगू। या पिंगू, कुछ भी बोल रहा हूँ सोच के ही बोल रहा है भाई। और स्लेयर का जो कॉल है वो प्ले का है, हम लोग का एग्जीक्यूट का है, तो अलग है। वो दे रहा है, वो प्ले है, सुनो वो निकलो, बट नॉर्मल हम पूरा कॉल दे रहे हैं, मतलब वो करना है तो करना है। पिंगू भी बोल रहा है वहां पे घुस, रुक 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 रुक, अटक जाते हैं भाई, यू जस्ट नीड टू गो इन। चिंगू बुला ले एक को। किधर से भाई, मैं किधर से बोलूं? अरे तेरे फ्रेंड लिस्ट में कोई नहीं है क्या कस्टम वस्टम कोई वाला? नहीं। ओह सैड, वेट। पढ़ा मैंने साले तेसु ये सब पढ़ा, मेरी तो मिल ही नहीं सकता, चप साड़े, खुद को प्रो बोल रहा है बेशरम, शर्म आ रही है। अभी क्या करना है गाइस? देख ज्यादा देर नहीं खेल सकते, थोड़ा ट्राई खेलते फिर आई गो, इसके साथ खेलो, मैं स्ट्रीम करूंगा मैं वो वीसीटी गाइस। एमजे थोड़े देर पढ़ ले, फिर थोड़े देर में जाने वाला मैं। हाँ क्या हुआ? थोड़े देर पढ़ ले, थोड़ी देर में जाऊंगा मैं, फिर खेलना। ठीक है खेल लो, मैं नेक्स्ट मैच आता हूँ। ले चालू कर। अरे डायरेक्ट बोलो ना। थोड़ी देर पढ़ ले थोड़ी देर आता हूँ, मैं क्या हो रहा है ये? ये नहीं, थोड़ी देर पढ़ ले, मैं 5 साढ़े 5 बजे जाऊंगा, लाइक मेरा सेमीफाइनल्स का वॉच पार्टी करना है, सेशंस का। मैं आऊँ, मैंने कोई चैट नहीं पढ़ी, पिंगो 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 देखो वीडियो भेज रहा देख। मैंने कोई चैट नहीं पढ़ी। मेरे को कुछ तो भी मैसेज आया क्या? शौक है क्या, स्ट्रीम पे मैसेज आया, मैं आऊँ क्या? बट एक इट्स सेकंड रुको तो। चल दिया गया ये एमजे, क्या सीन नहीं। है? हूँ भाई हाँ। क्या करना है, शौक को बुलाना है या ट्रिस्टा खेलना है? शौक है नहीं, शौक भाई क्यों बोला आ था रहा? वैसे। वो बुलाओ। किधर बोल? स्ट्रीम पे मैसेज किया, खेलने आ रहा क्या? पूछा मैं आऊँ, शौक नेवर माइंड मिल छोड़। गया, माय बैड बॉयज। थोड़ा पहले बोलना था मैं नूब। तो मैसेज आते ही पूछा। उसको रे, तेरे को हराम अबे खोर। मेरा गेम वापस मिनिमाइज है, फक। क्यों, क्यों मिनिमाइज होता है? ओके साथ ही गेम खेला मेरे। अरे रे फकिंग शिट। I should have locked. Guys, it's time. भाई क्या लीजेंड लॉक हो रहे हैं?
तुमको मैं बोल रहा हूँ इस टाइम एक मैच सोवा खेल लो। मैं और एक तू मैच रेना सोवा खेलेगा। एक मैच सोवा खेले पिंगू। आई डोंट माइंड बट तू अगर मारा नहीं और ये गेम थ्रो हुआ तो मेरे को क्या मिलेगा? We gonna forget you're on stream. मैं तो हाँ। भाई मैं बोल रहा हूँ मैं थ्रो नहीं करूंगा, मैं ट्राई करूंगा। मैं तेरे हाथ में दे रहा सब कुछ तू कल की सारी करेगा। बातें इग्नोर कर दूंगा मैं वेलकम। आई लॉक्ड। ठीक है अभी देख। भाई शौकाई अगर में क्या अगर भाई चैट पे क्या चल रहा है भाई? सीधा भाई देख, बद्दुआ अगर बद्दुआ नहीं चल रही हुआ भाई। तो फिर देख मेरी गलती मैं नहीं। क्या बोल रहा मैं थ्रो नहीं करूंगा। नहीं, I मेरी will- गलती नहीं। देख मैं ओवर एक्सटेंड ईगो पीक वो सब थ्रो नहीं करूंगा। आई विल ट्राई माय बेस्ट। देख वो तेरे से उसके- होगा नहीं वो नहीं मेरे को करूंगा, मालूम मैं है। बोल रहा हूँ No, आई विल वो ट्राई माय होगा बेस्ट आई टू नो नॉट दैट। डू दैट। हाँ वो कर होगा ही वो तो मेरे को मालूम है। भाई कैसे कमीने भाई शौकाई का चैट कमी नहीं वो भाई वो भाई सबसे देखो नहीं बोल होता रहा चैट वालों को बोल रहा हूँ अच्छा नहीं वो होता ही है बट दैट्स द थिंग। भाई क्या भाई तू चैट पढ़ेगा। तेरे को किसको डिफ करना है रेस को जो इमोर्टल 2 है शायद। हाँ इमोर्टल 2 है मेरे को दिख रहा है इधर। नहीं खिलाता कभी ये नहीं सामने वाले नूब खुद है। के अकाउंट पे खेल, दूसरे के अकाउंट पे खेलता है। चल ये सामने वाले नूब है सामने वाले नूब है। नहीं नूब नहीं एक्चुअली एसेंडेंट है डायमंड है एक एसेंडेंट एक डायमंड है एक डायमंड है एक एसेंडेंट। You're not faster than me. फ्रेंजी स्ले फ्रेंजी। I need this. Thank you. ये भाई कितने कमीने हैं भाई। ए गोश दे वेलकम गोश दे Need a drop. वेलकम। ये पे खेल रहा आई विल प्ले ए रिकॉन एंड देन आई विल गो डिप सी। अब भाई सोवा मास्टर क्लास दिखाता तुम लोग को रुको। तो जेट के साथ पीक लेता फटाक से पीक लेके पीछे आ जाऊंगा। प्लीज एक कोई शील्ड लेके आओ, इसको हेड देगा मैं उसका किल लेके भाग जाऊंगा। वेरी गोइंग डेडलॉक वे ठीक है भाई। मिड पॉप जेट बी डैश जेट बी डैश है सोवा भी है सब है हैवी। जेट आ डबल पिक लेंगे जल्दी आ। बूमर ले नाइस वन जेट। Spike down. Attacker spawn. राइट साइड। भाई Hold जेट him. कॉम्स Reloading. सोवा यहाँ पे। Blocking movement. जेट कॉम्स भी नहीं दे रहा भाई। सी प्लांट Spike planted. नाइस वन पिंगो। आई हैव रिकॉन इन 5 बी एक बी एक सी छोड़ना। सी वाले को लेना, सी वाले को लो साथ में, वो होल्ड ऑफ है। वो गराज आया पिंगो अमेरिकन है। Scanning ahead. There they are. लेफ्ट साइड। One enemy नाइस remaining. कवर दे इसको। आई एम डिफ्यूज कर सकता है, डिफ्यूज हाफ कर रहा हूं मैं तो। नाइस वन गाइस। देख मास्टर क्लास जेट हेलो भाई जेट। मैं वहां पे वो एक को मारा, मैं वो जिससे मारा मैं उसको ट्रेड ले आओ। हेलो कॉल भी नहीं दे रहा कि वहां पे बंदा है भाई। Level heads until we're home. Yeah. तीसरा बंदा है भाई वहां पे। हेलो हेलो। भाई जेट को अच्छा मैं सोवा को इधर हक दिया ना तो इधर ही हक दिया नहीं आएगा वेलकम बस। नहीं हक अच्छा दिया खेला। लेकिन इधर ही अच्छा खेला इधर ही हक दिया। ये राउंड में हक दिया स्टार्टिंग में जब बाइक किया क्या हुआ? वापस हक दिया भाई वापस हक दिया। आपके बाहर रिकॉन गया उसका भाई Blocking sight. नथिंग है। वेलकम स्ट्रीम कर रहा है क्या? हाँ मैं लाइव हूँ। वेट लेट मी सी गेम्स। ओमेन भी गैरेज है। कैन बी गैरेज विंडो हो सकता है वो। और भागा वो है गैरेज विंडो ही है। रुक जा मैं लेता इसको। भाई ये जेट आवाज दे दिया भाई। सुहा से भाग रहा था। One enemy remaining. Four dead. My ult's ready. प्लीज इस प्लीज There they are. गलती हो जाता अबे। ठीक है भाई। अब बोलना शौकाई, अब बोलना शौकाई साड़ा। कितना अच्छा नहीं था ना कोई। ठीक है भाई। 47 बैल मेरे वजह से किल मिल रहा था 47 मैं कोशिश क्यों नहीं मिला 47 50 पे मिलता ना भाई। कितना ऐसा भी रहता क्या? भाई पिंगू को चैट देख
मैच हारेगा ये वो भाई, कैसे कमी भाई, कितने हेटर्स है भाई अपने। +1 मैच अपने नहीं भाई तू नाइस, थैंक यू भाई। अबे सीधा श्राप है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हेटर्स रीना खेल रहा ना, बहुत टाइम बाद खेल रहा था। अरे Guys, इसका smoke आया मैप था। के बाहर रिकॉन जा रहा है। अच्छी बात है ना। 50 का और डेडलॉक तेरा अल्टा जाएगा। आउटसाइड भी मल्टीपल। मेरी पोजी देखो, होल्ड जेट पीक ले साथ में। आउट टे आउट खा लिया। विंडो देख अपना, रुक जाओ। He's already in, what the fuck? ये स्मोक पे है। Spike planted. इसको स्पैम कर। अरे बाप, Back side. अरे हक दिया मैंने। Ah, Player 40. standing. आई ट्राई। आएगा भाई, कुछ भी कर ले, ट्राई कितना भी ठीक है भाई। Listen for जब the wind. हेटर्स It will इतने tell हो you तो where भाई to get क्या ही you. बोल। गन अबे रिलोड पे था, गन का क्या लालच भाई, जब 2 गोली है स्टिंगर पे, मैं क्या उखाड़ लूंगा 2 गोली स्टिंगर पे। Headlock इधर लगाना ट्रैप, यहाँ लगा देना। वो क्या देखेगा ट्रैप, वो यहाँ ऐसा लगाना चाहिए ना भाई। जेट हेलो क्या मस्त ट्रैप होगा वो। हेटर्स को छोड़ना। हाँ, खेल रहा मैं, ट्राई कर रहा भाई। शॉर्ट स्मोक कर रहा। लॉन्ग वॉल्ड है क्या ये, क्या सीन है? Sword owning. Be smokes. शॉट ड्रोन कर रहा। सॉरी, I think he's droning garage. मैं पे टीपी किया था। नहीं ये सर नाइट स्पेक्स में लिखा है मैंने, जंप कर दिया था। आउटसाइड भी आई ब्रेक इट। अरे कौन जूते ट्रिप लगाया एक तो। गैरेज पे उसका बूम बटा था। नाइस मैं दूसरा देख रहा। आई हैव द ब्रेस्ट। गैरेज अलगन सी पे स्मोक है क्या? नहीं आया, अब आया सी गोवा। आई I नीड can blind default. ओ भाई I'm 10 HP, बेट मी। Watch my window. I can blind मैं default. देख रहा। आई कैन ब्लाइंड एज वेल। एक क्लोज अरे है, ब्लाइंड ब्लाइंडेड क्या? सोचो। बैक साइड है अभी। अबे यार 32 ऑन जेट। Last player Go. standing. Find death. 35 women. हां मैं वीक था यार, मेरे को शॉक डॉट मार। इसके लिए दुआ भी नहीं से। अलगन स्मोक से बाहर नहीं आना था, तू स्मोक में बैठना था। I feel the strain. कौन सा, कब पहले बाद में? सीटी वाला बाद में क्या वो पूछ जो इधर तू बैठा था, अंदर गया और बाहर आया, बाहर नहीं आना था वो। बे, जब वापस रिटेक के टाइम की बात कर रहा है उससे पहले? मैं बाल्कन उससे पहले शरीफ ही दे ना सकते क्या? भाई। अरे उससे पहले स्पैम पड़ रहा था इसलिए तो निकला। 10 बाल्कन शरीफ दे सकते हैं शरीफ। टॉकडाट आया था पिंगू, टॉकडाट। उससे मैं डैमेज खा के बाहर भागा, 10 HP बचा। शॉर्ट स्मोक कर रहा पिंगू मैं। सॉरी पिंगू नहीं है वो। रोलिंग शॉट्स। लेट्स जा साइड खेलते क्या? मैं अभी देखता जा। उनके साथ साइड खेल ले। आई विल रिकॉन। ये वाला है मैं, कौन सा है ये मॉनिटर? आई थिंक मेन से तो एंटर नहीं कर सकते उसका वो लोग। स्टैंड छोड़ के इज गुड। लेवल I missed my shot. बहुत एगो खड़ा है भाई वो ट्रिप की वजह Last से। player One standing. long is he's just standing there. He doesn't care कोई उसको Yeah. पिक करे या ना करे। Same with the woman. Spike planted. Come on Pingu, I see you windows. वो Just इतना saying, confidence में तुम pick करेंगे शौका तो मेरे क्या? साथ साथ इन लोग का भी गेम थ्रो करवाओ भाई। सीधा बैटिंग चल रही है 2-0 2-3 2-2। तो मार उनको, प्रूव कर रॉन्ग। मार तो अबे वो स्कोर टीम स्कोर का बोल रहा है। वैंडल दे अबे छोड़। वैंडल से डेडलॉक वैंडल कौन सी है? दे आयन मेरी चाहिए। थोड़ी नहीं चाहिए भाई, रिवर आउटडेटेड है। रिवर नहीं है, नेप्ट्यून है।
ये चूतिया पीक ले लेके मर रहा भाई। क्यों पैसा बच जाता मेरा। गैज अबे यार क्या है ये? अब ड्राफ्ट डैश यहाँ पे विंडो के टॉप पे। नाइस वन। My ult's नाइस वन जेट। गैज दोनों गैज थे। ओके One outside B, is just holding. Nowhere to run. Last player standing. ओके CT से आ गया। एक इधर एक इधर एक इधर 3 मार्क्स। एक आउटसाइड भी था। Spike planted. Suck that. Scanning ahead. आया तेरे को दिखा। Take flight. दोनों की इन्फो है। आउटसाइड भी। हाँ बी ए साउंड है ये। आईएनटी है पिंग। ये व्हाट इज दिस पीक डूड? जैसे वो रिवील है और वो ऐसे मार रहा है जैसे कि मैं रिवील है। हाँ लिटरली ब्रो सर। Yeah, you're right there. So will you stop dying bro like Valkan? मैं पुश कर रहे हैं भाई। अपड्राफ्ट डैश उसका ब्लाइंड आया, ब्लाइंड डॉज किया, उसका ड्रोन आया, वो अपड्राफ्ट डैश स्मोक किया मेरे मुंह पे। मैं स्मोक्ड हूं और ही वन टैप्ड मी। Why even play that angle? Like, और ये भाई डेडलॉक राउंड के स्टार्ट में बनना बंद कर दे भाई। फर्स्ट टाइम चूतिया यहाँ पे जाके पीक लेता है। ठीक है ब्रो तू सेंटिनल है, जस्ट प्ले लाइक दैट। कमिट नहीं कर रहे हैं, देयर प्लेइंग स्लो, फिर क्या मजा भी नहीं आ रहा। लाइक अभी इनको भी रखने प्लेयर रुकना पड़ रहा है। सी छोड़ के अभी आ रहे भाई। आ रहे। Spike down A. ओके मी कमिंग एकदम। शॉट Blinding. Ding shot. I can ult, let him plant keep it somewhere. वी आर स्पाइक दो। Cover going out. दो शॉट। एक ही शॉट है अभी। एक लॉन्ग एक शॉट। आई ब्लाइंड वेट रीलोडिंग। 3 2 1 पिक। अप शॉट आउट स्मोक से। एक लेफ्ट है, लॉन्ग पे लेफ्ट है। तो उसको एक बुलेट मारना। आउट दोनों हिट है, दोनों 1-1 है। Enemy नाइस। remaining. चलिए नो ये नीड। नहीं पता। मेरे पे कांटेक्ट है। लॉन्ग है। टीपी किया था ये। नहीं पीछे का आवाज आया इधर का। वी स्टिल हैव स्पाइक। Yes, ult is going to take the bro, just stand on the spike. दोनों सी जाओ। नहीं एक जन से Come with me, stand here. मत वो नहीं, मारेगा। clear अगर आया तो It works. Stand. Just stand, yeah. वो आके मार देगा। रे पीछे देख। Stand. Why is he smoking here? तू पीछे देख ना। वेलकन मार खाएगा पीछे से। Ten seconds left. I'm dipping. सेम Nice. मैं इसलिए तो क्या बोला। चूतिया बंदा है भाई ये? मैं इसलिए निकला भाई और अटैक किया भाई। He's ulting. I want their life, not yours. आई थिंक वो सुना अपना डेडलॉक को भागते हुए। ठीक है। डेडलॉक तो चूतिया है भाई, उसको क्या वो खुद क्या कर रहा है उसको ही नहीं मालूम। ठीक है उसका सी जाना सही था। ये समटाइम्स अबे वो शॉट से पीक करके मार के गया मेरे को। ट्रेड भी नहीं हुआ भाई। ये डेडलॉक देखते बैठा, मैं मार गया था। Here. You spamming? You I can better spam run. it. Okay. ऊपर spam wall में Here. Wall Reloading. पे ए स्मोक्स रेड लोग बस जंप। अरे वहां जंपिंग करते हैं ना, वी टेक टुगेदर। ओ That's the- खेल रहे हो लोग। तेरे स्मोक में खेल उसको, ओमन के स्मोक में खेल। fuck I can blind graffiti. Spike planted. एक हेवन। अबे एक बी यार। Last player standing. यार बहुत गंदा सेंटिनल है एजेंट। Deploying drone. ब्रो व्हाट द फक। नहीं ये लोग और नहीं साइड पे कैसे है? आई गॉट Okay, we know the ये drill. अपड्राफ्टेड Stick to your आवाज भी नहीं आया roles and उसका। we'll crush it. Welcome by सेटअप किया है बट ही कैन जस्ट स्टैंड ओवर देयर एंड डू by the welcome. जस्ट किल मी। वो दे छोड़ तू वेलकम। तू किधर से मारा अभी? बी से। There.
उधर से क्यों रोटेट कर रहा तू? बट तेरे को मालूम है ही कुड बी देयर भाई बी ही खेल रहा था, वो मतलब लेफ्ट से वॉक इन किया, वो इधर से वॉक इन किया और बैठा। मैं भी क्या बोलूं, अगर तेरे को गलत नहीं लग रहा मैं कुछ नहीं कर हाँ सकता। पीछे I'll try to get kills this round. Got one. Blaze भी था। Nice. Nice and deadlock come back. Spike I down. can blind. Peek लेना है deadlock का। I can blind. Feeling sight. मत लो ना, मत लो। Spotted C. I have the left. There. एक गैरेज को ले प्लीज। स्टंट है वो। ऊपर आ गया? नहीं। Reveal. I am not getting revealed. Nice. दोनों उधर One could be, one could be. दोनों थे उधर, अभी पता नहीं रेस गया। One enemy Got one. remaining. Spike down. C. Spike down है guys. Nice, he's outside B. Garage. I need a gun. यहाँ जाओ, फेंका मैंने यहाँ पे। अल्ट ले लो, लेना है तो। ये फैंटम लेना, मुझे वैंडल लेना। दिखा डिफॉल्ट। ठीक है, आई हैव अ ब्लाइंड, वी कैन प्ले बैक। 30 seconds left. अवन तीन साथ में मत रहो, उसको बचाते हैं, मार चोद देगा। आया 140। मैं रीसेट क्यों नहीं फास्ट हो रहा भाई? रीसेट एकदम नाइस शॉट, गलती से दो बार। They don't have a दो बार। single life worth saving. दे दूं क्या? सेव किया वेलकम अभी ये स्कोर। अरे रेना, वो इसलिए मैं हाफ शील्ड हूं तो मैं बाय नहीं कर रहा। आई किल आई। No I'll break heroics. the recon. Follow protocol. I'll break it. Don't do it. Get out of my way. You can leave C. Smokes B. You can go up if you want to take that line. B. ठीक है बॉस। साइफा यहाँ पे गार्डन के पास है। साइफा यहाँ पे का ही है। सी लॉबी मिड डोज। जस्ट ट्रिप डाला था वो, अभी रोटेट कर सकता है। क्या है भाई? 126 प्ले स्लो। ए ब्रो, गराज पुश। गाइस ठीक है, भाई पोज ही देखो। सी लेंगे तो लेने दे। For the fuck's sake. प्लांटिंग सी आ जाओ, प्लांटिंग सी। दे डोंट नो आई हैव लॉन्ग। Spike planted. They have the idea. Oh, I have blinds. I have 2 blinds. Where's the recon? You come late, bro. एक CT spawn है। Last player Please, speak standing. मेरे को तो आना है, बहुत लेट भी रहा है। Enemy remaining. लॉक जाएगा। Cutting their vision. गलत को दो मैं भी। वेलकम, तेरे को सबसे पहले कांटेक्ट लेना, हमको नहीं। तू अभी भी इधर ही वॉक कर रहा है। मुझे कॉल दिया तो कि मैंने उसको बोला कि लेट आ, क्योंकि आई थॉट तूने thought- जोन से नहीं, क्लियर किया था, late but we didn't नहीं know आ। कि he was like so pushed up in CT, bro. मेरे भाई इसने उस कॉल कौन है दिया भाई अपने? इनको अपन क्या करते, तो पहला कॉल आया, गो विद दैट ना। मुझे बोल दिया वो स्लो आ, तो सबसे लास्ट कांटेक्ट ले। तो आई वाज अरे डूइंग बट तू दैट। सबसे पहला तू लेगा रे, क्योंकि दिन हो हम लोग इधर से आ रहे हैं, पहला तू लेगा। But उसको भी कोई दिखा नहीं ना रे रिंगो यहाँ पे। वो यहाँ अरे बैक साइड बट ये इन्फो रखना है कि इधर दे पुश हियर और फिर बैक साइड रुक सकते हो, फिर हम लोग इधर से आएंगे फिर गरज से ना। अगर हमको इन्फो ही नहीं है, मैं निकाल रहा था बीबी बट ही स्पॉन ऑलरेडी, फिर मैं क्या करूँ उधर? आई कैन ब्लेंड फॉर जेट। ये आ रहे वो लोग, ये आ रहे। सुन ना, ट्रप तोड़ते उसका साइफर का, वी गो फ्रॉम बी अगेन। दे कमिंग बैक। Here. And then they're out. रिको रिकॉन है इधर बस। साइफर स्पाइक लेके गया अभी जस्ट। कौन है? नाइस, वी गॉट द स्पाइक गाइस। Spike down. गन लेके बैठ, यहाँ से ऑफ लगा I'm ले। keeping to you. I'm keeping to you. He took it. They're planting. He took with the ult यार। Spike planted. आजा जेट। I'm blind। I'm gonna tip it somewhere. एक अंडर है, दो अंडर है, दो अंडर है, ग्राफिटी। एक अंडर। Hey, so I smoke long by mistake. One enemy remaining. लास्ट अंडर।
Bro, what did I just see? Welcome to उसके through जा सकता है barrier के? With a dismiss, I can. What? Like just a woman can TP, yo TP can go through just like Last that. round in the half. Welcome भाई जो Buy the खेल best रहे हो gear गलत before it's too late. इनको मैं बता सकता हूँ। Clear drop. जगह पुश करना चाहिए था क्या हाल आप बताओ। ये I'm ulting. अब मेरे Ulting हाँ, मैं बेटे। direct ult कर रहा हूँ। जा सकते हैं और तो लाइन दो क्या? अरे तो नहीं एक मिनट तू डिसमिस से केजेएल से बच सकता है ये तो डेडलॉक का ही है भाई कॉम्स पे बोल दे मैं ध्यान नहीं दिया था I'm ulting randomly. सी की तरफ कर गैरेज यहाँ पे आई गॉट वन दो भाई वेलकम वो लोग इतना एनपीसी जैसे चल रहे थे भाई मेरा भी लैग किया था तब देखा नहीं तू शॉट भी हो सकता भाई। मैं पीछे एंट्री कर रहा हूँ वो कैसे एनपीसी जैसे चल रहा है I can blind outside garage. why you 80 I blinded so. he's blinded One enemy nice remaining. See long, Pingo. Play together. ठीक है भाई चल Yes, ult. 13 पे recon है मेरा. लाइक टू Just holding push. I know exactly. क्या साइड है सी साइड डिफॉल्ट के पास हाँ ठीक है पिंगो डिफॉल्ट Scanning ahead. ओमन को भेजो तो अपना ही है Back side है flash है क्या? नहीं है दे चुका है ऑलरेडी Last player. 120. नाइस ही डिडंट एक्सपेक्ट दैट नाइस उसको यहाँ दिखने के बाद भी he saw it. Still he doesn't know. कि I am coming. पीछे देखा क्या? वो सीटी हाँ he saw CT देख रहा है चुतिया. ठीक है nice trade. हां भाई Switching sides. लेट्स गो I'm not buying drone. यू पूसी फ्रेंजी रे वो मैं अभी मेरे शॉक डॉट से भागेंगे देख कैसा हो. स्पाइक लेके आओ वरना कोई उठा लेगा ते अबे ते शॉर्ट रिकन चाहिए लॉन्ग रिकन चाहिए. लॉन्ग दे नहीं शॉर्ट ले मैं शॉर्ट फ्रेंजी है ना शॉर्ट का मैं लेता शॉर्ट जेट नहीं दे के ले लेगा You can smoke long, cross, jet. Smoke cross, go short. With me. Let's go shot तुम लोग को 6 ही लगेगा अंदर. Scanning ahead. कोई नहीं. मैं अटक क्यों है भाई Jet है long. वुमेन बैक साइड Enemy killed. क्या शॉक डॉट दिया भाई उसके मुंह पे डायरेक्ट शायद. रिकॉन कांट ब्रेक इट एक हेवन आउटलेट भाई कॉल ही नहीं कोई No more. हेवन से Last ड्रॉप player standing. Nice. One enemy ने remaining. विंडो नेट Hey, पे it's long. नहीं कोई यार भाई कोई वेलकन भाई नहीं कोई नहीं तू ही देखेगा तू किस- भाई होल्ड कर सिटी स्मोक ना वो क्या देख रहा था फिर तू. आई जस्ट मैं गया रिलोड किया वो हेवन आउट दे मुझे लगा कूदेगा वो कूदा थोड़ा लेट कूदा तो उसका ड्रॉप बट सिटी से मारा तू. हाँ तू हेवन क्यों देख रहा तू सिटी वाले I got your back. भाई इसको Just, मार. you know, तो क्या बोलूं from the front. आई लाइक बहुत सिटी फ्रैक्शन देखो देखना था. आई एम प्लांटिंग कोई तो देखना है मैं सिटी सीटी भाई. देखूंगा I broke the recon. I आई couldn't. थॉट वो पहले ऊपर से कूदेगा बट नहीं कूदा वो वो बा So like अरे भाई क्या भाई? माय बैड ऑन दैट प्ले फ्रेंजी रे स्पाइक एक ना ये कौन देता था क्या मैं लेता गैज I have the spike. अब भाई कौन नहीं हो रहा था. किया नहीं मैं चेक ही नहीं किया इसलिए Last player standing. Spike down. C. वन शॉट I do that and I miss this one when it's fucking cross. When the crosser is on him. Combat एंड is पिंगू amazing. मैं I'm लिटरली not out. देखा भी नहीं क्रॉस भी नहीं किया लाइक चेक भी नहीं किया
थॉट वी विल बट रिकॉन कैसे नहीं हो रहा था? वो यहाँ बैठा था, यहाँ था और वो यहाँ बैठा था। Guys, just say if you want to rush. आगे क्या? I can smoke a little यहाँ sooner डब्बे ना, पे बैठा था अगर वो। तुम्हें घुसना है तो। और तेरा ये फर्स्ट स्टेयर और सेकंड स्टेयर के बीच में कौन हुआ था? अबे उस विंडो से नहीं मारा, वो नीचे था यहाँ पे। There. पिंगू वैंडल है, छोड़ मत तो। एक्सचेंज करेगा तो दे ले। ये Revealing ले area. भाई मेरा रिकॉन उस पे से है वन ब्लाइंड, ऑपिंग शॉट। वी कैन फॉल बैक, ऑफ कर रहा है इधर। बहुत वीक है। करना है क्या करना है, क्या सीन है? एनी कॉल्स? आई हैव नो क्लू। Come back short. साउंड देके पीछे जाओगे क्या? छोड़ मैं अबे स्मोक हट गया, स्मोक हट गया, आई कांट कम नाउ। थोड़ी देर बाद आता। He flanked 120 jet, yellow 40. Okay, I'm not. Did you spawn or what? एक कम बैक मे बी, वेट आई विल ट्राई टू वॉक 120 जेट ना। कम बैक, Go, ए जाओ। शॉट देखना, शॉट नहीं देखा मैंने। वाह, वेट आई जा इसलिए मारेगा। Wrong से। Nice, clear है। इधर प्लांट 120 jet है अभी। अरे what the fuck? साइफर पर बैठ रहे, एक है बना। मैं रिकॉन तोड़ूंगा, रुक, रिकॉन आएगा तो। तोड़िए तू देख। दोनों सिटी। दोनों। I'll pick off of you. I pick off you to be honest, like too low है ना। I can't peek now. हाँ ना, दोनों नहीं तो। He's out. One enemy remaining. ये तो गलती। सोवा गलती था, बट वो तो नहीं था ना। वो नहीं। तो The symphony. 4 किल 4 हेडशॉट, ठीक है। Don't worry, you get used to it. ड्रॉप दे पीछे। I don't know how that just didn't kill me, man. I mean, like, fuck, that was my luck. ठीक है बेचारा। अबे गाइस तुम लोग को सोवा का लेग दिख रहा है, साइफर पे तो हेडशॉट था इसलिए उसको हेडशॉट लगा यार। कितने क्रिटिक्स है यार ये यहाँ पे भाई। आपका पैसा नहीं है ज्यादा उतना। Scanning ahead. जस्ट कम गाइस, जेट को छोड़। W कम ए प्लीज। जेट लगे स्पाइक। Cutting their vision. शॉट देखो, रुक, कम है, शॉट ऑन करो, रुक। क्लियर क्लियर शॉट क्लियर। तो रिकॉन आएगा वापस, आई डोंट थिंक वो किया। Balcony or over pushing, I guess. नहीं उसका बूम बॉट मिस किया मेरे को। Heaven. I got cross. We got cross. फ्लैंक Molding. है वहाँ पे। मत Oh, pick कर, I'm और blind, मत कर, I'm blind, I'm blind। cross. ते पीओवी पे ब्लाइंड दे दूंगा मैं। ब्लाइंड दिया, Maybe don't do anything. तो साउंड आई थी उसकी। Not on POV, anything. You just. अरे नहीं stay. उसकी साउंड आई थी। Stay, it's not on POV, man. One enemy remaining. Heaven. डोंट पिक। I thought we killed him. I thought we killed him. भाई मार जाते हैं दोनों वीक कितने। अभी सोवा को भाई, सोवा इस बार तो भाई बेचारा बहुत गंदा पिटा, पता है आरएनजी मार के आया हो मैं। छी है, मैं कोई मार रहा हूँ, मैं आराम कर रहा था। ऐसे इसको देखा नहीं और सोवा तो आज पिंगू के लक पर आया है। देखो ठीक है, सोवा सोवा शॉकर तो नहीं है अबे। आई गेस सामने वाला सोवा शॉकर ही है। क्यों आगास इतना भी नहीं कोई रह सकता है। पैसा नहीं उन पे। हमारा ड्रोन शॉट अबे भाग गया। You ran back. इफ आई आओ साथ में साथ में। I smoked. शॉट एक हेवन सोवा हेवन। Hold city. I'm gonna blind on contact. Yeah, Hold it. डेडलॉक शॉट से हेवन लेना। हेवन देख प्लीज। Hold city. जस्ट होल्ड। वो फ्लैंक शॉट भाई वो मेरा क्यों है मेरे पे डेडलॉक यार। आउट सिटी एक हेवन He आउट climbed है। above. Short. You're not. टीपी कर Enemy remaining. Short. लॉन्ग लास्ट नहीं शॉट Short.
killed you. शॉट है रे मैं बोला हरामखोर है अरे डेडलॉक गंदा प्लेयर है भाई फ्लैंक देखना क्यों आ रहा साइड तू They're just bad. उसको ट्रैप लगाने भाई उसको सिटी में ट्रैप लगाने विंगलैंड को भाई और एक चीज वो खुद के ऊपर अपना वो नेड फेंका जिससे क्राउच होते हैं ना खुद हो गया और फिर उसको निकालने के पहले अपनी गन जी दबा के अपनी गन फेंक दिया सामने वाले बहुत ही नूब है सामने वाला बहुत ही नूब है शायद ब्रो व्हाट द फक समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ क्या उसी पे ड्रोन करके रिकॉन करके अल्ट कर रहा इतनी गंदी चैट है भाई Deploying drone. उसको क्या है क्या मैं तोड़ रहा हूं तोड़ दिया यू गोइंग अटैक एंड या ब्लाइंड देना ओके रिकॉन दे रहा है 60 वाला किल मैं लेफ्ट राइट देखने में बिजी था मैं बैक साइड कोई नहीं है ना नहीं आई नो रिवील था उसका Shock dart. ओमेंटी बिट हम बल्कि ये मैं भाई कितना गंदा वाला सिटी का निकल जा आई एम गोइंग लॉन्ग ए लॉन्ग लॉन्ग प्लेयर तू दिखता है लॉन्ग से वहां पे आई हिट समवन किसको तो हिट किया एक गैरेज टर्न One enemy नाइस remaining. लास्ट सिटी ये सिटी इन स्मोक था अभी पता नहीं वी आर ऑल अलोन प्लेयर रिकॉन अच्छा है क्या बोल अरे नहीं पिंगू आगा से ऊपर क्या है मेरे को लाइन अपने जहाँ लगना था ना पिंगू नीचे के बल्ले इसके जस्ट ऊपर लगा ओ हाँ तो देखो पता नहीं कहाँ लग रहा है इसलिए तो बताया भाई वैंडल दे चल आई थॉट सिटी क्लियर है वैंडल दे व्हिच वन डू यू वांट 20 मोर वैंडल हिले हटा बेशर्म है भाई और सामने वाला बहुत ही नूब है मैं खेलना ही छोड़ देता हूँ भाई टीम वाले सामने वाले सबके सब बुली कर रहे हैं भाई Scanning ahead. I have the spike. आई विल ड्रोन अपना जेट और डेडलॉक भी उतने ही लूंगा ना भाई आई एम नॉट ड्रोइंग शॉट इसको तो मैं ड्रोन कर रहा nobody is clearing it very good when he killed jet very good कैन वी जस्ट होल्ड फॉर 5 सेकंड्स 15 yeah hold जेट में आगे गया था आई थॉट ही विल Deadlock hold नहीं कर deadlock just doesn't want to hold 15 सेकंड्स दो इधर वी कैन फॉल बैक Still inside. मैं पीछे फॉल मार बैक ना दो इधर साइफर नहीं है बस साइफर उधर खेलता मुझे बैठ कर ए विकट गो ए चिलिनट ए लेके जाओ मैं रिकॉन करके आया बस हां एक स्मोक दे दे मैं तो बोलता हूं सी पे दो है तो वरना मत दे सी पे तेरा रुक जाए दो है मेरे पास हां एक सी पे दे दे वी वॉक बैक साइड प्लेइंग बैक साइड जाओ वॉक अप कर लो देखो स्मोक हेवन चाहिए सिटी चाहिए बता दे हेवन है ना अभी नहीं दे दे दिया गुड जॉब क्लियर है नाइस वन सिटी पहली बार इनका वॉल किया कैन यू कांटेक्ट रखना सिटी कांटेक्ट रखना कैन फाइंड आई एम कांटेक्ट yeah easy just keep that just watch heaven drop out deadlock वजह फ्लैंक ओपी फ्लैंक है deadlock will get blinded just one is heaven पाइनएप्पल बोला वो ब्लाइंड कर blind क्या One enemy remaining. हां लो 80 हेवन 80 नाइस लेट्स गो ओ भाई पहली बार अच्छा वॉल डाला है सिटी पे इसका वॉल ऐसा ही है आई डोंट थिंक इट्स एनी गुड इट शुड बी डीपर ब्रो नहीं अगर तू यहां से नहीं खेल रहा है यहां से खेल रहा तो बहुत अच्छी बॉल है वो दे वैंडल ने पिंगू स्ले बाय हिम बैड शिट क्रेजी Thanks. भाई शौकाई तो कितना भाई 9 पे अटका पड़ा है भाई वो हराने पे तो लाए शौकाई अपने को उसको नहीं लिया तो भाई बद दुआ Scanning ahead. तेरा कंफर्म रहता कि नहीं आप तेरे को मालूम है तो हम लोग का चल तेरा कंफर्म रहता आ जाए तू अकेला है भाई ठीक है इसलिए पूछ नहीं किया मैं ठीक कहाँ पे हूँ मैं तो है यहाँ पे इफ यू कम आई कैन ब्लाइंड शॉट दो है यहाँ पे सोवा है नोमेन फक सोवा भी है सोवा क्लोज है तुम लोग के हेवन है नहीं ओ हेवन भाग गया वो वन सिटी वन हेवन साइफर सिटी उसका रेस कैन बी बैक स्टैब ओके नहीं चल हट One enemy remaining. ड्रॉप 42 नाइस
भाई 40 एचपी पे आया था वो रेस एक शॉट में पड़ गया। 40 एचपी पे कार्ड खोलने का गूदा कहाँ से आता है इन लोग में? हाउ कैन दे? नहीं हम क्या देख ले। मारता नहीं ना अगर उसको तो बट ये हाँ खत्म थे अपन। देते वो दे बंडल दे ले नहीं। हाँ Need a drop. अबे कितना मोटा सा वैंडल है। हाँ ना इसलिए तो मैंने उठाया फेंक दिया। मैं उठा के खेल रहा, मेरा एक शॉट मेरे को दिखा भी नहीं अब तक प्लेयर। जल्दी जल्दी भाई का नेट मारिए तो। वन लॉन्ग Enemy spotted A. आ जा ready. दे उसको ब्लाइंड कर सोवा को। नेवर माइंड। no need I can blind shot सामने if there is तो anyone बहुत shot don't go shot I'll Nobody get blinded रे सिटी। nobody cares आ 80 भाई जेट टेक कितना door में I know exactly where. इनको ये फैंडल तेरी है क्या? Last ही player. इज आउट ऑलरेडी। लो है वो साइफर आउट है 70 दोनों वही है। नहीं दोनों वही है। दोनों उधर। One enemy वीक remaining. आप लोग अरे ए 40 मारा उसको 40 मारा पिंगो कितना दिया जस्ट से तू? बस 85 दिया। यार तो दूसरा शॉट मारते तो मर जाता था। नहीं गया ना मेरा बाहर ऐसा, फूका ही नहीं मेरा जज्बा। भाई उसका रेंज जो फूका है भाई जज। ये जेट डैश किया मुझे लगा एटलीस्ट कुछ ट्रेड कुछ तो करेगा एटलीस्ट मिनी मैप पे दिखेगा। नहीं तो उसके साथ घुसा मैं बट मैं बैठ गया। मेरी गलती में जेट पे भरोसा किया। he knew exactly where I was so I had to TP twice हां वो देना नंबर क्या रखना था इधर? ये ओ वैंडल रखना था। वैंडल हां यहां पे मांगा है ना भाई, मांगा है ना, दे जल्दी। Thanks. Need a drop. देखो क्या लगता है, नूब है क्या? भाई दो उसको कोई। हां कोई दो बार था एक बार था ना दे। एक नहीं बस एक सिंगल बार। Revealing area. थोड़ा गलत थोड़ा था लेफ्ट। अबे क्या दिया वो भाई? तू नॉर्मल वाले ही दे देता यार। हर बार अरे वो रिवील हो तोड़ दिया था लगता है। रिवील तो हो जाता। I blinded him ऑफ एंगल खड़ा था भाई, दे दिया वन टैप। तो बोलता ऊपर चल ले गैम्बल। वो नाइस प्लेयर ए graffiti भाई। ये जज Spike I'm down flash. A. ए जाना बंद करना पड़ेगा। Last player standing. 121 गाइस फेक ए सुनो मैं बताता हूँ। एक जेट यहाँ एक स्मोक डालेगा, सोवा रिवील डालेगा, Enemy only there. ठीक है। मैं एक ब्लाइंड डालूंगा, वी गो सी मतलब लाइक गैस टू सी। सब पे पाया ना इसलिए कुछ चल कर सकता क्या? I go no I have to sell a smoke then I can go I don't have a smoke. I don't have a no don't I full shield no shield let's go। शॉक डॉट नहीं है मेरे पास और ना ड्रोन। स्मोक ये तुम लोग वहां साउंड मत दो। हाँ गैरेज के Don't पास do जाओ, any गैरेज के sound थ्रू at सी जाएंगे, गैरेज के थ्रू सी जाएंगे गाइस। स्मोक that डाल will मैं be too ब्लाइंड डालूंगा complicated तो रिवील डाल। just walk Get out of my way. Still in sight. raise garage निकल लो तुम लोग। मैं आता मेरे पे वैसे भी get shield low come with me एक ये घर अच्छे स्प्लिट क्यों बोल रहे हो तू? बट नहीं। guys गैरेज you टू सी ऑल बोला था। haven't sold the fake yet you haven't sold it yet Cypher is down no trips ए वापस आ जाएंगे नहीं क्योंकि मैं reveal नहीं हुआ अभी यहाँ wait low come back डेडलॉक कम बैक वी गो डेडलॉक कम बैक क्लियर छोड़ दे गया तो गया। स्पाइक है उस पे। ओके हां yeah Bad. I can just ult anything can ult ये सी रोटेट कर रहे। ठीक है मैं ब्लाइंड नहीं कर रहा हूं। नाइस क्लियर है ब्रो। कम डेडलॉक कम बैक जल्दी। मर Your spike. गए। वन सिटी नहीं मर। आई कैन ब्लाइंड फॉर यू। One enemy remaining. देखो पीक लेना है, आई कैन ब्लाइंड फॉर यू वुमेन। I can also blind जेट वहीं पे ऐसे घूमता है ब्लाइंड रेडियम में। ये garage था हां बिलिंग Cutting their vision. Reloading. Enemy spotted B. लेट मी 30 प्लीज 30 बॉम्ब ना जज इसकी तो। Attackers win. कुछ तो सीन है मालूम। भाई साहब वेलकन गेम खत्म होते ही जो अल्टीमेट स्पैम जाता है माँ। इस बार डालो नॉर्मली एक डालता, इस बार पहला ना। इस बार तो भाई यार, उनका ओमेन का रैंक देख। इसलिए मेरे पास 1 घंटा टीवी और है
कौन है टीवी है? कौन है टीवी यहाँ है? पे है नहीं टीवी है, टीवी बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। टाइम ट्रेवल करता है। एक काम टाइम करो, वेरिएंस, उनके पीछे पे टाइम जाके- वेरिएंस एजेंसी था ना वो, क्या था फिर? टाइम वेरिएंस अथॉरिटी। हाँ टाइम ओह, वेरिएंस। हाँ। यो व्हाई इज दिस एमजे गाय रिक्वेस्टिंग ब्रो? ये जस्ट क्यू, हेलो जस्ट क्यू, सैमुराई, सैमुराई को लेना है क्या? जस्ट क्यू ब्रो, जस्ट अरे क्यू, शौकाई भी आ गया है भाई, 5 मैन करते हैं ना। जस्ट क्यू। सैमुराई को भाई लेना है कोई क्या? रिक्वेस्ट नहीं सैमुराई, आई, भाई, जस्ट क्यू। सैमुराई भेज ने रहा भी भाई, मांगा मेरे मैं हाथ भेज में कोई रिक्वेस्ट नहीं आई, जस्ट क्यू। ब्रो। कोई You रिक्वेस्ट नहीं only, आई, bro. जस्ट क्यू। कुछ नहीं आया है इसलिए यू कांट सी एनीथिंग। भाई उसका बुलडॉग का ये देख के मेरे को कैसे तुम्हें होता मालूम क्या? भाई शौकाई भी कर रहा है, शौकाई को बुला सकते, शौकाई को बुला लेना, 5 स्टैक हो जाएगा। हाँ भाई, तो स्लेयर कुछ नहीं करना आया है लाइक, वी जस्ट कर क्यू। लेंगे मेरे ना को भाई, फील करना जीतेंगे। पड़ता भाई, जीतेंगे जीतेंगे। just अरे क्यों? तू और फील उसको मत कुछ करना। आता नहीं दूसरा फिर। तू फील मत करना भाई, मैं भाई, feel कर रहा शौक- तुम हूँ। की जैसा बात बोलो, हो रही तुम है। जैसा बोलो वैसा, तुम जैसा 4 लोग बोलो। के इनवाइट आए, व्हाट द फक, सबको जैसा कैंसिल बोलो। कर रहा वही है, बोल रहा, सबको सब- फ्रेंड लिस्ट से भी निकल रहा है। 4 रिक्वेस्ट आई है, चुपचाप से क्यू कर ले भाई। Whatever you say, I will do. मेरे को से इनवाइट फाइनल, कौन फाइनल, लीडर, जो लीडर है वो फाइनल, डिसाइड करेगा। फाइनल, फाइनल मैं बोलो भाई फोन क्या लेके करना आया मेरा, आई बुला डोंट नो मैं स्लेयर बुला, फिर वो बड़ा पाव कसम। है। बड़ा पाव मैं खिला दूंगा स्लेयर, कोई ना। ये यार भेज दो यार मेरे घर पे कोई तो, It is not in my hand जी, कुछ ऐसे नहीं मिलता भी किसी- नहीं है यार। जस्ट क्यू मेरे को नहीं खिला है तो किसी को मत खिलाओ, जेनेटो का मैसेज आता। स्लेयर बोलता, वो बोल रहा स्लेयर मत बुला, अरे मेरे को नहीं शौकाई भी खिलाया आया तो हुआ किसी है को भाई मत यार। आज क्यों पिछले मैच में बोला हुआ है। वेलकन के स्ट्रीम पे आज सब आए, कल कितना ये भाई। गया है उसको मालूम क्या? कल आना चाहिए था तुम लोग ने, हाँ कल जब- आके आज अगर आया रहता ना। नहीं, कल जब सब सोने होते ना, कोई आज आता नहीं, पता है, कोई दिखता नहीं आज। हाँ ना, खौफ फैल जाता। कोई आता नहीं आज भाई, बोल रहा हूँ। प्लेयर तू लीडर है, क्या करना है कर ले, Player फोन गया। चार्जिंग पे लगा के। देख, पहली बात 4 इनवाइट है, कौन सी 2 को करना अरे है, मेरी बात करना भी सुनो, तो मेरी है। बात मेरी तो- बात सुनो, मेरी बात सुनो। शौकाई पहले से आया हुआ है, मैं पहले से आया हूँ, इनवाइट करो, 5 मैन लगा। जेनेटो का मैसेज आया है, नहीं नहीं डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, मत बुलाओ। जेनेटो को बोलो स्कूल जाए। तू भी तो जा। मैं नेटवर्क क्या मैं क्यों जाऊँ, हो गया। करना है भाई, स्टार्ट कर दूं? अरे बुलाना 5 मैन, शौकाई भी बैठा हुआ है भाई। गाइस क्या होल्ड ऑन अ सेकंड, भाई जो पिंगो और वेलकम Guys, बोलेंगे मैं वैसा करूंगा, आई तुम माइट दोनों हैव बोल टू दो भाई। आई माइट हैव टू गो। पिंगो एक मैच Why? खेल के जाएगा तू। एक मैच जान, अब टाइम देख के आ रहा है वेलकम, ऑलमोस्ट इट्स ऑलमोस्ट टाइम। वो- तो 40 एक हो मुझे रहा 5:30 बजे जाना है ना, 5:30 के बाद जाना है मेरे को। वेलकम नहीं जाने थे को, पहले बोल रहा हूँ। स्ट्रीम करनी है मुझे, वाली करनी पड़ेगी। नहीं like- करने पड़ेगी, क्यों? ज्यादा नहीं है, नहीं पड़ेगी। 2-0 खत्म होगा बोलो मैच। भाई, मैं आर आर करूं क्या, आर करूं? इसलिए मैं जाना पड़ेगा मेरे को। क्यों जाना पड़ेगा? 5:30 बजे जाना, वही बोल रहा हूँ। 5 5:30 बजे नहीं जा सकता, क्यों? क्यों लेट हो जाता, बारिश गिरती। अबे पिंगो, चौकाई वाली हरकतें कर रहा तू अब। एमजे के साथ ट्रियो कर ले। तू बोल रहा है कि मैं अभी स्ट्रीम बंद कर दूं, 1 घंटे बाद स्ट्रीम करूं वाली, ये कहना हाँ तो चाहता था। खेलना है गेम, एक दूसरे गेम पे मैं आता, उसके बाद क्या है फिर? तेरे को भी कुछ नहीं है ना, मेरे को कुछ है ना, स्लेयर को कुछ है, तभी खेलना ही है। 5:30 में यह है ना। तो अभी एक खेलो, फिर जाओ, फिर आओ। एक काम करो, क्या? सबको कैंसिल करो, मैं आता। ठीक है भाई, आज क्वांटम भी है, जेनिटो है। क्वांटम भाई शौकाई- नहीं, क्वांटम भाई डॉज देता भाई, बहुत गंदा डॉज दिया है। शौकाई शौकाई है, एमजे है, फ्रीक आ जाएगा। फेक है। मैं बोल रहा फेक को बुला लेते हैं। मैं हाँ खेल लो तुम लोग, स्लेयर एक मैच खेल लो, स्लेयर यू हियर। हाँ मैं हूं ना। हाँ ये एक मैच खेल लो, मैं आता, देन वी सबको हकलेंगे, अपन तीनों ही खेलेंगे। तो अभी क्या करना है अपने को? 5 स्टैक करना है? गाइस अभी अभी 5 सुनो, स्टैक करने सुनो, कर सकते हो तुम guys, लोग, बट एक शर्त- बार ढूंढना नहीं, पड़ेगा, एक शर्त ये मैं पे- तो नहीं है। एक शर्त पे 5 स्टैक, एक शर्त पे 5 स्टैक होगा। मैं नहीं रहता, शाम को कोई आया नहीं करेगा खेलने के लिए, हम ट्राई करने वाले। मैं तो रहता भी नहीं उस टाइम ब्रो। बता रहा हूँ, पहले से बोल रहा हूँ। नहीं फिर जिसको आना है एक प्लेयर लेके आओ, अच्छा बट अच्छा प्लेयर। हाँ, क्लोरो ऐसा वाला नहीं एमजे चाहिए। एमजे एमजे जैसा नहीं चाहिए। मैं क्लोरो बोल रहा था बट तो एमजे बोल दिया, ठीक है। ठीक है, मैं शौकाई, क्वांटम और एमजे है, तीनों अवेलेबल है अभी। भाई हाँ बुला लो तुम तीनों, क्वांटम कम, मजा आ रहा है वैसे। ओ भाई क्या भाई शौकत डिस्कॉर्ड क्यों नहीं ज्वाइन कर रहा है अभी तक? मैं तो इधर ही पड़ा रहता। अभी तक डिस्कॉर्ड आया होता तो पता है, थोड़ा chances स्पाइडर नहीं यूज खेलना है करे मतलब, इसमें। उसको नहीं खेलना है, ठीक ये वो- है, ये मत खेल, हाँ, कर नहीं लो तुम खेलना लोग उसको। ट्रियो, नहीं खेलना देखो शौकत। बाय, आ गया, बाय शौकत, बाय।
Bye bye. वैसे क्वांटम भी नहीं आया अब तक, क्वांटम नहीं आ रहा भाई। यहाँ पे नहीं, इनके भाग गया वो। अरे तो वो भाई क्वांटम क्वांटम वीसी आ जाना स्पाइडर के। इसी एक किल आ गया, वो भी अरे तैयारी पिंगू, बैठे थे भाई सब लोग। पिंगू 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 डिस्कॉर्ड डीएम देखना। आया ही नहीं कुछ तेरा, क्या देखूं? नहीं आया क्या? हाँ देखना, 7 तारीख का मैंने किया हुआ है, कल का। कब भेजा था तू डीएम? तूने पढ़ा नहीं। मैं वो सीरियस वाली की बात कर रहा हूँ, मजाक मस्ती की नहीं। बट वो अभी किस पे पोस्ट, तो किस पे भेजा तू? पोस्ट किस पे भेजा? तेरे को इंस्टाग्राम पे ऐड ही नहीं किया रे मैंने। मेरे को भी नहीं किया है। नहीं नहीं वेलकन भाई, बोलना। स्लेयर ये इंस्टा बोल दो रे, इंस्टा बोल। रुक जा, सुनाई नहीं दिया, बहुत लोग बोल रहे हैं। आई एम क्या था? इन लोग का होल्ड अंडरस्कोर बोल। MA स्टीम पे यूपीआई कैसे यूज करते हैं? पता नहीं है, मैंने सबका वही सीन हो रहा है स्टीम भाई। पे पेमेंट में जाकर जब पेमेंट करोगे ना तो Option ही उसमें नहीं है वहाँ पे डोमेस्टिक वॉलेट ऐसा कुछ आता है, डोमेस्टिक कुछ आता है। नहीं आ रहा मेरे। स्क्रीनशॉट दो। मैं क्या मोर्स कोड में लिखा तूने आईडी अपना? यही है, मैं क्या कर सकता हूँ। फेक ने रिप्लाई नहीं किया, वरना किसको क्या हटाते थे? किसी एक को तो हटाते थे। फ्रीक को पूछ भी लिया मैंने मैं पूछा बोल था। के नहीं, तभी भी। एक सेकंड ना, पूछा। स्क्रीनशॉट देख रहा हूँ मैं। वो तो क्या भाई, हाँ, गॉगल select गॉगल में पेन जाओ। रखा है, गॉगल पेन नहीं नहीं, रखा वो है। सिलेक्ट पेमेंट मेथड जाओ। हाँ इस पे नहीं है। ये ब्रो तेरा डीपी, तेरा डीपी क्या है बे? क्या? प्रीपेड वॉलेट डोमेस्टिक। पेट की डिब्बी पर इसमें वो कहाँ है? पिकना पेटीएम चाहिए ना? अरे सुनना हाँ आएगा एमजे, आएगा, उसी से आएगा। एमजे हाँ, तेरा उससे आ डीपी क्या है? जाएगा? हाँ भाई हाँ, क्या बातें हाँ कर मेरा रहा? बिल्ली है डीपी। नहीं नहीं तेरा आने रहा भाई आईडी। तू एक भेज सेकंड। देना भाई, इसलिए चैट देख तेरे लिए कोई मोर्स कुछ मैसेज कर मोर्स रहा अरे मोर्स कोड में लिखा है भाई उसने। इसलिए चैट देख तेरे डॉट लिए डैश कोई डॉट मैसेज कर लिखा है रहा भाई। डॉट अंडरस्कोर डॉट। हाँ किया नहीं आ रहा। है। इसलिए सुनना, एक सेकंड। इसलिए जेन्यूटो क्या? के लिए 2 शब्द तेरे को बहुत गाली दे रहा वो। आई क्या लव यू बोल टू। बताओ क्या बोला उसने? पता है किस चीज पे बोला उसने? सिगरेट तेरी सिगरेट की डिब्बी पानी से भीग गीली हो जाए, तू फूक ही नहीं, पूरे दिन सिगरेट की डिब्बी बिकना बंद हो जाए, आज तू I'll just buy उसका another one. एस्ट्रे, उसका ए, मेरे को एस्ट्रे ऐड पता कर है ले, क्या है तुम लोग मेरे को? को ऐड कर ले रे जयेश, मेरे को प्लेयर ऐड का कर ले। एस्ट्रे मालूम है तुम लोग को क्या है? पता है, पानी है, पानी। पता है पानी की उसको वो बोतल भी नहीं पता है। पाया, गरम अरे, करके पी लेगा ना 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 उसका ना क्या है? I upgraded, it's a ceramic cup now. I देखो वो upgraded. इंस्टाग्राम पे जो पोस्ट है ना वैलोरेंट का, ऑफिशियल वैलोरेंट जो है, उनका पोस्ट जाके देख, तू दिखेगा तेरे अरे जयेश लोडू ऐड कर ले रे। वो देखेंगे रे, वो खेलने, वो पहले उसको भी पूछना पड़ेगा, अगर क्लोरो का है तो फिर हम लोग वही खेलेंगे। मैंने मेरा आईडी डाला, क्या ऐड कर ले यार। प्रीमियम की बात कर रहा है क्या ये? हाँ हाँ तो प्रीमियम ऑलरेडी है, उसने बोला है। और भाई प्रीमियम से पहले मॉडल करना पड़ेगा, तो ही अपने को वो मिलेगा। क्या बोलते हैं, जो भी है। पिछले बार जो अपने को 19 मिला था ना, मतलब मेरे को सब में सोलो मॉडल खेलना नहीं थे। पड़ेगा क्या? प्रीमियर का टीम ही नहीं मेरे पास यार, क्या अच्छी है। तो स्लेयर ने शर्मा ना? और पिंगू ने, हाँ। मैं उससे भाई। ऑलरेडी पूछ चुका हूँ प्रो से। अरे प्लेयर तेरा भी बिल्ली है, मेरा भी बिल्ली है। ये पिंगू का बिल्ली एक्चुअली, जो मेरे डीपी में हैं? हाँ। जा जा देख देख देख। ये वो उसने देखा, अपनी देखा, बिल्लियों को देखा। जलाने के लिए अपनी डीपी डाली है, स्लेयर की बिल्ली की। Gets verified, no I don't want to. भाई वो 500-600 वाले फॉलोअर्स पे वेरीफाइड देख के ना ऐसा ऐसा रोना आ रहा है ना भाई। मतलब लाइक क्यों इंस्टाग्राम इतना क्यों पैसा कमाना था भाई? भाई तो तुम में से किसी ने थ्रेड्स यूज किया अभी? डाउनलोड किया बट यूज नहीं किया। कर रहा हूँ भाई यूज। शिट ब्रो पोस्ट करते ट्विटर तो खुद की मारने पे लगा हुआ है अपनी। इसलिए तो उसने फटाक से देख के निकाल लिया। क्वांटम मिला क्या तेरे को? बोलता है कि सिर्फ 600 पोस्ट देखने दूंगा अनवेरिफाइड अकाउंट को, 6000 देखने दूंगा वेरीफाइड अकाउंट को। मतलब क्या कर रहा भाई तू? व्हाट इफ प्लेयर की बिल्ली फूक गई है और डब्बा खत्म कर दे, मजा आ जाएगा। ये स्कूल जैसी बातें कर रहा भाई। स्कूल वाले बच्चा तो है वो। वही थोड़ा भाई, थोड़ा ऐसा बड़े हो जाओ, थोड़ा ग्रो अप। ग्रो अप बिच। क्या हो गया? किसके लिए बात? वो स्लेयर की सिगरेट के पीछे पड़ गया भाई। ऐसे कैसे बोल दिया तू? What did I do to you, bro? What did I हाँ do ना, to you? It ऐसे was कैसे all बोल दिया? Valkan. It was all Valkan. हेलो, व्हाट डिड आई डू? He was the one calling the shots, okay? मैं
इसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना है, इट्स मैं? ऑल डिसाइडेड बाय वेलकन No. बिकॉज़ ही इज ऑन पीरियड्स राइट नाउ, हाँ ही ठीक है कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। भाई, मैं पिंगू सीधा भाई, नहीं जेनिटो को तो बिल्कुल नहीं। पिंगू था वो भाई, हेलो, दैट वाज पिंगूस। वो देख पता मैं, नहीं क्या करता बट करता कुछ तो, वो आई डोंट नो जेनिटो के बट अगेंस्ट है, मैं एमजे के अगेंस्ट हूँ, वो क्वांटम के अगेंस्ट है, मेरे आगे शौकाई- शौकाई के अगेंस्ट सब है। मैंने क्या किया भाई? कुछ नहीं मतलब शोका इतना शांत क्यों बैठा भाई? मुंबई का वेदर कैसा है शोका? बारिश हो रही होगी ना। हेलो, घर से बाहर निकल, पता चल जाएगा क्या वेदर। हाँ साले, मुंबई में घर तू दिलाया ना। तो रेंट पे रहता है माना, बट फ्लैट से निकल ले भाई। चुप लौड़े। एक ही चीज आती ना देखो बच्चे, चुप साले। ये देख बस वेलकम। एक तो अपना कैमरा टिल्ट क्यों किया है? अरे मैंने बाजू वाले मॉनिटर पे डाला है, छोटे वाले मॉनिटर पे। हटाओ क्या, सेकंड क्या मॉनिटर मैं पे देखता, क्या मैं देखता। क्या हाँ क्या हम ये देखते रहा स्लेयर। अब ठीक है, एंगल चेंज कर रहा। अब ठीक है। एक तक कितने बार बोले थे मॉड देखा है क्या? दूसरा आईडी से है ना, बिन पॉकेट की वॉच टाइम की लगाता है भाई, यूज की और वॉच टाइम की दूसरा आईडी से। स्लेयर कहाँ गया? पिंगू अपना बोलियो। वो जेनिटो ने इतना बोल दिया कि क्या वो अपना बिजी हो गया उसमें। अरे अपना ये नाम इंस्टा पे। पिंगू खड़े, पिंगू क्या था? यो खड़े के पल्लव, एचडी खड़े। बड़े लोग कैसा है भाई? मेरा मैसेज क्यों नहीं आया? अभी आया ना, आया ना, कोई क्या आया? आया आया, ओ अच्छा आया आया आया। तो भाई ठीक ठीक है ठीक है हेलो भाई, स्लेयर। ये कर ले तू। ए मैं आता वेलकम। हाँ ठीक है। बोलो क्या ही देख, जल्दी जाके बोल आ पाया क्या? पिंगू, पिंगू जल्दी जाके जल्दी आ। नहीं, अभी मम्मी गई है मैं भाई और सुन, मैं मैं फोन एक चीज सुन, क्लियर तू पिंगू जल्दी जाके आया। वेलकम मैच नहीं, नहीं वो मिला, नहीं होगा। मैच नहीं नहीं मिला होगा वो। तो इनमें से एक को हटा देंगे। नहीं अपने को टाइम है, लाइक अगर तू खेलने नहीं कोई गया की तो भाई। मैं आएगा जल्दी, नहीं तो मैं नहीं आया। हाँ तो फिर तो लेट आराम से। मैच देखने नहीं गया हाँ लेट आराम से। तो फिर मैं भी लेट ही आता, फिर क्या मैं जल्दी लेट आके आराम से। और मैच जल्दी खत्म कर, एक मैप हुआ बोर हुआ खत्म बंद कर। हाँ हाँ। अरे देख, नहीं मैं पहला मैच इसलिए नहीं किया, दूसरा मैच दोनों टीम क्लोरो अच्छी भी है। है। भाई क्या चल रहा है, क्या चल रहा है आज? नहीं मैं नहीं आज क्या चल रहा भरा वीसी देखा मेरा बाप रे भाई। भाई? तो भाई एडवर्टाइज कर दिया। नहीं 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 नहीं, भाई क्लो क्लोरो क्या आज, है? क्लो क्लो क्लोरो आज, ये सर्वर बूस्ट करना है। क्लो सुनना, आज आज पता नॉर्मली अपने पास बंदे नहीं होते ना, आज हम ट्रायो बैठे, ठीक है, मैं पिंगू स्लेयर 5 इनवाइट रिक्वेस्ट आके पड़ी है हमारे पास। रैगना छोड़ के बाकी सब ऑनलाइन है, कोई भी रहने दो फिर वो। सुनना, 5 रिक्वेस्ट आके बैठी है, तो भाई ने भी भेज ही दिया बाद में। एमजे है, कॉन्टेक्ट और एक कोई तो था ना, सब सोलो खेलो अगर एक दूसरे गेम में बात हो। नहीं पिंगू मैं तो तेरे साथ ही खेलूंगा भाई सॉरी। ये हाँ और मैं जेनेटो जा रहा ये अभी मैच बट तो करो। हारेगा अलग एमजे, option क्वांटम नहीं शॉट है, ही हार हो गया। क्यों घुमाने जा रहे इसे हो? क्यू में Yes. को अबे भाई ये सब आ गया था। क्लोरो कौन सा क्या मैप नाम? देख रहा है? एक नाम ले लिया, वेलकन बोलो ना। घटिया सा। क्या छोड़ ना भाई इसको। आज सेमीज है? किसका तेको क्या है? Ascension- अपने को जाना है ना 15 को। एक सेकंड रुक। चू- स्लेयर डीएम चेक नहीं करो बट भेजा है? अरे हम यूज्ड टू नहीं है ना ऐसे तेरे को मुझे- देखने अच्छा, मुझे तो इसलिए पता ब्रो। ही नहीं था। वीसी में नहीं देख पाते It's यार। like a ghost Screen man. I mean from like it's queue like off a किया, ghost is damn. here. It's like that. है ना, रेयर मोमेंट है, अरे कुछ मोमेंट बोलना में था मोमेंट है। बस जेनेटो कुछ बोलना था। इनको तो ऊपर जाने वाला था ना भाई। मम्मी आ रही है, मम्मी मम्मी के लिए Match रुका है मिल मैं। भाई आज पता है आज मेरा था उसका पेपर किसका। भाई तेरे पेपर खत्म हो गया ना बोला तू? लैब एग्जाम था सुन तो। अच्छा। मैं ना पिछले 3 सेमेस्टर से लैब एग्जाम में कभी पढ़ के नहीं गया था, एकदम झक्कास जाता था पेपर। चल रहा है नाइन पढ़ के गया था इस बार। 9 नहीं, क्वांटम तो केजे पे अच्छा है। 9 नहीं 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 9 नहीं
क्वांटम नियॉन भी आजकल बहुत अच्छा क्वांटम केजे साला। चौकाई तेरे को रेस जेट खेलना है तो खेल ले। ये रेस खेल शौक है, चुपचाप रेस खेल, बैल्कन फाइव ब्रिज स्टैक उठा, रिलीज करते ना। एक बंदा स्मोक खेलो, हाँ बात ठीक है, खत्म, ब्रिम और खेलो, कोई कोई निकल ब्रिम लूँ लो मैं, तो अभी चले जाओ, अभी स्ट्रीम कर लूँ मैं। ब्रिज उठा रे बैल्कन। ब्रिम ले एमजे या MJ क्वांटम, ब्रिम और खेल तुम दोनों स्विच कर लोगे, तुम्हें करना है तो 1 मिनट। ना मैं ब्रेम नहीं लिखता। जस्ट सेइंग, MJ बैल्कन ले लेगा ब्रिम। अपने। एक चीज बोल रहा हूँ मैं, जस्ट सेइंग, अपने वीसी में 1 2 3 6 जन बैठे मुझे छोड़ के, और उनमें से एक भी चैट पे नहीं है, मतलब लाइक वॉचिंग में वो नहीं है। मैं तेरे साइड में वो Because we are in the VC bro, what's the point? वॉचिंग लगा के छोड़ दो गरीब की। ये देख मैं तो नहीं तेरे side I में can't full I can't है। afford to do that bro, मेरा वाईफाई हक देता है मैं ऐसा कुछ करता है तो। छोड़। मैं इथरनेट अरे MJ ब्रिम ले भाई, क्या कर रहा एमजे है? हेलो, एमजे गया, एमजे क्या हुआ, क्या लेना है? ब्रिम। भाई वेलकम तू खेल भी रहा है? लो ले लिया। हाँ पहला मैच नहीं किया मैं, सेकंड मैच करना, खेल रहा है। मतलब सेकंड मैच करने वाला हूँ मैं, लाइक बूम वर्सेस। खेलना है शौक है, खेल रहा है क्या तू? हाँ ये लोग खेल रहे हैं, हम सब खेल रहे हैं, नेक्स्ट मैच में जाओ, तू आ जा। खेल रहा है तू? हाँ क्यों में तो चला गया 5 भाई मिनट तो वही में। बस तू और ये वेलकम ना सीएस नेक्स्ट मैच एमजे और क्लोरो जा रहे हैं तो पागल है फिर क्या भाई, कितने दिन बाद आया पूछना। भोसड़ी क्यों तेरी गाड़ी ना चल रहा है। थोड़ी ना है। हरामजादे तू भी ले, बहुत दिनों बाद आया, ठीक है सबके पता चल रहा है। क्लोरो तू पहले परसों रात, presence एक मिनट कैमरा एक मिनट एक मिनट गाइस, सब क्लोरो को शांत किया था, परसों रात को क्यों नहीं आया क्लोरो आने के हाँ बाद? रात का बताइए जरा हरामजादे। हाँ क्लोरो शौका ही आया था, तू कहाँ था? कल 3 हम खेलने पड़ गए। हो गया ना, शांत हो गया, चुप बैठ अब। अच्छा यहीं पे बैठ ना, क्या कर रहा है? Gosh, they're diffusing हाँ उनके to पास speed गेको है। up the timer instead. Oh, man, funny with that. इनके पास गेटवे तो हमारे पास एमजे है, डरते हैं क्या? हाँ भाई वही तो सबसे बड़ा डर है। स्किन दो। और क्लोरो सारे पेपर खत्म। ये देख लो, ये शौकाई की वजह से मैं पिंगू फिल करते जाते भाई। पिछला मैच एमवीपी बन के आया। पहले अभी मैं फील के लिए चुपचाप बैठा था, तुम लोग बोले रेज लो, गांडूगिरी मत करो मेरे साथ। दिमाग खराब। और कुछ तो आता है नहीं देखो, और क्या कर सकते हो? चल गो संडे। साला कितने हरामी है, कोई खुद मेरे बोलते साथ आ हैं, जाओ ना, बोलते कोई एक मेरे साथ आ कुछ जाओ। आता नहीं है ना भाई, डिफरेंस है। अरे तू साथ साले। है। उसके साथ जाओ। नहीं छोड़, लेट आवाज है। स्मोक आ गया उसका भी। स्मोक है। ट्राई पे लगा, वी कैन फॉल बैक। मेरा नेट गया आई गेस। रेजर इधर वी कैन फॉल बैक। रेस था, साइफर था ब्रिम में, जेट अननोन है बस। अबे ऊपर। अबे स्मोकर तेरे को कॉल दी थी, लेट आना है। अरे आ तो रहा था भाई, और कितना लेट आऊं? पीछे आने की वो कॉल चढ़ आ गए रही मेरे है। ऊपर, वो चढ़ गए मेरे ऊपर। भैया लैग हो रहा है बहुत, मेरा पैकेट लॉस आया बहुत। स्पैम कर दे, क्वांटम स्पैम। 50 साइफर आर्केड। भाई क्या लैग है यार, एक गोली लगी तो अटक गया उधर। साइफर लो गया, वो साइड गया। फिर आराम से एक मॉली ऑन कर दे। नाइस शॉट एंड काउंटर। लो दोनों 105 ले लेना। हेलो पिंगू गया वेलकम तो नेक्स्ट टाइम जा रहा है क्या? हाँ स्ट्रीम करना है ना। आराम से ना, मैं हूं मैं खेलूंगा। स्लेयर भी है। नाइस क्लच है क्वांटम। Calculated. लेट्स गो भाई। पता नहीं मैं अचानक से पैकेट लॉस 30% गया, एक गोली लग गई मैं अटक गया भाई। अरे इट्स ओके ब्रो, डोंट वांट समरी। लोरा भाग मत जाइयो। यो मतलब ए ब्रो शौका है। बोल नए स्किन्स चाहिए तो बिंदास मांग लियो, ठीक है? देना, फिर पूछ रहा है देना। ए एक चल बात बता, बोलना। तो हर चीज ब्रीफ में क्यों बताता है? चल बेटे चल। ए वो बुलडॉग देना जल्दी, दोनों में से कोई भी दो। बैठा है इस पे, बैठा है क्या किया? शौकाई हाफ शील्ड तो ले ले, जल्दी आगे जा। गन लूंगा जा। देख रहे हो, फिर बोलो कि थ्रो करता चल ही। चल टावर चल क्लियर। मैं देख रहा हूं ना, मैं लॉन्ग रेंज फाइट ले रहा हूं, क्लोज तो ले लो गांडू। विगर स्मोक है भाई। एक बैक स्टेप आया। बैक स्टैब है। टू आर्केड। हेल्प। डेड किल हिम। ठीक है पीछे आ जा। क्यों ले रहा फाइट? One enemy remaining. दो ब्लेड। आ जा। बैक स्टैब। गन मत लेने दो उसको। ले लिया गन। ब्लाइंडेड है। मारा। ले फैंटम ले। अबे मुझे लगा मर गया।
मैं छी उसको भाई, छी। इसको गन छी दे भाई, क्या छी। आया हूँ। स्लेयर गन उठा, छी, छी, स्लेयर छी। स्लेयर गन उठा। क्या पागल वेलकन है साला। अबे शरीफ क्वांटम दे रहा हूँ। सुन ना, क्वांटम इतना क्लोज आया और तू ये बोल रहा है Vandal फैंटम ले लो। मुझे लगा मर गया। आई थॉट ही डाइड। मुझे क्या प्राइस दे रहा है साला। वैंडल दे स्पाइक पकड़ो। और स्लेयर वहां पे बुलडॉग फेंक के क्यों उठा ना, खड़ा हो गया भाई उगता हुआ। मैं तुम्हें देख रहा था यार, ज्यादा एंटरटेनमेंट चल रहा था उधर। भाई मैं लिटरली ये इतना क्लोज आ गया क्वांटम, आई थॉट ही किल्ड हिम। गन फेंक के आगे जा रहा हूं। क्वांटम की अच्छा उनके में ओह नाइस कर रहा था, नहीं देखा था भाई। मेरा लैग हो रहा है, मुझे इस स्पाइक पिक मत दो। ड्राइवर आई कैन फ्लैश, तेरे को जाना है तो फ्लैश। मॉली ले, वी कैन ओके। गंदा मॉली वी कैन गो। माय बैड। अरे मैं स्टक हूं यहां पे। आई एम वन एक एचपी। स्मोक में, एक स्मोक में। नाइस नो एक ऊपर चढ़ा। इतने गंदे स्मोक्स है पगा से। कांट हेल्प इट, मेरे हाथ में मॉली आ गई थी। कांट हेल्प इट, दो तो तूने डाले हैं तभी अच्छे से डालना। देख सुन, पहली बात सुन हाँ मैं बता देता हूँ। 1 2 3 ऐसे जाएंगे। अगर तेरे को लाइन से डालना है तो 3 जाएंगे यहाँ पे, 1 2 3। अरे मैंने किया था, मैंने सही स्मोक कर दिया था यार। खदे सुन मेरे भाई, नहीं सुन मेरे भाई, वो स्मोक में ना गोल है, बीच में वो सेमी सर्कल है, तो बीच में वो क्लीवेज बन जाता है। क्लीवेज है तेरे स्मोक में, क्लीवेज है, मत डाल क्लीवेज। कोई बाय कर रहे हो, सेल कर रहे हो? माफ करो, माफ। सेल कर रहे, क्या चाहिए तेरे को बोल। राइट में मतलब यार एमजे हाँ भाई इको के चल क्वांटम आगे कुछ मार्केट कुछ आगे घुस, ते पे करने ते पे ट्रेड करेंगे हम। आगे घुस। जा मैं यूटिल वगैरह। क्लोज क्लियर। अबे मैं और ले रहा। कौन तेरा अल्ट आएगा, तू ले ले। I dropped the spike. अच्छा तो कुछ लगाया नहीं मैंने। Echo here. Cypher might also be. ए ब्रन गेट खुलेगा। गेट करना है क्या? आई कैन फ्लैश दे दे। आई कैन स्टन ये डिफॉल्ट राइट एक का। सेकंड स्मोक कर रहा हूं, वेट। क्या जल्दी कर है ये क्या ये करना ड्रॉप। क्या ये नोंडा भाई, क्या भाई, स्मोक drop कर रहा है? स्मोक ड्रॉप कर देना। जो हमारे पास कंट्रोल है वही स्मोक कर रहा है ये। ड्रॉप स्मोक कर देना नेक्स्ट टाइम। भाई थोड़ा भाई थोड़ा सा बाहर की तरफ स्मोक गेम सेंस किधर है? चुप रहो यार, कितना बोलते हो? कितना बोलते हो? स्मोक गलत कहेगा तो सुनाऊंगा ना। म्यूट हो जा भाई। हाँ निकल। कितना बोलते हो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है मेरे को यार, लिटरली। ए केजल्ट मत करना, केजल्ट मत करना, उनके पास ब्रिम अल्ट है, केजल्ट मत हां करना। पता है। फैंटम रिप्लाई टू योर टाइटल नो। ठीक है यार टॉय, तू भी ये कर ले यार। प्लीज ले फैंटम दे जल्दी फैंटम दे। ये बात में है भाई, भला ट्रिगर हो जाता है भाई। रुक जाना थोड़ी देर, बहुत अरे मत करो यार, चिल करके खेल लो, वरना भाई हारना है क्या तुम्हें? हारना है तुम्हें। शांत हो जाना यार। और ले रहा मैं। ठीक है ले कुछ नहीं तो बोलो, रेडी हूं मैं। साइड क्लियर। मॉलिड है। डोंट गो। और रुको, क्वांटम को स्पेस बना दो यहाँ पे, अपन थोड़ा और पिक करते हैं। दैट स्प्रे ब्रिमस्टोन, व्हाट अ स्प्रे ब्रो। अरे मैं कॉर्नर के लिए चेक कर रहा था। एक साइफर और एक सिटी है। अरे वॉकर का रोटेट करना। स्मोक तो नहीं दिया ना तू? निकल रहा हूं मैं। नहीं निकल रहा हूं स्मोक है उनके पास 5 अल्ट है बॉयज। अपने पे भी दो अच्छे अपने पास भी 4 अल्ट है। अभी सुनो, बी पे गाइस डबल पिक, बी पे अल्ट करो ना नीचे। क्वांटम अल्ट कर, मानो वो अल्ट कर, ब्रिम अल्ट करेगा। मैं ले सकता हूं और आई कैन स्टॉप हिम। वेट। नहीं स्लेयर तू रुक जा, उसको कट करने दे। केजे अल्ट कर और आजा। स्लेयर ब्रिम इधर आ जाओ। स्लेयर सब इधर आ जाओ। यहां पे हेवन। मैं खोल रहा हूं दरवाजा। वो पीक लेगा। क्यों खोला भाई? वो भाई वो पीछे चल दिया। 35 ऊपर बैठा है। नीचे कूदा वो। नीचे साइड गया शायद, सैंड गया शायद। सैंड है। डेड। आई एम फ्लशिंग। वेट ये क्या पे? यहाँ पे जेट है। आ गया ब्रो। नाइस। वी हैव टाइम। लास्ट इधर है। ड्रॉप ये ड्रॉप आजा। आप समझे स्मोक क्यों गंदा थे यार? वो आराम साइड पे भी आ सकता था। नहीं तेरा ये देख। थोड़ा डीप जा। वो ये देख मैं यहाँ। और ये मेन से किल एमजे प्लीज, मेन से किल। वो देख मैं अबे एंगल रिलैक्स करो। क्वांटम तेरे पीछे देख ले। करो एंगल देखना।
Turret out. सेव छोड़ कर सकते पीछे देख, ये देख, अब देखा, निकाल लूंगा। Chill. We have Brim ult. You guys don't have to peek anything. अब समझ मैं एक सेकंड सब शांत रहना। वेलकम okay, उधर खड़ा है, तेरे को पीक लगा के रखना चाहिए। तो उसमें मैं कहां से आ गया? तूने बोला मेन खेल, मैं मेन खेल रहा था। MJ बाय थे मेन से मुझे देखना है ना भाई, अगर तेरे को पता है उसकी इन्फो कहाँ है यार। तो ऑस खेल रही है यहाँ पे, ये देख रहा है यहाँ से। नहीं देख रहा था मैं। क्यों नहीं देख रहा था वो ब्रो? क्या बोलूं भाई। हेलो विशाल, Brim ult गया, क्या Brim ult गया। प्ले योर गेम ब्रो। उनके ब्रिम ने केजी ult नहीं किया क्यों? अच्छा टू बी ऑनेस्ट फास्ट टैग खेलने से ज्यादा देखने में मजा आया, कॉल सुन के वैसे समझ गया मैं। और विशाल भाई कैसे है? अभी मैच देखने आएगा क्या? आई एम होस्टिंग द वॉच पार्टी ऑफ सेमीफाइनल्स का। भाई ये कहां I can ult. I can place. अल्ट करना है क्या? पुश करते हैं। ब्रो द फक। मरेगा वो, मोस्टली मरेगा। नहीं मरा, बच गया। साइड है क्या? जेट साइड है। No knives. जेट साइड। एक ऊपर नहीं है, नीचे है। साइड पे क्लासिक लेके बैठा है भाई। आई एम अल्टेड। 105 रेज 105। नीड हेल्प प्लीज। गाइस बचाओ। तुम दोनों डिटेंड हो क्या? हाँ डिटेंड पे हम। Spike डिटेन down थे दोनों। A. ब्रो वो इसको फकिंग काटा शिट मैं। रे। अरे मैं बहुत प्रो होने का VCT कोशिश उसका अल्ट। VCT Ascension हम पुश पे ड्रॉप डालता। नाइस। Ascension का है। आजा VCT। पहले ही कूदा देता है बे। हाँ तो पहले ही कूदना, हाँ, पहले खुदा देता है तो फिर तोड़ना उसको इम्पॉसिबल। क्या हैवक क्रिएट कर रहे हो गाइस? मेरे पास एक्सेस है ना, वो था हमारा, लेकिन एमेन पे जो मरा ना उसकी वजह से प्रॉब्लम हो गई। एमेन पे नहीं मरना चाहिए था, कोई बात नहीं। अभी स्ट्रीम उनके रोटेशन आ नहीं रहा इतना जल्दी, दो ही लोग सप्रेस हुए अल्ट में। अरे रोटेशन इसलिए नहीं आ रही क्योंकि हाँ तो मैं VC आ जाइए, मेरा सर्वर है क्या दिक्कत है? स्क्वाड पे भेज देता हूं। तो कैमरा इधर लगा होता है। किसी पे पैसे हैं क्या अच्छे खासे? अबे तांग कुछ पैसा नहीं है। इसको खेलो यार आराम से। गेको ने यार आई थिंक बी मेन पे किसी ने पीक किया था। बिकॉज़ प्ले डिश बी मेन पे किसी ने पीक छोड़ा था। मैं नाइफ कर सकता टावर। ऑफ हो सकती है आराम से खेलो। ना नो अप टावर पे खेलता है वो। टावर रेस साइफाई भी है आई कैन अल्ट टावर। ना इको डोंट वेस्ट इट। गेको पुश्ड एंड वन मोर गाय पुश्ड देम, टू पुश्ड। दो से पुश कर चुके हैं, मेन से बेरली कोई पुश करेगा। अरे नहीं बचा। हेड टूट चुका था यार। 55 है रेस। Last player I standing. know I hate him hit. God but. वाह भाई ये तो बहुत बुरी मौत थी। ये तो बुली था, बहुत बुली किया उसने बस। अभी सुनो एक चीज बोलता हूँ, सब जो भी जो ये शॉपिंग करनी है जल्दी कर लो। कॉल्स लूंगा, सुन लो। कॉल्स दूंगा एक बार में, सुन लो सीधा गाइस। यहाँ पे स्टन करूंगा, कोई यहाँ से कुछ नहीं कहेगा। अपन लेंगे सैंड। इन गेम के बोल रहा है। अरे तुम यार सेम वो है म्यूट का। यहाँ पे स्मोक चाहिए, ठीक है? यहाँ पे स्मोक चाहिए और यहाँ पे स्मोक चाहिए। अपन ये लेंगे और बी जाएंगे, ट्रस्ट में। तो 3 मार्क किए भाई वापस। हाँ ये स्मोक अबे और ये स्मोक। ब्लाइंड रुक जा डिस्टेंस टू लेट। हां ब्लाइंड हो गया। Enemy spotted A. जेट है उधर चल जम बेटा। साइड नाइफ कर रहा हूं मैं। क्लियर साइड नो वन कम मैं स्मोक आउट देख रहा हूं। आ जाओ जल्दी आओ। अभी आओ ना यार। 80 क्वांटम हाँ मैं अकेला हूँ। अरे यू कैन दोनों अल्ट पे वी हैव टू अल्ट्स प्लीज पोस्ट स्टार्ट इजी वन। एक इधर था और एक मेन था। बोथ प्ले मेन आई से बोथ प्ले मेन। हाँ देख बैक अप द वन प्ले आर्केड वो चेक करेगा। One enemy remaining. इधर है मेरे पास है। ठीक है चिल कर। इज स्पॉन ब्रो प्लीज। बस इजी। कॉल कहाँ था? देखा शायद मैं कहाँ पहुंच चुका हूँ। यहाँ पे अगर हम 4 जन होते हैं,
वो मुझे मार भी नहीं पाता। ट्रेड छोड़ गाइस, लाइक 2 बंदे यहाँ है, एक यहाँ है, यहाँ पे यहाँ से स्मोक होल्ड कर, समझ में आया। मैं अकेला यहाँ क्यों? क्या पता अरे हाँ तू स्मोक होल्ड किया, मैंने बोला चले गए पीछे। एमजे बाय मैं अकेला साइड गया था बस भाई फेल्ट लाइक एक बंदे को मेन से जाना चाहता है ना। गाइस प्ले स्लो प्लीज, सोचने दो कुछ करते हैं। अब समझ रहे हैं ना विशाल में क्या बोल रहा हूं। एडवांटेज उनको ब्रीच नहीं है। गेको आर्केड मां की आंख वाइड। डोंट पिक कम एक्सपेक्ट नहीं किया बे। एंड फ्लैश रुक जा। गेको मेरे पे ड्रिच ऑफ लगा जेट को स्टन कर सकता हूं। स्टन जेट स्टन है वो। दे ओपन द डोर पुश। Spike down A. नहीं A is very choky bro, we get choked on A. आए हकिया गाइस नहीं पहला पिक कैसे जब स्लो बोला हूं, मैंने रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज स्लो खेल लो। लीगल पिक लेते भाई वो यहाँ पे ऑफ लगा इधर ऑफ लगाया था। कोई शेर रुपए दो ना, मुझे रुपए दो, क्वांटम शेर रुपए दे। ये मार्शल दे प्लेयर तो क्या बोलती प्लेयर मार्शल भीख मांग के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, फिर भी नहीं सुनते भाई ये लोग। चल तेरे को तो कहीं गो फॉर द बॉडी। ओके Behind me. जो मेरे से आसपास है वो बॉडी के लिए जाना प्लेयर। आगे जा। मैं हूं मां यार स्पाइक रख लो अपने पास ही। एक इधर है करना अभी पिक से खेल। आई नीड ऑर्ब। रो पे रेज आना रेज आएगा इधर से। अभी आगे push कर नेट ओपन है। रेज आएगा इधर से, देख होल्ड कर मेरा एंगल है ऊपर। आया क्लोज आया नीचे। अबे मेरे सामने खड़े हो, मेरे सामने आ गए तुम लोग यार। आ जाओ स्पाइक लेते। अबे रेज नीचे आ गया भाई। Player 110 मैंने सुना है 110 है। नाइस। अरे मुंह पे साचल किया रे वो। अबे वो रेस को बहुत आदत है यार ये सब करने का। चलो अल्ट करके उनके ब्रिमल Stuff has malfunctioned yet. अरे दो कार्ड बनाओ ना वेलकन। तू और केजे बनाओ, मैं और ये स्लेयर बनाते हैं इजी। आ जाओ क्या नहीं ब्रीच के साथ रेस को जाता है, ब्रीच के साथ रेस हो नहीं जाता मेरी बात सुन। नहीं बी में ना अल्ट अरे ले। बनाना क्या स्लेयर है, तो नीचे बताओ। जाके अल्ट करेगा, स्लेयर नीचे जाके अल्ट करेगा। डोंट वरी। तो टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। केजे बी में का ऑल प्ले इजी है। स्लेयर के नीचे ऊपर कर ब्रेम अल्ट ना कर ना पाएगा, कर ब्रेम अल्ट नहीं कर पाएगा। तो फ्लैश कर ऊपर से ऊपर कर। ठीक है पीछे खड़े हुए ते को अल्ट ऑफ लेना है। लेट मी गो। यही ऑफ लगा रहा है पीछे खड़े रहे का समझ में नहीं आता क्या तेको। अरे सॉरी लेट्स वन अल्ट। आई थिंक गो मेट अल्ट। कर लेट हिम अल्ट। करो दो तो सेकंड अल्ट पुश करना है क्या? वन बैक स्टैब कोई कॉल भी नहीं लेता है भाई, कुछ भी कर। एक बैकस्टैब और एक सिटी होगा। 106 रेज 106 बैक स्टैब मेन से आएगा। अल्ट मारेगा आई वर्ल्ड चल रहा है। टैप इट, जस्ट फेक टैप। टैप कर बस। Last player standing. One enemy remaining. नाइस ये बढ़िया क्वांटम। यार ये क्या नहीं कौन सी नहीं तू पहले बता लैंग्वेज कौन सी चाहिए, मैं उस लैंग्वेज में बात करता हूँ। Round before मुझे the एक्सपेक्ट नहीं switch. किया था कि वो आर्केड पे को ना ऑफ लगाता है यार। नहीं लगाते, अनपढ़ है। कौन से रैंक पे खेल रहा है? सिल्वर खेल रहा है। प्लेयर चाहते लोग या तो यहाँ ऑफ लगाते हैं तो इधर मेन। वही पूछो, वापस पूछूंगा सिल्वर खेल रहा है क्या? शांत हो जा भाई, वेलकन खोता है यार। उसको कॉल दियो, मैं आगे चले जा। मैं बोला बस मैं कोई पीछे बात नहीं यार, कोई बात नहीं। नहीं सब कोई casual बात ही है नहीं, भाई कैजुअली यहाँ है तो निकल ले। हम कल ही बात की, हम सीरियस खेल रहे थे। को पिछला गेम भी बोला कैजुअल खेलना है, निकल ले किसी और के साथ। रुक जा। हां रुक मैं एल जंप पे कर दूं। क्वांटम नहीं है ऊपर। लो है पीक में मेरे साथ है। तो वॉक इन कर रहा हूं। छोड़ दे। एक और है। बेट एंड स्विच कर लो। होल्ड साइड है ब्रिम साइड है। साइड पीछे निकलो। वेलकन तेरे नीचे। नाइस पीछे केयरफुल। अब नहीं होगा, अब साइड नहीं होगा। कम डाउन नो अल्ट। अपने उस पे बॉडी पे अल्ट किया। एक डिश है, डिश पे अल्ट किया वो। मॉली ब्रिम तेरे पे अल्ट है, आराम से मेरे मेन खेलना।
एक डिश है। I die here. You guys play safe. दोनों डिश है, दोनों कर दे चल में बढ़िया। पैनिक करेंगे वो लोग, फाइट लो। नाइस फ्लैश में फ्लैश थे वो लोग। वाल्कन ये तो बता, तू फाइट क्यों नहीं रहा? वॉक करे चला मना। Switching sides. फाइट तो लेते अगर बंदा फाइट नहीं रहे तो। भाई सुन ना, तू ये देख ले, जब मैं फाइट नहीं ले मैं इतने चिपक के जा रहा हूँ, अलग से पीक लूंगा, जस्ट हाइड ना। क्वांटम आ जाओ बी पे खेलते हैं अपन। और 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए शांत। नहीं तू रोटेशन पे खेल, एमजे रोटेशन पे खेल। नहीं हां मैं अबे केजे, अरे केजे भी आ जाता, केजे भी आ जा रहे। केजे बी नेक्स्ट राउंड भी आ जाऊंगा, इस राउंड कर रहा हूं। ठीक है नेक्स्ट राउंड। अब मेरी बात सुन लो, नॉर्मल डिफॉल्ट विल बी रेज ब्रीच ऑन ए, केओ और केजे विल बी बी, और ब्रिम रोटेट करेगा स्मोक के लिए। ठीक है, सिंपल सी बात। मैं तो बीच में खेल रहा हूं, ये राउंड खेल रहा हूं। खेल ले, अब आ गया, कर लिया सेटअप, नहीं बोल रहा हूं। टर्न रेडी है मेरा। गाइस फेक किया क्लोज है मेरे, पुश कर रहे मेरे पे। 1 HP है, जेट 1 HP, मतलब फाइट पीछे आ जा। आ गया मैं चल चिल कर। वो बैक संभाल के जाओ। ड्रॉप क्या करना तेरा वाल्कन? कुछ देख नहीं रहा। मार्केट से अंदर आ सकते, तुम केयर कर लो भाई। मार्केट से अंदर आ सकते, टाइमिंग हो सकता है। हां मैं देख रहा हूं। ए ऊपर जा पीछे ऊपर टावर से खेलना है। देखो बोल रहा हूं, रेज टावर से खेल। बोलना, नाम लेना। चिल बहन चोद पता था मैं। 52 रेज रेज 50 आराम से खेलो, चलो आराम। ठीक है आ रहे के अंदर नॉट क्या बंदे हैं इन पे 2 या 3 है। 3 है एटलीस्ट में इन पे। ए में है 3 है। एक ड्रॉप, अरे ड्रॉप है 3 बंदा, 2 इधर एक इधर। अंदर आ रहे तो बता, मैं रोटेट करता हूं ना, मैं बैठा। एक ड्रॉप से अभी नहीं आ रहे लोग, फेंक दिया आई गेस। ऑयल लिया वो, या गोइंग बैक। यप गेको ऑयल लिया। लेकिन अभी कोई पीक लेगा तो राइट बचेगा मेरा। कोई नहीं अभी। मेरा कोई आर्केड देख सकता है? एमजे जेनिस आर्केड देख सकता है? छोड़ 30 लेने seconds मोमेंट। left. रेज आ गया। आई हैव 1 फ्लैश। ये बी रोटेट लो, बी रोटेट बहुत बढ़िया। होल्ड कर एमजे, होल्ड कर बढ़िया। नाइस मेन पे नाइस। आर्केड देखो, आर्केड don't pick him. He doesn't have time. गाइस रेस 50 है। नो टाइम, मैं पहले टाइम बाय करूं फिर खेलूंगा। रेज 1 HP दोनों नो टाइम। दोनों उधर ही है। रेस 50। नाइस। 1 बुलेट 50 है गोली। मैंने बचा दिया। नाइस वन। फेंजी लेना, मैं वो लूं। हां फेंजी ले केक, मुझे वो नाइस चाहिए। नाइस वन। दोस्त मार्शल के साथ Everyone दे। note down your observations, then let's run it again. ब्रो मेरे को ये चीज नहीं बताता, इसलिए मेरे को एक बात बता। गेको अगर अपना वो विंगमैन फेंकता है और मैंने बीच में तोड़ दिया तो स्पाइक डाउन, उसके पास स्पाइक गिर जाएगा वहीं पे। स्पाइक डाउन वो जहां तक पहुंचेगा गिर जाएगा स्पाइक। गिर जाएगा जहां पे थोड़ा। अबे रेज जा रहा हूं। If it goes to him, that character would be broken as fuck, bro. वही तो, वो तो सही बात। People could just throw their wingman, they'll break it and they fake so easily. वही तो। छू Yeah, I fuck my knife, boys, sorry. ये क्लोज टर्न करेगा मैं। टर्न दे वो। अबे बता तो नहीं आगे। Easy boys, don't. सॉरी Gotcha. सॉरी। एक One है arcade. वन ही Stand in. नहीं, not in. Stim beacon here. ब्रिम आर्केड। One enemy नाइस। remaining. लास्ट डोर। आर्केड। नहीं हो मेन। तो स्टिम भी किसने डाला था? अबे अपने ने डाला है, यहाँ पे डाला है भाई। वो ये इधर तक आवाज कैसे? सॉरी मेरा ध्यान नहीं था। बॉल दे पे स्टन होल्ड करके बैठा हूं भाई। और लकीली वो शील्ड नहीं थी उस पे, मैंने वन टैप दे दिया उसको एक। हां क्या? अगर तो मैं बंदे ने यहाँ पे स्टिम बीकन डाला तो मुझे यहाँ क्यों आवाज आ रही है? तो तू गधा है। अपने किसके हेडफोन, तूने हेडफोन का। हाँ एमजे का माइक लीक होता है, इन गेम म्यूट कर उसको। बट इन गेम में उसका ऑलरेडी बंद है। नहीं उसको चलो। पता नहीं एमजे का तब पे लीक होता है। तो मैं बोलूंगा ठीक है। हां स्टन रेडी है मेरा। डाल रेज है नहीं। और दो 3 तो है। सुनना थोड़ा सा लेफ्ट होके डाल, एकदम पीछे में। मैं रोटेट कर एक साइड आ चुका है। ठीक है ये लोग चढ़ेंगे तेरे पे। बे जल्दी जाओ। वेट एक मेन। नाइस वन। I will stop using phantom. I'm not gonna use phantom anymore. Fuck phantom, bro. वेल डांस कर रहा है भाई आई गॉट 3 भाई, अब क्या करूं मैं। ये 35 62.
वेलकम गांडू भाई मेरे जाके बैठ गया। सैचल नहीं का देखा मतलब नहीं है, जैसे मरा ना वो एक्सप्लेनेबल नहीं था ये। साला अबे सैचल पे बैठ गया जाके। क्वांटम तूने सॉरी क्लोज देखा मैंने उससे 130 का डैमेज खाया 80 बूमबॉट 50 चल गोली नहीं मारी वेलकम उससे बाय समथिंग वेलकम लोरे लाइक बैठा है वो उसके सैचल में जाके। ध्यान नहीं दिया कि उसका सैचल है प्लेयर फाइट के chaos में नहीं होता है सुन ना फाइट के chaos में नहीं होता है प्लेयर थोड़ा बुलडॉग सा यहाँ साइड कर। हां कर देख लेफ्ट आ गया मैं देख लेफ्ट आ गया मैं हाँ भाई कह रहा हूँ क्योंकि वो अपने आप आगे निकल जाता है साला। देखो क्या आ गया कर कर दियो 5 अरे अल्टे मेरे पे करना है क्या तुम लोग पुश करोगे कुछ बकचोदी मत करो। कर आ जाओ इसकी मां का आई कैन फ्लैश Spike down B. One enemy remaining. एक और है लास्ट। लेट्स गो बेबी बोला ना इजी ट्रेड ब्रो क्या बचा है तेरे को मैंने क्वांटम क्या बताऊं भाई एक को मारो कोई गन ही नहीं दिया कर रहा था लॉल। ले शॉकाई कॉल कैसी थी Can I get a drop? बढ़िया भाई मैंने 147 दिया कौन मारा साइफाई को आए थे ना एमजी एक तो मैं ट्रिप पे अटक गया पता मैं ट्रिप पे अटक गया आगे नहीं जा पाया उसको मारने के लिए अबे जेट बहुत ईगो पिक कर रहा है बे। रुक जा इस बार बिना नेट के जाता हूं। इस बार बिना कुछ बोले स्टन दे दे तो बेटर रहेगा यार वो बहुत लेट हो जाता है तिल्ले के है ना दोनों कर रुक डैडी की नेट फेंको सीधा डब्ल्यू कर ठीक है चल। नहीं है चल पूरा क्लियर है मैं और प्लेयर तू ले तू अल्टे ते जा आ गया जेट ने कहीं और लिया है वेट किया ड्रॉप मारना उसको नहीं क्लोज नहीं है लेफ्ट साइड आएगा। इको है उनका मरना मत। मैं पीछे निकल रहा पे इको है ना दूर से नहीं मार पाएगा ना अबे अबे तेरे पे तो मैं नेड से लो हो गया ना भाई अच्छा लो ठीक है 60 को हूं मैं एक हेडशॉट लग गया उसका आरएनजी में मैं मर जाऊंगा ड्रॉप मॉलिड एंड स्मोक्ड है गाइस। एक नहीं आया सुन नहीं, मेन नहीं, देख नहीं, मैं अंडा नहीं, खेलता नहीं, हां मैं डिश के नीचे देखता हूं तू मेन देख जा जा मेन देख जा तो कौन सा मारता एक आर्केड डबल हेड एक बोर्ड सीवर से गया इसलिए तेरे को बोला था साथ में आराम से एक जाओ ना उसके पास आओ भाई तो भाई देखा तू क्या दिया वो हां देखा if you give a thrifty bro bro what I do he died 30 seconds left. पीछे भगा रहा है उसको पीछे वापस वापस लेने के लिए उठाएगा वो यहां से नाइस करने आया वो जेट पे अल्ट Jet sand हो सकता है। एज अ गन इज वेल मेन तो स्मोक दे दे मेन स्मोक कर प्लीज सैंड कर मेन और डोर स्मोक कर दे छोड़ अब तेरे को यूटिलिटी नहीं है गन फाइट सीधा सीएसगो में गन फाइट साथ में देखा उधर देखा था एक को बैठ ब्रो माय बैड व्हाट अ रैट ब्रो व्हाट अ फकिंग रैट ब्रो मेरे को 2 हेड एक बॉडी दिया कुछ भी नहीं टप खत्म शूटिल नहीं था क्या गन नहीं ऑन पे किस पे जज स्मोक डाउन नहीं कुछ भी नहीं था किसको चाहिए एक ए डोंट उनका एक बंदा AFK है लॉल ब्रो नो स्मोक्स नो स्मोक आई क्लोज का कुछ एमजी कुछ क्लोज कर नहीं है ड्रॉप किसी पे कुछ है नहीं मेरे पास पैसा यार खरीदने के लिए। हां सिंगर खेल ना सिंगर इज गुड चलेगा। ए नेट डाल आएगा वो मैं इधर स्मोक चाहिए तुम लोगों को इस बार ओके वो नॉइस कट करे तुम्हारी बात चोती है भाई मत होने दो ऐसा ने डाला नहीं स्टन एक है नहीं साइड ओके बोला था मैंने नहीं 3 बंदे शायद 2 बंदे इधर होंगे ए पास पीछे कर मुझे टावर दे हट मुझे टावर दे मैं खेलता हूं मैं मत देखता हूं पैनिक करो भाई सुनो मुझे उनको घुसने दे मैं देख रहा हट जा हां मार्केट क्लियर आई कैन स्टन मेन फॉर यू मेन कर दिया स्टन लॉन्ग मेन से नहीं आ पाएंगे होल्ड आई गॉट मेन से नहीं आ डिश पाएंगे। मैं डिश देख रहा भाई ये क्या चूतिया सा चल इसका अरे 41 टावर रेस टावर साइड इन जेट भी साइड इन रुक जा अल्ट मेरे पे रुक जा होल्ड कर यूट्यूब चैनल वेलकम अभी कहां देखना Spike नाइस planted. नाइस ट्रेड रेस टावर था नाइस वेंट डाउन वेट कर रिलोड है यार कर ले रिलोड रुक जा रेस हाँ, पे रुक। बैठे गाइस आई न्यू इट। One enemy Nice. remaining. नाइस वन 1v2 आराम से साथ में वेयर इज क्या है उसका मैं Last player standing.
Guys, quantum. मारना If he is pushing, you are supposed to वहाँ पे तू turret और alarm bot नहीं खोल सकता. 1v2 है, साथ में खेलना है. अंडरस्टैंड द कोड कॉल ब्रो। कोई बोल रहा है। एक महीने बाद वाले बंदे ना बजे. कोई बात नहीं हल्का। एक महीना दो छोटा हल्का इतना बोल अभी खेलूंगा नहीं सर खेलूंगा ठीक है। फिर भी क्या बोलूं। पिछला मैच मैं ड्यूलिस्ट लेके आया हूं मैं, ठीक है, मुझे कोई मानने नहीं देता ड्यूलिस्ट. आई लाइक द कॉन्फिडेंस क्लियर. अबे क्या कॉन्फिडेंस इसमें भाई। भाई देख ले, ये तो गलत है. कैम डाला है साइड पे इधर. दो है वहां पे. दो मारना. नाइस. मत थ्रो करो भाई, वो डैश कर गया मत यार. थ्रो करो बेंचो. 36 जेट 36. तीनों भाई क्या मजाक है भाई. इको में अल्ट इन्वेस्ट कर रहे हैं मैं भाई. क्यों अल्ट कर रहा हूं? 80 गेको 40 जेट 40 जेट मैंने भी दिया. 60 साइफर. Spike planted. Last player standing. क्या थ्रो कर रहे हो मेन पे बेंचो पुश कर करके चूतिया जैसे. खेलना नहीं आता क्या गाइस? अल्ट क्यों किया तू? बेंचो बार वही एक चीज करके मर रहे हो भाई वहीं पे जाके. राउंड से तो यही लोग कर रहे हैं भाई. चूतिया साइड होल्ड कर लो ना बेंचो. बड़ा मुश्किल है क्या? लड़ा फिर डिसिप्लिन की बात करने आते हैं तुम सबको. हर राउंड तो यहाँ से खेल रहा हूँ. मार्शल है तो एक राउंड गया हूँ मैं. हर राउंड पीछे खेला हूँ मैं. और तू क्या अल्ट कर रहा है इको पे? दूसरों पे बोल रहा है क्या? अरे यार मैंने क्या बोला है? मैंने क्या बोला है? दूसरों को बोला ही नहीं है. इधर डिशा गजब आदमी है यार, बिना बात के मेरे को ब्लेम कर रहा है ये. अरे अलार्म लगा दे यार. स्टन रेडी है मैं यार, पीक लेना. ठीक. बोलूंगा मैं तब पीक लेना. और वो पीक ले गया तो आ गया उनका प्रेम. ले कोई नहीं. पहले अल्ट टॉप. ए मैन है. चार उधर हैं, एक रह सकता है इधर. भाई अब 2 लोग डिश पुश कर रहे हैं. छोड़ रहा मैं तेरे को. होल्ड कर रहे हैं, पीछे आ रहे हैं. यहीं पे होल्ड कर. वेलकम होल्ड कर. इनको घुसना है, साइड दे दे इनको. सैंडविच कर तुमको. सैंड्स आया. ये अंदर जा. सिटी जा प्लीज. सिटी पुश ना कर दे वो लोग. वो देख यहाँ से खेलना भाई. पता है यार, रुक जा. उधर से भी देख ही रहा था मैं. होल्ड कर लो. खेलो ऐसे ही एंगल्स खेलो. मरो. कहाँ से मारा तेरे को? आके मारा रे. 148 जेट. हाँ हट गया मैं. कहाँ कैसे बोल रहा हूँ साइड खेलने. 2 बंदों को डिश खेलना है फालतू. क्या कर रहे हैं पता नहीं भाई. वो यहाँ कैसे मारेगा मुझे नहीं पता. Spike planted. वेम लो. नाइस. अवेलेबल. Player एंटी. standing. एक डिश. और टी टैग है. One down. जेट 148. नाइस. Remaining. ए यहाँ पे 39 स्टैंड. नहीं यार, देखो कहाँ से मारा वो. कहाँ से मारा तेरे अरे वो इधर से निकल के मारा. ये वाला एंगल. तेरे को उसके साथ ही एंगल देखना जिस तरीके से मेन की देखा. अबे ये होल्ड क्या मेन देख. अरे बाबा तुम ऐसे एंगल्स खेल क्यों रहे हो जहाँ चोक हो रहे हो बार बार. चल अभी कोई नहीं एक साथ. मेन चोक हो रहे हो, डिश चोक हो रहे हो. साइड खेलो ना बेंचो. इको कर लो. मेन तो उनको मैंने रोक दिया था. इतने बार मार के जा रहे हैं वो लोग. ब्रिम के स्मोक से वो दे रहा स्मोक. ये बताओ फुल बाइक इको. हाँ 9-11 चल रहा है. मैं तो केजे का आल्ट है. दे दो ना साइड. वहीं पे फाइट करके सबको मरना है भाई. ये पे आवाज है. छोड़ देना है. हिडन किल. यहाँ चिपक के ऊपर देख डिश. हाँ चाहिए ड्रॉप स्मोक. तेरा एक क्रॉसिंग देख रहा हूँ. नहीं ड्रॉप स्मोक चाहिए. नहीं चाहिए. रोटेट करो कौन. सुन मेरा ड्रॉप से बचाइए बस. स्मोक लगा के रखा हूँ. कूदेगा तो मैं ले सकता हूँ पिक. हां ठीक है. टर्न किया मैंने. चिल कर. साइड कूदेगा तो दोनों साइड से फायर दूंगा. वेलकम. बी घुस गया उधर. Spike planted. ना ब्रो, वी केम आउट ऑफ स्मोक. रुक जा मैं नेट कर रहा. चलो जाओ पीछे की. 103 साइफर. अबे क्या ही.
वो मॉली पुश किया अपना देखो का मॉली 30 जेट 90 रेज। सुनो अपनी पोजीशन चेंज करो। बॉल उनको सबकी पोजी चेंज कर। 4 राउंड पहले मैं बोल चुका था कि केजे को एक खिला लो, ब्रीच को भी खिला लो, ब्रीच को रिटेक पे ले लो। भाई 3 लोग है उस केजा कर बी पे, इसलिए 3 लोग ए पे है। नहीं जरूरत है ना, ए पे 2 लोग को रखो, पीछे रखो, हम लोग रोटेट करेंगे, पीछे से आएंगे ड्रॉप से लेकर। भाई बट उसकी बात स्लेयर की बात तो सही है। वही लाइक तो दिक्कत नहीं है वैसा कुछ। मैं सेफ भाई वही चीज हो जाएगी यहाँ पे 3 है तो भाई हमारे तक आती तो कब का होल्ड करके रोक सकते हो तुम भी। ठीक है, स्लेयर और रेस का अल्टी है, इजी है, ठीक है। क्वांटम का सही एक राउंड एक तरफ उधर खेल लो और एक तरफ मतलब फुल होल्ड खेल ले 3 बंदे। मैं मेन का वॉकिंग देखा खेल रहे उधर। ये हिडन खेल प्ले। हां मैं हिडन हूं, मैं फुल हिडन। गेट को लग गया। आई कैन स्टन, तेरे को चाहिए क्या प्लेयर को स्टन? नहीं मत कर। ए मेन गेको मॉली डाला तो मॉली मैं स्टन देता उसको। स्टन है वो स्टन नाइस। डेड। एक गेट खुला। हां लेट हिम। वहां पे ध्यान सेंसन चलेगा बस। मार्केट क्लियर फॉर नाउ। हिट हां बस आ जाओ। ब्रिम गया उधर चल। ब्रिम कार्ड क्या है के जल्ट कर सकते हो अभी। अरे एक और है इधर, 2 लोग हैं यार। के जल्ट कर जा। होल्ड कर। एक अंडर वेलकम नीचे, वेलकम तेरे नीचे भी है। नहीं वो भाग गया, डोर खोल के भाग गया वो। होल्ड कर रहा हूं। के जल्ट होल्ड दिस। यहां स्पैम है यार। स्मोक में मारो मैं। मेरे पे होल्ड करो। घुस अभी घुस। केओस में लो मेन जा। कोने में जो बैठा है ना वहां पे मार। नाइस। करो। एक बैठो। तो एक कोई बैठना पड़ेगा। दे कांट क्रॉस। Enemy remaining. ठीक है चिल कर। अननोन दे ड्रॉप। ही डजंट नो। फुल कर। ही डजंट नो। हो गया राउंड। मार। बैड राउंड। गुड वन। प्ले अबे अगर तू क्रॉस कर चुका है तो तू करना। दे कांट क्रॉस ऑलवेज सेफली। मैं नेट गया, मेरे को लगा इस साइड की तरफ है। शुक्र बाय। प्ले हाफ शील्ड खेल सकते हो। नेवर माइंड। हाफ शील्ड पे भी कुछ नहीं आ रहा ब्रो। आई कैन बाय यू बुलडॉग इफ यू वांट। No, But you can afford that yourself. सुन ना वेलकम। हां बुलडॉग पे खेल ले। मैंने फुल गाड़ी शील्ड अरे नहीं किसी और को चाहिए बुलडॉग तो मैं दे सकता। क्वांटम अगर तुझे चाहिए तो दे सकता। ऑलरेडी हाफ शील्ड खेलेगा बुलडॉग देने के लिए। डजंट मैटर। आई हैव अल्ट गाइस। साला फिर मेरे को नहीं। इजी वी प्ले फिर से ए पे नाइफ छोड़ दी। ठीक है ना। ठीक है चिल खेल। ए हिडन किट आ गए भाई। 38 वो एग्रेसिव हिडन हूं मैं। इजी आजा ऑन द साइड। लेकर रख। ये यहाँ पे देख। वो वाइड आया बहुत। टाइटन क्या कर रहा है? इसकी गन का है। Spike मेन लेते हैं ना स्लेयर। कैन वी गो मेन? ओए क्लोज अट लेते तेरे वो अंडर खड़ा, एक ड्रॉप खड़ा है। player आवाज आई। हां लेट आई, मैं कूद गया था। Attackers win. एकदम चूते जैसा खेले हो गाइस। मत करो 5 स्ट्राइक ब्रो, नहीं है अपने बस का। एक्चुअली में जरूरी नहीं था वो जो 2 लोग ए पे बार-बार इधर-उधर गेम खेल रहे दूसरों के साथ। थोड़ा सा कॉम्प इधर-उधर करके जीत सकते थे। मत खेलो भाई 5 स्ट्राइक मत खेलो, छोड़ दो, भूल जाओ 5 स्ट्राइक। भाई मैं तो नहीं लगा तो माइनस लगेगा। पता नहीं तो भी भाई मैं बोल रहा हूं सीधा स्लेयर क्लियर क्या? आए कुछ उठा के कुछ बोल रहा था। या तो ट्राई करेंगे तो लाइक अपन 3 करेंगे। नहीं मैं भाई बस भूल जाओ 5 स्ट्राइक। तो मेरे से तो उम्मीद ही मत रखना 5 स्ट्राइक। मैं चलता हां क्लोरो कहां पे? क्लोरो खेल रहा है क्या? अबे क्लोरो इसको ही कन्वर्ट करूं क्या स्ट्रीम पे या नहीं स्ट्रीम करूं? अरे टाइटल चेंज करना सीधा। वही टाइटल थंबनेल चेंज करूं कि देखो कितना टाइम लगेगा वेलकम। थोड़ा टाइम तो लगेगा। एक लो हेलो वो है क्या? पिंगो है क्या? नहीं खेल शौका खेल रहा क्या? हां मैं तो हूं। आजा क्लोरो, मैं तेरे से वही पूछ रहा था। शौका क्लोरो इसको ही मैं स्ट्रीम और टाइटल कन्वर्ट कर दूं? कर दे यार। यार खेल तो मैं भी रहा हूँ यार, पर फिर फाइट मैंने हो गया। नहीं खेलना पाया, मैंने तो खेलना ही स्लेव नहीं। ब्रेक ले ले भाई।
Bro, I am feeling fine. I don't feel like I need a break. I just saw that and I got triggered, bro. Like honestly. अरे नहीं वैल्कन पता है वो सब भी सही है, कोई भी पोजीशन खेला ना उसका दिक्कत नहीं था उधर भी। पता नहीं मेरे को समझ नहीं आया तू मेन देखने क्यों लगा, जब ब्रिमस्टोन है देख रहा है ब्रिमस्टोन स्मोक दे रहा है मेन पे, तो तेरे को उसके साथ ही खेलना है ना। एनीवेज तो नहीं भाई भाई बंदे का कॉल था जो मेरे साथ है। हाँ बट वो तो शौकाई को तो शौकाई तो समझ लेना 2 महीने बाद आ रहे तो तू क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, जॉर्ड कॉल होगा शौकाई का नोड़े का। अरे कॉल वाली बात नहीं है यार, उधर हेड मिस हुआ मेरा, और क्या करूं मैं। पता नहीं भाई शौका है उसके मुंह से इतना पैनिक क्रिएट कर देता है कि हम क्या कर रहे हैं वैसे। वो तो अपने आप को वन मैन आर्मी समझते रही, तो जानते हैं ना शौकाई अगर चल गया तो फिर बाकी सबको नहीं चलना पड़ेगा, लेकिन अगर शौकाई नहीं चला तो पूरा टीम को मारना पड़ेगा। तो भाई अभी तो उसका समय है, नया नया ना भाई वेलकम, उसका कैसे एक्सपेक्टेशन है नया नया ऐसे बोल रहा, पहली बार खेलने आ रहा। शौकाई रोहित शर्मा है। रोहित शर्मा बुला दिया भाई, सीधा रोहित शर्मा ही बुला दिया। 2 मिनट आया मैं। डेथ मैच लगाना एक। हेलो हेलो एक सेकंड, आई वाज एफके।
हेलो हेलो या आई वाज एएफके फॉर बट पीछे बेड का था। टीडीएम में ना भाई, फिर तो टीडीएम में उसके बेसिस पे आने लग गया तो खत्म है वहीं पे। हेलो हेलो अबे टीडीएम खेल रहे थे तो मैं खेल सकता था, वो तो खेल ही हूँ मैं। तू मत खेल, तू मत खेल। ए ईद के चांद, ईद के चांद, ओ ईद के चांद, चुप। ईद के चांद, वो होता ना, चांद दिखेगा, चांद दिखेगा फिर चांद गायब हो जाता है, वो है तू। हेलो you did me. आह फू। तेरी माँ का भाई मैं नानू डरा वीसीटी दिया करूंगा भाई। यार पूरा भाई, माउस डरा पैड दिया गीला हो यार। गया है यार बारिश की वजह से। भाई बारिश की वजह से बस झोपड़े में खेल रहे हैं। माँ डो, मैं कहता हूँ वन बाई सेवन चेक करा, नहीं गेम लेंगे। कौन सा ले रहे पेन स्टेबल? हेलो हेलो भाई अरे वेलकम यार अच्छा मत नहीं था। क्या हुआ, क्या बात हो गई भाई? नहीं था। यार स्ट्रीम से पहले वो हटा। भाई रुक जाएगा। चलो सुनने लायक नहीं। लगा बोल 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 बोल, क्या हुआ बोल। अबे बाय द वे बाय द वे पिंगू क्लो, ट्राई कर लो। मैं नहीं खेल रहा, मैं अभी नहीं खेल रहा मैं। हाँ देखो बोल कौन रहा है, बोल ना, बोलो बोलो बोलो, बोलो बोलो। तेरे से बात कौन कर रहा था पहली बार, तुझसे बात कौन कर रहा है? हाँ मांग और भी मांग 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 मांग। स्ट्रीम आई गेस म्यूटेड है, वो तो हमेशा देता है, हर एक देता है। डेस्कटॉप पे म्यूट है, इसलिए मैं नाम दिया। शुतोष भाई दिस इज वैलोरेंट।
एक क्लोज रही आवाज इतनी कम क्यों हो रही? ओए समझ नहीं आया क्या बोल रहा, ढंग से बोल, अब बोल। हम्म। वो अनपढ़ इंसान है ना, उसको कुछ नहीं पता। आवाज का अरे कुछ बातें चल रही है कॉन्ट्रोवर्शियल यार। नहीं, मैं यूट्यूब पे न्यू नहीं हूँ। क्या? बेसिकली उसे उसे पता है ये टीम बहुत बेकार है, मैं इनके साथ नहीं खेल रहा। वो तो है ही। अबे क्लोज, बाय द वे, इमॉर्टल टच करना पड़ेगा रजिस्टर करने से पहले। अबे ये प्रीमियर चालू होने से पहले। अबे क्लो, क्योंकि उसके हिसाब से अपने को वो मिलेगा पिछली बार जैसे। अगर इमॉर्टल नहीं हुए तो टॉप वाला नहीं मिलेगा, मतलब पांचों के पांचों प्रीमियर। तुम लोग बना लो ना फिर आपस में। ओहो, दैट्स अ बुली, दैट्स अ वायोलेशन। रुक, मैं भी आया फिर, मैं खत्म होने वाला। आए आया ना। आई गेट अ वन मोर ना। क्वांटम आजा। ए कॉम्पी, ओ कॉम्पी जाए हो। अरे पिंगू आया था ना, इसके साथ क्यों खेल रहे हो? आयुब जाना, मुझे तो बोला। अरे वो कस्टम का खेलते ना। अरे तो पिंगू, भाई पिंगू तो आ जाएगा ना तब तक। पिंगू का वेट करना ही है ना। तो तो पिंगू के बिना खेल रहा है तू, बोल रहा है? तुम्हारे पास बंदा भी तो नहीं है ना पिंगू, लो। कौन है उसका एक्स टीममेट रे? अनिल? क्वांटम के टीममेट को बुलाया था?
हगास हगास। मैं 3 बजे क्यों है भाई तुम्हारी? क्या बता भाई? जस्ट सेइंग, स्ट्रीम पे रिकॉर्ड हो रहा है, वो स्ट्रीम पे है, जस्ट सेइंग। तू ना भाई, तू तो इसको पहले लौड़े को पिक करो, बाकी पीछे पिक करो। तो ना कंटेंट की भूख ही अलग है। That's how it should be. नो हेलो भाई, नील खेल रहा है। देख बहुत गंदी लाइन आएगी, समझा ना, बकचोदी मत कर वेलकम। भाई नील हेलो। ए भाई इसके साथ क्या चीजी हो गए तुम लोग? किसके साथ खेल रहे हो? सुनेगा, वो बहुत अच्छा खेलता है, उस दिन उसका दिन खराब था, ठीक है? ट्रिगर, मैं ट्रिगर के साथ अबे कॉम्प भी खेल रहे थे। मुझे लगा कस्टम डीएम खेलोगे यार तुम लोग। सॉरी बोल देता हूँ। अबे स्लीप में ऐडेड है, कौन है ये? ये काम करना, तो इसको क्वांटम ये भी कंटेंट में दिखा देना, ठीक है? नहीं शौकाई पे भी ऐडेड है, तेरे में भी ऐडेड है। वर्ल्ड इज सो कौन है, कौन ये? क्यों है ये? है कौन भाई? तेरे को क्या दिक्कत? तेरे को पूरा भाई मेरी फ्रेंड लिस्ट में क्यों है? मेरा मीनिंग वो है। हटा देना भाई, हटा दे, नहीं अच्छा लग रहा तो। हर चीज से प्रॉब्लम है भाई वेलकम को, हर चीज भाई। एक चीज नहीं छोड़ता भाई वो, एक चीज नहीं छोड़ता वो। पूरा बगल वाली आंटी नहीं होती जैसे खबर रखती है, वैसा इसका हाल है भाई। 10 to 10 मल्टीप्लाई बाय मैंने क्या किया? क्या हेलो? ये क्या चल दिया? हेलो कोई तो हंसते हंसते गायब हो गया। किसकी हंसी थी वो? हंसते हंसते गायब हो गया। वेलकम साले। साले मेरे को क्यों लग रहा है कि कोई सीएसके डिस्कॉर्ड से की कौन है? वेलकम हरामजादे। डिस्कॉर्ड से तो मैं बताता हूं ना, वेलकम रुको ना। अभी तो वापस जब आ गया हूं ना, तो सब वहीं बैठने लगे। सोचना क्लोरो एक दिन उठेगा, ठीक है, डिस्कॉर्ड खोलेगा, व्हाट्सएप खोलेगा। सुनना शौकाई, नॉट एवरीबॉडी इज यू। नॉट एवरीबॉडी इज यू। ऐसे बोल रहा है यार। अरे मैं भी बोल रहा हूं, नॉट एवरीबॉडी इज यू। मैच फाउंड। भाई एमजे तू तो मतलब नील तो एक बार श्योर हो भी सकता है, तू कैसे इतना श्योर है? क्या रिस्क ले रहा है फट से? अरे यार तुम लोग के साथ मैंने कभी खेला नहीं ना एजेंट। वही भाई इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं मत खेल। नहीं खेल रहा मैं, तो रखने वैसे ही रखा हुआ कवर कर रहा हूं भाई। एजेंट सिलेक्ट में ही गांड फाड़ देते हैं। अरे भाई एमजी एक तेरे को और खेलना तो खेल, मैं स्मोक्स खेल लूंगा। अरे फिर मैं जाऊंगा यार, एक सेकंड रुक जाओ। डिलीट तो शॉकर डिलीट जाना, शॉकर डिलीट मैं सो जाता जा। हां ठीक है। मैं भी मैं क्या बोलता सर, तू इनिशिएटर चल जा, क्लो चल जा, फ्लैश नहीं इसलिए अपने पे, मैं चले जाता स्मोकर। यस स्लेयर केओ बेस्ट किल। मैं जाता एमजे भाई, लेना केजे लेना भाई तू। मुझे भी सोवा खेलना है। कोई बात नहीं एमजे, जीतना ज्यादा जरूरी है कि सोवा खेलना। अरे बाबा फेड ले लेता मैं, क्योंकि लाइक फिर सोवा नहीं है। अबे नहीं रेसलर, बट फ्लैश अपने पे है ही नहीं। लेकिन लोग ले हो फिर तुम लोग। अरे आइजल आप बस आप ही का कमी तो आ जाएगी आज। तेरा बंदा क्या लिया? 5वां बंदा। बैक साइड कमेंट्री देना, पेलू मत रे वेलकम, चुप रहना। एक Who you? कैसे पता हम लोग क्या कॉम्प ले रहे हैं? बोली तो है तुम लोग। ले वेलकम यार, अब तो मैं किसी भी सर्वर 1440p पे स्ट्रीम कर सकता हूं। नाइट्रो है ना भाई तेरे पास वो होगा नाइट्रो। भाई मेरे को 1080p ही लगा था। उनके पास तो कुछ है ही नहीं भाई एंट्री रोकने के लिए सिवाय डेडलॉक के। लेकिन अभी भी देखना आके पेल देंगे हमको ऐसे। ओ यही तो सोचूं मैं, जेट है उनके पास कुछ नहीं है, गधे हैं वो लोग। बहुत मैं वही सोच रहा हूं, तुम पे फ्लैशर भी नहीं है, तुम पे सोवा भी नहीं है, फेड भी नहीं है क्या तुम लोग पे? 5वां बंदा अंधा है क्या तू? अरे कब कॉम ले रहे तुम लोग? हैशटैग अंधा क्या होता है भाई? तो नया चीज है क्या लवले? It always feels like Rayna is
छोड़ो तुम लोग भाई कर क्या गालियां मारना भाई बैठ के प्लेयर बाय हेलो नील आज के दिन लोड होगा गाइस Barrier deployed. Can't use that. Listening. Sensor tripped. बेचारा Reloading. बोलो माँ हाँ ये चाहिए मेरे को Sound sensor up. New stage in Faster. stage 2. Reload. इश हगासे Ultimate ready. Charge your ults. Pull them to their grave. Reeling them in. 3 down. 4 down. Hostile down. इश Stage 3. One down. Right there. आओ ना Satchel out. Satchel out. Blocking movement. Problem solved. 3 down. क्या लग 4 down. Sound sensor up. Ultimate ready. Pull them to their grave. Nothing there. No surprise. कूद गया नीचे तो वो हुआ नहीं My territory. My rules. Still in sight. 10 seconds until stage change. Can't use that. One less. Reloading. Get out of my way. Final stage. Throwing net.
ये लेके गए Kill confirmed. Sound sensor up. Ouch. Can't use that. Satchel up. Blocking movement. Sensor tripped. हगा से Your boss is my ultimate. हुला हुला हो No escape. Listening. Dropped. Reloading. Get out of my way. Reloading. Remaining. तो 20 दिया मैं ग्रेजुएट क्या नहीं अल्ट तलाश क्या No escape. अबे क्या लिख दिया मैं जल्दबाजी में
Hello. 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 May I watch किस party चीज है? की VCT किस चीज की Ascension. क्या? Ascension. आज किसकी है? आज VCT किसकी है? Ascension semi-final Boom versus वो है. Boom versus कोई तो है. क्या? B से ही होती है. भूल गया मैं उसका नाम. अच्छा ठीक है. उसका watch party है. हाँ. ठीक है. Itu betul guys. Ini oke dekat. क्या रह गया? ये तो बंद कर देते हैं.
वापस एम ना लो बोलना। डीएम आया देखा गैंगस्टर का स्काई में कस्ट हुई है। गैंगस्टर डीएम है क्या? हाँ देखो स्काई रेडिएंट दिखा रहा है। रेडिएंट है। हाँ 10 PM SGT 1 मैप ठीक है खेलते हैं। 7:30 लिखा है भाई 10 का लिखा है। अरे उनका तो नाइस 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 और दो नाइस पीछ नाइस रे रुक जा रुक जा महीने गन चाहिए साले रुक जा मत मार मर जा रिवील दिया है। करने तो इनको ग्रुप पे मैसेज कर दूं मैं। हाँ कर दे। कर दूं ना ठीक है। फ्लोरो तो नाइस रे हरामी नील है नाइस क्या रे। बता। स्लेर गन ले है। अच्छा तू है फक हरामी है। अल्ट है सॉरी कैसे आ सॉरी गया? मेरे को लगा इस पे गन नहीं है माय गाइस बैड। केजल्ड हमने बस डिस्प्ले रीटेक खोम मैंने कैसे आ गया तो कल खोम तो मैच देख रहा था पिंगू हाँ देखिए हो 7:30 बजे अभी मैच है वही मैसेज करना है। अरे भाई मैं टीम प्रैक्टिस ही 7 बजे रख दिया हूँ चिल है सब। बेस्ट खत्म फिर। भाई ओरंगुटन भी गैंगस्टर पे स्क्रिप्ट मांग रही है भाई। तो वहाँ वालों से मांगेंगे ना अपना एक्सेप्ट भी नहीं करेगी वो भाव भी नहीं देगी कोई बात नहीं। लेकिन नहीं ओरंगुटन जीसी लिखा है उसमें। चाहिए नहीं बोल चल मी को पपाई ये बच्चे को देखो अले याल बच्चे को देखो अले याल। आज क्या है सेमीफाइनल्स। पिछले उसका डाल देते हैं। अभी किसका मैच है बूम वर्सेस बहुत वाला सेक्शन पे और टीम का नाम दिखा देता ना आ गया वही बूम वर्सेस ब्रीड वही तो नाम भूल गया था।
फ्लिप होता है क्या? अबे तो ये हो गया। वो कैसे करोगे? चलो कोई नहीं। आवाज आ रही है? ओके, गाना कम कर देते हैं। एक सेकंड प्लीज, थोड़ा गाना म्यूट करो मैं, एक मिनट। कुछ सेटिंग्स देखो मैं, गिव मी अ सेकंड, डिस्प्ले कैप्चर ऑफ। लोगों को मैं डिस्प्ले कैप्चर क्यों करूँगा ना? You know what? Contains file. Okay, safe. थोड़े लोगों को मैसेज कर दो जो आने वाले थे वॉच पार्टी के टाइम। Hello, Asia, and welcome back to the Valorant Champions Tour Ascension Pacific 2023. We just finished our match 1 of today with Scars. Moving on to tomorrow's final games. We are still in the semi-finals, though. We're going to move on to match 2 with Boom. Twitch. Absolutely can take down Blade. Yeah, they were forcing a lot of errors out of Bonkers yesterday, especially on Haven. They looked really strong, really
collected. Everybody was kind of on the same page. So I think if that can carry over here into today, if they can have that same level of sort of confidence and success, absolutely they're going to give Bleed a run for their money and certainly can win this. These are two teams, a lot of history against each other throughout the history of the APAC, previously APAC, now the Pacific League. The last time in an official match, it was actually Boom who got the better of them. Now, a lot of those boys are on RRQ now, but it's still a very good team. And in third-party matches, Bleed has actually been getting the better of them recently. I mean, there's those 3 players from Boom that I'm sure the org would love to get revenge against on the side, because that official match, the first time that they ever faced off, was in the LCQ. That was Boom then moving on, getting to go to Istanbul to play in Champions in a Tier 1 tournament, denying Bleed access. So I think that this is definitely going to be a bit of a revenge match. Obviously, there's a lot of differences here on both sides, but I think the organization is going to be very hungry to shut Boom down for once and all. I think you're right. Now, Boom, having so much experience compared to the other Ascension teams, like you said, having been on the international stage with Champions, but Bleed has been, you know, one of the favorites to win out Ascension. Now, let's talk about the roster. You guys are mentioning a couple of them you have your eyes on. We're going to talk about Bleed for Scary. You know, we have a lot of Thai supporters here for Bleed because Scary, of course, is from Thailand, and he is standing. Yeah. With Zersheggs, I think he's the last one here to really root for the hometown crowd. And you can be damn certain that there's going to be plenty of people who are going to be cheering him on. But I mean, we're talking about Tier 1 experience. It's pretty much just Scary here for this squad as far as being on the biggest stage he could possibly be on, and he's done a very good job of catching up the rest of the team to be able to play at a similar level as himself. Yeah, he's a guy that a lot of Tier 1 teams are talking about wanting to potentially, you know, be a guy who can swap into their rosters. A lot of people are looking at Scary and saying, why aren't you on a, why aren't you on a Tier 1 team? Well, if he can now get through with Bleed, he certainly will be, and he's been really, really good. Nep as well, another huge pickup for Bleed coming into this year. So these guys are really, really a stacked roster. What's really fascinating to me about this team is how there's so many different roles that most of them play. Juicy's going to be your dedicated duelist, but behind that, you've got a lot of different things that they can do. Neff, Killjoy, Breach, Darion, Jet, Killjoy. I mean, it's all over the place sometimes behind it, but still they have a ton of success almost no matter the map. Yeah, I mean, historically, of course, the big one is that last chance qualifier matchup, but they have met each other many, many times, 4 times overall in different events, such as the India Invitational, the Penta Pro tournament as well. And consistently, it has been Bleed coming out on top, 3-1 the overall scoreline. Just that one time. That one time when it mattered the most, but now it matters even more. Exactly. Well, one thing's for sure is that Bleed definitely likes their contact plays. They love to go in heavy with the gunfire around like halfway through the game. They just suddenly pull out the guns, and they usually win them out. I don't know if that's going to work so much with Boom, but you know what? I think the best way is hear from the players themselves. I believe they're arriving now. Let's go over to Mac and see what they have to say. Thanks, Vic. Bleed have just turned up here at the arena for their semi-final game. It was Darion's birthday yesterday, so we're going to have a quick chat with him as well. Mate, look, come over here. Happy birthday, of course. Look, good luck today in your game. What did you do for your birthday? How'd you celebrate? I didn't really do much. I was just playing Valorant and grinding the game because today's my game. Yeah, and I love Valorant. A true professional. Look, I'll let you go. Good luck today. And that's it. Back to you guys on the desk. Well, could have treated himself to a nice skin pack or something like that for his birthday, you know? If you're going to play the game, might as well do it with a little bit of extra style. Yeah, I mean, might as well go all out on those skins there. All right, let's talk about Boom Esports from Indonesia. I know we have a lot of Indonesian fans here in the audience today as well. Look, they've got also a lot of experience on their team. I mean, how do you think this is going to be playing out for them? I mean, again, just given what we were able to see from them yesterday, they look so terrifying when everybody's firing on all cylinders, when they're all on the same page. They do look like world beaters. It looks like they can become unstoppable. I mean, the combination of like Famous as well as Berserks has just been absolutely fantastic to watch throughout this entire tournament. Yeah, I mean, look, what we saw yesterday looked great. They've been pretty good throughout the most of this tournament, but going up against Bleed, who, we saw Scars, they're getting into the finals. They beat Scars 2-1 last time, and the Pearl, was the one map they dropped. A lot of people consider that to be widely their best map, but it was still went to overtime. And
you know, yeah, Berserk's was nuts yesterday. I mean, Severine, that absolutely tremendous esports career he's had. Blaze King, Shiro doing a great job at times there on those initiators and things like that. So certainly it's all about the coordination. Who can be a little bit better today with those protocols, with those reactions, with that IGLing. You know, to me, this is absolutely a bit of a toss-up. I think this almost certainly goes to 3 maps. Just we're going to see how it all shakes out. Yeah, I'm willing to agree on that. 3 maps for sure. It's going to be a close one between these 2 teams. I mean, they're also experienced here. Berserk's just needs to continue, I think, from yesterday. I wanted to see him pop up. I mean, honestly, all of them. But if Berserk's can really show up again, that'll help. But they've been kind of inconsistent throughout this particular Ascension. They have had those ups and downs, but it's just about taking what you did yesterday and just applying that now to today. Yes, it is going to be a tougher opponent. You know, everybody loves Bonk, but they very much had their number yesterday. But if they can still have that kind of like hive-minded play where everybody is so much on the same page, then I think that they're still going to be in a very good spot to be able to challenge Bleed. Yeah, and I think they have pretty good reads on the maps. It seems like, you know, they're very much in tune with the meta even a little bit. We saw that on Pearl, whereas Bonk ran kind of a little bit of a different style, whereas, you know, you have that harbor utility and things like that on the Pearl, which I think gives them a little bit of a more of advantage too. So, you know, very much in kind of a groove in terms of what modern Valorant is currently. So certainly, you know, I'm looking at Boom and thinking, look, if you can ride that confidence you had yesterday, if you can continue that momentum, no doubt about it, they can win. Yeah. Well, with that, with the Boom players now arriving, we're going to go back to Mac and see what they have to say. Thanks, Vic. And we've just got Boom arriving in the backstage yet again. They're looking keen, they're looking excited, at least through the window. So we'll see if we can grab Severine and have a quick chat about what's changed from yesterday, because Boom were looking absolutely stellar. Where is he? It's always the back one that I want. It's always the one that gets out last, isn't it? Here he is. Big Severin. Come on over here. Have a quick chat with me, mate. Talk to me. Look, congratulations yesterday. You already knocked my boys out, so look, you need to be congratulated for that. But talk to me about what's changed, of course, today. It's going to be a much tougher affair on paper, right? No, we just play our game. That's it. We're just having fun there and just try to hope that we can shut them down. Okay. And good luck today. Thank you. No worries. See you later. And back to you guys on the desk. I mean, if you can just play your game, then that's a perfectly fine way to get a win. But Bleed is absolutely one of the teams that can stop you from being able to do the things that you want to do. So I think that, and I hope that they have a couple of things up their sleeves perhaps they can pull out if they need to. This is one of those situations, if both of them do their absolute best, do you favor one side or the other? If both teams are on points, or is it still a complete toss-up? Bleed's got a little bit more firepower in a little bit more coordination, I think, overall. I mean, what we saw yesterday with Boom was phenomenal, and no, not taking anything away from them, but Bleed is a team to beat coming into this tournament. Most teams were telling me that it was either Bleed, D+ or Scars, right? D+ couldn't get over the line. They were very up and down, but D+ is the team that actually managed to beat them somehow, some way in the midst of all of this to not get here. But I think absolutely this is Bleed's match to lose. You know, they should be the ones getting through. They should be the ones that everybody's eyeing to be one of those top teams that can make it into Pacific. I'll hide my prediction for till a little bit later when we have the graphic up. But, I did want to kind of highlight both of these guys who've been playing so much stuff. So Shiro and Crazy Guy, we've seen how much of an initiator meta this has been. Someone recently also double controller. You know, but initiator's always going to be important, and both of these guys have been putting up significant numbers. So while we did lose Fancy United, we still have some representation here with Crazy Guy. Yeah, exactly. And look, both of these players are really, really strong. You can see their stats not too far off of each other. Crazy Guy having a little bit higher ACS and things like that. But overall, like, Bleed is like so stacked top to bottom. That's what makes them so difficult to deal with, is they have so many cracked fraggers across the board that it's even maybe deeper than Scars. I think it is deeper than Scars, probably, with the way that they can play. So, and the Sovas are super important. If we get to those maps, we'll see. I don't know. But yesterday was Shiro, so impactful on that Sova, on Haven in particular. And we just saw it previously where, you know, Sova's in the Ascent, and I thought made a pretty big difference. We didn't get to talk about it too much in that previous matchup. But yeah, I mean, I'm really excited for this because they're both really good. Yeah. I totally agree. I mean, that's fair. I also can appreciate some of Bleed's team comps. They're
you know, off meta, which I always appreciate. And I feel like we've been seeing so much of that here in Ascension, you know, teams experimenting a lot. Now let's talk about those predictions. Achilles, you're saving your prediction. Yeah, it's also Bleed. Oh, what a surprise. I mean, Shocker. I mean, you talk to basically anybody coming into this event, once the teams had been set, you could make an argument for, like, you know, D+, Scars, Bleed, top 3, but pretty much everyone would say, I think, expect that Bleed is going to be able to win this tournament. The way that they've just been dominant, the way that they've been able to best Boom in the past, the 4 times that they have met, 3 of those are victories. I think that they're going to be very hungry to get this win, to get themselves into that grand final, have that rematch once again versus Scars. And again, I think this is going to be close. I'm expecting a 3-map series, but I still believe that Bleed is going to be the one standing tall at the end of this. Yeah, Bleed's map pool is too deep. I mean, they're just really good on a lot of different maps. It's probably not going to be Fracture because that's Boom's permaban, but I mean, Lotus, Pearl, Bind. I mean, you pick your map and they're pretty good at it. So it's really difficult to go up against them for most teams just because you can't really outban them. They're really just going to key in on you, and no matter where you go. Yeah. You're a bit of a believer, though. I am a bit of a believer. I know Bleed is from Singapore, but Boom, I feel like they're waking up. Yesterday was a showing of Boom waking up and realizing, hey, we're at the final 3 days right now. It's time to shape up. It's time to pull in all our experience and get together. And I feel like a lot of the Indonesian teams are a bit like this, very passion and motion driven. Whereas Bleed, I think you guys do have a point though. Their coach even said it in the press conference himself. They're aware that there have been some shakiness in some of their plays and not even playing to the standard that they want to be at. So whatever the outcome is, I know we're going to get really good games today. Both of these teams are going to be outputting their absolute best because this is it. This is the final day, and then we're going to find out who is going to be ascending to VCT Pacific tomorrow. With that, I believe we are ready to go over to the stage and see what the players are up to. We got our casters, Quack and Will, ready to go. Okay, so we'll now begin the map veto process for today's second match. Boom is Team A and Bleed is Team B, so we'll begin with Boom banning the first map. Boom bans Fracture. First ban Bleed bans Split. Now Boom can pick the first. Boom picks Lotus. Side for Bleed. Bleed picks defense. Bleed, you may not pick Pearl. Bleed picks Pearl. Side for Boom. Sorry. Defense. And now Boom, you may now ban under the map. We have Ascent, Haven, and Bind left. Boom bans Bind. Bleed, you can either ban Ascent or Haven. Play Haven, ban Ascent. Last map will be Haven. Side for Boom. Defense, gotcha. I'll have a quick recap. So Boom bans Fracture, Bleed bans Split. Boom picks Lotus, Bleed plays defense. Bleed picks Pearl, Boom plays defense. Boom bans Bind, Bleed bans Ascent. Final mount will be Boom playing defense on Haven. You good? I think we're gonna have fun. It's the semifinals of VCT
VCT Ascension, the very last match that will determine who makes it to the finals. We have the two Ascension powerhouses, Bleed from Singapore and Boom from Indonesia. And the crowd has been going wild the moment Scary stepped onto the stage. You can see who the crowd is favoring today. Yeah, I don't think anybody's going to be shocked about that one. Boom would love to take the wind out of this crowd's sails and once again shut down Bleed, deny them access to a tier 1 event to joining the Pacific League. That would still be Nip, are you there? Done yet. Obviously, they still have to get to the grand finals for themselves to earn that spot in Pacific. But to deny Bleed once more, to recreate that moment from the LCQ last year, I'm sure just the idea of that is absolutely mouth-watering for Boom. It's pretty scary for Bleed to think about that coming through there. I'm gonna slap you. Your bald head. No, I mean this is gonna be tough though for Boom. If I'm being honest, after this map, pick and ban. I know, Pearl is gonna be Bleed's pick if it's open basically 90% of the time if it's available for them. Lotus, though, there are no slouches on it either. I know Boom is 3-0 on it. They've been playing great, of course. But Bleed is also really good. They're 3-1 here in Ascension on it. The only team they lost to is D+, a really defender-sided comp. They bring the Sage in for their Lotus. So that's why I think part of the reason they're picking defender side first. Now, it didn't go good against D+, but that day just didn't go good. So I'm really excited to see this Lotus. Yeah, even in some of the wins, if you look historically, they've played this map quite a bit on the side of Bleed, but it's very rarely a clean victory for them. Always is typically down to the wire. A 13-11 versus Bonk, a 14-12 with the victory over Scars. So they do have to fight quite a bit in order to get those wins typically. So I think if they're going to manage to somehow get it to 0, that would be pretty damn surprising if they're going to be able to do it in clean fashion here versus Boom. But like you said, limited exposure, only 3 times played, but 100% win rate for the side of Boom. So they're going to be feeling very comfortable, but this is a very different look as well with the Sage. It is. It's almost like Ascent, where it feels really out of place on this map these days. Early on, a lot of teams were thinking, oh, Sage on Lotus, we can cut off like the A, entry point, so they only have the door to go through and things like that. But it turns out that most teams just, don't hesitate to spam down that wall in those situations. So you got to use it again in some of those narrow choke points, kind of create some of those Tetris walls where it's a lot difficult to quickly shoot them down before your opponent can react, but it still gets a lot of information, things like that. So yeah, for Bleed, I mean, like you said, yes, it is often very close, but this team is so powerful, they're able to kind of drag themselves over the line. And on the other side for Boom, playing a pretty standard comp for what you're going to see on Lotus for the most part these days. So they've been, like I said earlier, quite good. 3-0 on it so far. They've only played it 3 times, and they've won it every time. I think my biggest concern for Bleed with this composition is a little bit similar to what we were saying on Ascent. Granted, that ended up working out, so hey, maybe I'll be wrong. Maybe the Sage is the way. But the info gathering, it's not there. You don't have that Sky. You're not getting those audio confirmations off the back of the Guiding Light. You do not have that Trailblazer to go ahead and try to check corners, check close spots that people like to lurk in. You don't have any of that. And on the opposite side, you also have triple flash if we're going to be counting that paranoia as well. So I think Boom, with this map pick, should be feeling very comfortable. Yeah, I mean, speaking of info gathering, both of these teams had a lot of time to watch each other as we went through group stages. But you know what? This is it. This is the semifinals. We're going to go into the first map, Pearl. Sorry, Lotus, man. Lotus. Got you guys there. Map 1, Lotus. We're going to go over to our casters, Quack and Will. Well, Lotus it is indeed, and of course, as Des broke it down, we see some similarities in the comps, right? I mean, both these teams preferring that breach here for the hard fight. However, that Sage, will it work out again? Because we all kind of doubted it in the previous match, and it worked out quite well on Ascent. Yeah, that's the main thing. I mean, first of all, this entire map veto, it's the exact same as the story against Bonk versus Bleed. So you can definitely tell that Boom are trying to live that spirit. They're trying to find a way to counter Bleed's plays, and yes, I think Sage is one of those weaknesses. However, they have adapted. They have figured out ways to work off of it, walling off areas like stairs towards the A site, or maybe even B, just to block off some links and connectors. If you look at how the most recent match from Bleed went on Lotus, they actually had the highest impact play coming out from Scary. Now that he has the home crowd rallying behind him, this is scary, dude. Yeah, absolutely. I mean, they mentioned it even just during the walkout, but on top of that,
when you're playing up against a star player like that, not only is it his skill in-game, but anytime he makes a play, if the crowds roar, can you overcome that mentally? Are you sure you won't get shaken up? I mean, even just kind of hearing the rumble, right? Even though you don't actually get to hear exactly what they're saying, just the roar as we're hearing right now here in the stage, is that gonna throw Boom Esports off? We'll have to wait and see. Bleed versus Boom, a best of 3 to determine who moves on tomorrow to meet Scars for a chance to get into VCT Pacific, and who will have to yet again go back down to Challengers and fight through another year. I don't think Boom are gonna get tossed up by this crowd. I mean, they have that experience. They know how to shut that out. In fact, some of the crowd are cheering for them. On the attacking side now, we're seeing how this composition could work out. A lot of flashes, a lot of possible executes. If they rush into the B site, only one obstacle, and that's the first one, gonna be Crazy Guy. Yeah, and that's just an early slow orb just to buy time in the barrier orb as well. The frenzy will burn it down pretty quickly, but the aftershock off of the Sage Wall to make sure, and then the slow orb as well. Oh my god, Boom Esports, they're still gonna commit to this. They're walking through. The paranoia is used. Can they clear it out though? Okay, Blaze King gets the first kill, opens up the site. He fills in the site. They flooded it. They have the alarm bot over on A-Link by that tiny door as well. They now push up into heaven. They get the kill onto C-Link. They hear the rotating door. Post-plant position, absolutely great here for Boom. Pop flash will lead to another kill. Juicy gets traded out right away. The 2 remaining members Bleed. They're now stuck in the main entrance, but it is Darion and Scary, so we gotta wait and see, Quack. I mean, they don't have any utility to work with. It's just gonna have to be duels all the way out. Just trying to get those picks. Oh, Scary, he really was looking to even out the numbers just a tad bit with the early shots from the Ghost, but he can't get it. The turret will draw some aggro. Scary now down to a 1v2. Shiro's pretty weak, though. Oh, Severine will be able to close things out. Doesn't let it get down to the wire. And Boom Esports with a nice 1-0 lead. Great way to start. One by one, they take down the Bleed members. Looking at how they approach this, first of all, yes, they continue to push through despite the slow orb, and I think that's one of those things that Bleed didn't quite expect. Off of that, still the pressure on towards Nep, and then Juicy, they heard those rotations coming through. Boom, they hit it. They hit Bleed where they least expected it. Yeah, absolutely. I mean, you get all of that utility from both the Siege and the Breach thrown out, and you still just creep walk into the site. We don't see that every day, and we just saw on camera Severine just taunting the opponents across the stage, and off of that momentum, they continue to push fast into A. Rubble already taken, rotating door opened up to put pressure onto the site. That gives them the time and space. Oh my god! I was gonna say to pick up the ult door, but meanwhile, Blazekin gets a quick double on the peek out from Bleed over on C Mound. The entire map is Boom Esports' oyster. They can just take their choice of site at this moment. And of course, Bleed just doesn't really have the firepower. They don't have any guns to work off of. Unless they play close range, maybe a right click, maybe they will be able to pick up one off a corpse, but that's about it because Boom are sticking together as a team. Yeah, Boom's gonna walk in. They have no plans to give up any weapons here. In fact, especially if Famous just gets the first duels every time. He's being sent in. He'll get the second one as well. And now it's just Neff left alone. He cannot get a kill, and Berserx with that Spectre is going to be able to clean it up. But flawless here for Boom Esports. And the flawless means so much, am I right, Will? They got 3 Bulldogs, 2 Spectres. They get to carry that in the next round, and very potentially rushing down because of these guns. I don't know if Bleed are going to find a way to work around this because they have to hold it safe. They have to play and hold on to their rifles. The full buy is coming through. I mean, with such a pickup, you can see that Boom have done their homework. They're anticipating pushes outside of C Mound, and that's exactly where Blaze King picked up that double. Well, with that flawless, you got 3 Bulldogs and the Spectres, and how do they plan to make use of that? They want to try to get into one of these sites that they could utilize the Spectres as well, even if they drop the Bulldogs. So a little pressure over on C. Not going to pick up the ult right away, though. They want to peek around, make sure they clear the area first. Don't give any information. That's the name of the game right now from Boom Esports. They're waiting to pounce onto Rubble. Juicy, are you ready for this? He does suspect that it could happen at any time, but not too much support for him. He dodges the fault line, but doesn't get the kill. He'll be able to stabilize once again, walks right by the Trailblazer. He's flashed to no end, but he's still staying alive. Back up now, coming out from A-Link.
look at what's happening on the mini-map though, Will. I mean, although they're pulling this attention over, they're losing some members. The spike is being delivered over onto the C site. Crazy guy puts up the wall though. Oh, and the nano swarms as well. This time you cannot walk through that one because you will get your... Oh, well, you can jump over it. You can dash over it by all means. Famous, he's trying to break open the site. He can't find the first kill, but the spike's already committed. It will be dropped by Shiro's Crazy Guy. Gets that second kill, and now Berserk's just trying to do damage. He gets one. If he can pick up the rifle, maybe get another kill, he'll be able to continue to do damage. Now, time-wise, the round is over, and in fact, kill-wise as well as Bleed. 4 members up to live, puts a point on the board. I mean, part of it is Boom Esports trying to bulldoze and trying to brute force their way through some of these positional setups coming out from Bleed. Juicy with the off angle initially, and then the tailwind. They were trying to sell the fake, but somehow it was also read by Bleed. Crazy Guy with that well-timed wall. It just blocked them off. Yeah, and especially if you're pairing the Sage and the Killjoy together, that's going to put a lot of questions over on Boom's side of how do we eventually break into the site. Now, those are the things where macro-wise you got to keep it in mind, but okay, Boom Esports are not giving us much time to break things down in hindsight because we're jumping right into round 4. Rubble already taken very clear. Now, Bleed had no intention of fighting for that as they put up the one-way over by C Mound. Now they're able to rotate their forces over to support A site. There are a couple of players from Bleed, Boom, excuse me, who are 2 alt points away from their ultimates as well, so this could go well. And Famous actually gets that shot onto Crazy Guy, who was propped up on top of his wall. Such an upward flick. They got the spike planted off of it. Now control being granted. And all they have to do is watch some of these close in that position. Bleed are trying to retake Juicy. Dropping off. Yeah, and also that Sage wall is still just kind of keeping that heaven side blocked off. Now Darian's trying to draw out some aggro here by Broken Door, but he's not going to quite get it in time. Their teammates will clear it out. Scary now opens up the site. Famous, he's been stunned up. He cannot buy enough time. The aftershock, but he's been spotted. The flash comes through. He's going to anti-flash around the wall. Shiro with the fault line, but he peeks out a little too early. Darian gets the kill. You see the shoulder to the diffuser has been killed. Half not done yet, and a headshot for Blaze King, and that's 3 through the wall as Blaze King clutches it up. 3rd round on the board for Boom Esports. A hat trick for Blaze King to pick it up. And with that, the 3rd win, yeah, you're right, Will. I mean, all they had to do with the setup was to just play off of the spike. Yes, Bleed, they had this sort of a delayed retake, just waiting for that peek out, that push out from Famous. And still, the rest of the squad knowing how to work around their utility. First of all, Shiro with the aftershock, the fault line just to keep them at bay. And then Blaze King to strike from behind. They thought they could stick that spike defuse. Man, and you can just see the players are getting heated on that stage. There's so much history behind these squads, these players themselves. Aja VC aja we saw this yesterday. He gets another one around the one-way, dodges away from the blades as well. Blaze King, he led the team to victory yesterday. He's looking to the today. Berserk's gets taken down. Bleed, they've stabilized. They're trying to hold down the site, but Famous, he has been great on the entries today. Jet doing what she has to do to bring over the site. Now created enough of a distraction. Blaze King is back to support. 2v2. Oh, they're going to use a lockdown just to be sure. Are they going to commit to A, though? I mean, they have their choices here. Okay. They have a full minute. That's right. They could rotate back around. I don't know if the door's already broken, but now it's just making so much noise. I don't know about this play, though, because there's so much space being respected by Bleed. Yeah, but they're just also trying to buy time on the side of Boom Esports as well. The Nanoswarm denied the peek out against the spike plant. Famous planted in. Blaze King, he's just trying to gain information. But Famous, he can't win his own duel either on the other side. It's going to be Juicy and Crazy Guy with the Wise at the end to pick up the round. Crazy Guy with the crazy round. 2-3 score line for Bleed. It's a bit of a wise play coming out from Bleed. Just tiny jiggles back and forth, and they are carefully slicing the pie, moving forward with some of these duels. Boom, all they had to do was to hold out the spike, but still just a little bit of a tiny movement, and it's perfectly capitalized on by Bleed in some of these plays. And that's what I think the lockdown play was something that was a little bit questionable. He had so much he could work with, but just committing to the site meant that Bleed knew exactly how to work around it.
Yeah, and also, I mean, Bleed not getting flustered by that, right? Not by the gunfire over by the tiny door either. They just say, well, it's a 2v2 anyway. They stabilize. Boom, they've been continuously debuffing Juicy going for something juicy. He gets one. But Juicy trades it out. Now, that does take out the Sage. So, Boom Esports, they don't have to worry about any artificial delays here. Of course, just working with ecos as well. So, pistols on the board. He's trying to hold on to rubble, but it's not enough space for them to execute onto any of the sites just yet. They're going to have to creep forward. I mean, look at how far back Darien is playing. First of all, yes, the utility just to gather information. Hello, to walk out the site what you guys doing? Setup, but also his lockdown. He's intentionally playing so far back because if Boom plays into the A site, it's a retake setup from Bleed. We've seen this before in their game against Bhau, and it's working out again. Yep, and the Seekers are being sent out. Boom Esports, they want to make this work. Now, here's the thing. They also have the Rolling Thunder on their own side as well. Do they use it to set up? No, Famous, he's trying to look for one kill. He gets one. Can he get out, though? Run. He can barely get out of range. Nobody detained. Now, that does mean they didn't get to plant the spike, but 30 seconds, and guess what? Left. Boom Esports, they've done the damage. They've planted Famous as well, and they're running the spike over to C. Scary's trying to wait to see if there is a rotation, but Bleed, they're already one step too late. And Famous, he starts to creep forward. He starts to clear the site. Oh, timing. Yeah, can he find the timings here? Now, Bleed, they will arrive just about in time, but not enough to stop the plant. Famous, is he going to be too late, or will he be there just in time? The rest of Boom Esports, they exit. Scary's right behind them. Yes, the exits, they're holding on to it. I love that they're sending Berserks just to check and watch the flanks as well, because they know Scary's right around the corner somewhere. But as soon as he peeks, Scary finds the headshot instead. Yeah, the Vandal is now dropped, and the Paranoia is good. The Aftershock gets the kill onto Juicy, though, and Famous gets the kill onto Darien. Time not on the side of Scary. He's doing what he can to push through, but he knows there's too many members. Another smoke to try to creep in. He gets sight, but Severine comes in from the side. And a great win here for Boom Esports against all odds. Without great weaponry, the Blade Storm helping open things up over on A site. And this is just experience from the IGL of Boom Esports as well. Looking at how they actually went with the mid-round adaptation. Yes, a bit of early contact outside of B, and then to push in towards A site, playing off of the lockdown. I think they kind of wanted to bait that out, and just making it out in the nick of time. They went through and rotated all the way through C site. Such a good read, such a good play, even watching out for Scary. Absolutely, just really heads up play coming out from Boom Esports. Still has that Rolling Thunder as well. Now Darien, he's trying to peek out early with the Sheriff, but he can't find the headshots. Berserks just gets tagged up just a tad bit, can't heal himself, but Famous once again, he is playing that entry as well as he possibly could for Boom Esports. There's been a lot of talk about Famous. He's great in scrims, there's always been so much hype behind him, but has he been consistent enough? Well, today, when it matters most, he's trying to make it happen. Scary, nice kill with the classic, trying to cross from back sight, but the weaponry absolutely in favor of Boom Esports. Unless Juicy could do something about it. He's coming up from Waterfall, a bit of an off angle. Famous is still watching up though, and now they expect it. Here comes Juicy making a bit of noise. Scary trying to go for right clicks. It doesn't quite happen. And Berserk's Boom, they will be able to close down that door. And look at this, Famous, he's clearly the confidence is there, right? Just even the updraft onto the box and dropping back down. He knows that he is always one step ahead of Bleed right now. He knows that he can be this menacing jet who's just flying around the site on these entries against the retakes. Sure, weaponry advantage here for Boom Esports, let's not forget that. But overall, momentum absolutely in favor of our Indonesian team. And with that, they get to carry it forward. It's a great thing to have on your map pick. They want to hold on to it as much as possible, but Bleed are trying to wrangle it away. They're going with Juicy kind of aggressively peeking out through A. However, he gets blinded, so has to fall back. Yeah, almost got caught on the wall there from the backwards tailwind as well. Now, that was Bleed's attempt to answer the constant default aggression onto Rubble. But while Boom Esports also gives it away, Bleed didn't gain control of it just quite. So this is where we start to see that compositional weakness that they talked about on the desk. We hinted at it before the cast as well, Quack, but with that Sage, you can't just dump so much more utility just to take control of A main, because then you really have nothing to stall the plant.
That's why they're still working their way slowly across. They're anticipating this rolling thunder execute coming out from Boom. Bleed just completely fall back, leaving it out open. A bit from the shadows, and Scary will punish him as well. They actually hold on to the Rolling Thunder. Yeah, a little bit ambitious. Okay, well, that's going to be the Rolling Thunder coming out for the retake. The spike did get planted. Reverse Rolling Thunder as well, just to buy time. But Boom Esports, they have to flood the site. The Aftershock, he's trying to delay. He gets 2-0. Headshots across with the Phantom. The spray transfer is impeccable. Scary will clear out the site. He's done it before. Trying to isolate. No, he cannot win the second duel against Crazy Guy, and Bleed, third round on the board. And it's all about movement, all about the positioning, right? Look at how this retake goes through. Boom, I mean, I think they were a little bit read by Bleed with how they wanted to go in with the utility, the ultimates, and Bleed were just waiting for it. As soon as they peeked out, as soon as they went through, and the tiny duels at the end of it, they might not have expected Shiro to pick up those kills, but towards the end, Blaze King with Crazy Guy, the tiny bit of a shimmy just throws off that final shot. So again, great play from Bleed just to hold a bit of momentum, fighting it back. Man, and Blaze King, yeah, he does what he can there, but guess what? We're moving right on into the next round. Once again, Bleed trying to answer back on this aggression. Okay, so they commit the slow orb, and Famous, he dashes above though. Juicy, he's a little stuck. Severine jumps right above on those steps to look over the barrier orbit. Juicy just has not had a good time trying to get planted into rubble. He hasn't found much success. And this was a setup, a play that Bleed used in their game against Bonkers. Now this time read fully by Boom. They know that they can dump a lot of players just to clear out Juicy. Without that head, it's going to be a little bit tougher for Bleed to go in with retakes, to go in with duels. So now a bit of control. Good match, yeah, I know. It's a good match. Like, दोनों बहुत अच्छी team है. Yeah, they even have Blaze King holding on to that operator, just holding in B main as well. Now, they hear the aggression coming out from Bleed, but Severine's still stuck up here above the smoke. They don't realize he had that angle to just peek out across. Now Crazy Guy down. You already heard extra footsteps. You already heard Tiny Door being broken. Boom Esports has no reason to stay in A. And guess what? Do they know that Blaze King is here? He suspects at least one person. We gotta go back. Okay, the op shot is good. Right on time. Thank you, observers. Now the door opened up. They caught the rotation. B site, free for the taking. Darian right around the corner too. He could peek out just to eliminate the spike planter. But look at the plant location, right? They're well aware of this. They don't take that risk. Sure, they're covering each other, but they say no reason to drop any more weapons, no reason to give more ult doors over to Darian. That lockdown could still be a menace in future rounds. And Bleed, it looks like it's going to be a save. They're already too far apart. It's a 2v5 onto a tough site already for the retake. Now the question is, Boom Esports, you have a couple members with some extra credits. Do they push out eventually for the hunt? I think they could, but also just trying to play it safe with the operator. Looking at their post-plant positions, how they secured every exit, now cover and movement as they go back towards pillars. Bleed are just trying to stay as far away as possible from Boom. Just keep him back on towards the C site. Yeah. I mean, the way that these rounds are going through, it's a lot of presence on the A area of the map, and that's precisely where Boom wants to draw attention to. Bleed might just kind of fall towards a bit of mental conditioning as well because of this. Well, yeah, I mean, we already see it, right? With them pulling out these plays that they've shown here and there over by Rubble. But even that not working out, Boom says, okay, we're ready for it. And Boom's had great reads round to round. I think that's the important thing. The rounds where they read that Bleed's pushing out of A, they're ready for it. When they try to push out of C, they're ready for it again. They counter the one way with having Blaze King already swing out wide. Things like that just shows that the prep so far in the first half of map 1, I would say goes in favor of Boom. Oh my goodness, and this is one of the first times that you only see Lagia call timeouts whenever there's something that desperate that needs to be corrected. And that just says a lot to how well Boom is playing this map. Like you talked about it, they are covering so many parts of the map. They are countering so many of Bleed's plays that sometimes even with the way that they were trying to perhaps cut noise with Duck Carver blocking off stairs, it's almost a bit of a question mark for Bleed at times. Are Boom still committing towards this site? And that's why I think we saw Crazy Guy Neff starting to push out, but that's also where they got punished.
Yeah, the biggest question is okay, you can choose not to fight at Rubble, that part's fine, but then if you hang back, again, with the Sage composition, you're kind of giving that A ult orb for free. And then on top of that, the C ult orb always in danger for the attackers to take, you know, unless you get that first kill with the one-way smoke. So I think what Bleed's trying to do here is maybe stretch themselves a little too thin, right? Commit one way or the other, and now we're seeing that four-man stack, Fault Line and Paranoia at the ready. They not only want to plant Juicy, it looks like they might even want to push out of Rubble. Countdown. Now down to 5 seconds. The barriers will go down. Is Boom aware of this after the timeout from Bleed Esports? Boom, nothing too different just yet. Okay, they're just taking the ult orb away early on, but Paranoia hits, and Famous is already taking control of Rubble. Bleed Esports, you're kind of in a tight spot right now. They do plant Scary into the smoke. Famous has no idea. Scary's the wild card here. Crazy Guy's gonna go for the peek. The trade comes in from Neff. Scary's still unspotted, and now Bleed, at the cost of Crazy Guy, have finally found a response to the Rubble default here from Boom Esports. It takes 4 players to pull that off. Scary, such a looming presence. Boom back off, and Juicy actually pushes up front to call it clear. So now they know they don't have to worry about the A site. If anything, Bleed, they're the ones who have to watch out. Well, Bleed, King, okay, yeah, safe. Yeah, here's the thing though, Bleed, because of the ability of taking out the enemy jet, and like you mentioned, Juicy, planted in Rubble, they can all rotate over to see, okay, the fake, but Juicy's not shaken, because guess what? You still got 2 or 3 of your teammates. Juicy's good for 1. Can he get a second? No, he cannot. The reset does not snowball in, but this calls for the rotate. Bleed, they have to make a choice. You can see that they're flustered. They say, well, maybe it still was a fake, maybe it wasn't. Enough time, just enough time, in fact, from Boom to climb back into C site. And guess what? Darian, he's all alone. He cannot try to force this peek here. Has to wait for his teammates. You still got the Fault Line coming back. Have another flashpoint as well. One thing is, though, they planted so far deep into the site, so it comes down to how they hold these post-plant positions. You can't not really hold it out from Mount. Yeah, I mean, they're kind of scared of their plant, too. It looks like they do have Berserks watching the back. But with the Operator, Bleed, so much homework to do to try to break into Elbow right now in the site. Blaze King, he peeks out again. He doesn't find his target, but it's going to be Shiro who gets the first kill, but Neff breaks open the site. And now from Waterfall, Scary comes in for support. The defuse is getting stuck. He's trying to kill the diffuser, but half already done. More than enough time for Scary to bring that round home. 4-6. It's starting to get a little close for comfort if you're Boom Esports. It's one of those things that I'm really curious and really worried about. They had an option to plant for Mount and maybe to play out from backside, because from that position, that Operator would have been effective. However, just going that much deeper in, you're working with an Operator at a slightly disadvantaged angle, right? You are trying to thread the needle, and you only have that little time to react to it. And at the same time, if you whiff your shot, your opponents get to push deeper in. Yo, the Operator kind of loses its effectiveness. So it came down to that duel, and Neff came out huge. Oh, yeah, just massive double kill to open up the site on the retake. Now Juicy keeping that Operator for himself. The Seeker's being used early. Boom Esports says the tempo's worked for us before. Famous once again jumping over the Nano Swarm to make sure tempo stays on their side. He's cleared out the site. They're pushing the Trailblazer out into Waterfall as well. The Seekers do continue. So enough time bought. This time Planet safe on default for Mound. 4 people outside of the site though. I'm a little worried about this, because while the spam could be good, if Famous dies a little too early, Bleed have a nice opening for the retake. The Paranoia is good. Famous, he just needs to buy time. He's good for 1. He's fully flashed, but he's just trying to stay alive. Around the corner, Bhai, he gets one more revive. He got 3. And Scary, he might get a kill here and there. And Crazy Guy is trying to push out, but Gaya the Rolling khatam. Thunder to make sure 4-7 it is. that the round is locked down for Boom Esports. Bleed, do you commit further? You don't have much time. No, they say we got to save the Operator where we can. And Aftershock for good measure as well. I mean, they did plant Famous in there just as a bit of a fail-safe, right? Maybe he gets 1 or 2, and maybe not. But if anything, they get the information that there is that push coming through, and then the Rolling Thunder comes out. Even an Aftershock for good measure. Boom, they read that. They played that to perfection. They made use of the tools at their disposal. And it comes down to how fast the C site hit actually came through.
You can see that Bleed were trying to set up for a bit of a retake. However, that's not something that you can always pull off against such a fast team like Boom Esports. Now, Juicy pulling out his own operator, though. Yeah, just being carried over by Darian from the previous round, and of course we saw it over from BlazKing, buying up another one for themselves here on the last round for Boom Esports on attack. They're pushing the tempo again. It's worked for them so well. It's really allowed Famous to play a great entry fragger role here for Boom Esports. He's been good for a couple kills. Okay, the Blazer just even put pressure. He pushes in, gets the right click, and that's all he needs, because now he's with the pressure in that he could always push back out with the rifles. Once again planted for Mound. And look at the map. BlazKing, he has control of B if he ever wanted to go for a deep flank. I don't think he will. Okay, Famous dies a little early. The Rolling Thunder comes in, and now it's crazy. He cannot capitalize on it. Severine right up in his face. Okay, the defensive lockdown just to force them away, but they should still have an angle from the back of Mound. Should just be able to peek out right over it. Meanwhile, Shiro's close, and BlazKing, he's gonna get a kill with the Nano Swarm as well. And then getting the Tane at the end, but not a problem. I mean, such an unbelievable play. You talk about picking up the tempo, and boom, just show us how high of a tempo they can reach. You have Famous going for these huge entry frags, going off of the Blade Storm, and just using the right click to secure even a single frag. It keeps Bleed at bay for one fraction of a second, and then they continue to go off of the retake. Boom just continue to hold out back. They had nano swarms, they had everyone holding out from outside of Mound, and of course that tap off the Rolling Thunder being connected. It's just great plays, great reads, and great holds coming up from Boom after they get the spike planted. Yeah, I mean, that first half was quite the flash of a second here as Boom Esports kept up the pressure against Bleed Esports. Now Bleed, we saw during the draft it eventually goes to even if we go to map 3. They haven't played it this tournament. Neither have they played Split or Ascent. So a lot of these more traditional maps they've been avoiding here for better or worse. But guess what? So far on Lotus, it looks like they might not even have a chance to get to Haven because Boom Esports is just not stopping at anything. Yeah, and if you think about how Pearl goes as well, that's another scary map because that is one of Bleed's strongest maps after all. Juicy on the Reyna, Darren on the Jets. You always want to watch out for that, but we'll save that for later. Right now, it's an 8-4 scoreline. Not the worst thing in the world. Bleed can still come back from this, and it all starts with that pistol. Now that they're on the attack, though, I don't know how well this Sage setup can work out because it requires you to push that deep into the deeper parts of the map in order to make use of your wall. Personally, if I'm looking at Bleed's side of the game, Quack, I'm hoping to see them focus a bit more on the C side, right? Because Boom Esports with their composition on the A side, they could still put on the same type of pressure that they did on attack, but they can't keep it as well around Rubble. So curious to see what will happen here in the second half. Of course, during pistols, a lot of teams sometimes favoring to go for different defaults, and that seems to be the case here for Bleed as they have 2 members standing back watching for aggression across the middle and east side of the map. That's the thing about the Bleed attack. They operate as a unit. Everyone sticks together. If someone peeks out, they will be able to secure an isolated frag. But that's why Boomer plays so safe, so defensive. Yeah, Juicy just trying to capitalize on the kill, but they haven't quite committed yet. The alarm bot cleared! The right click is good from BlazKing. He knew exactly where that Cloudburst Tailwind combo was coming through. And the aggression, it's been stopped entirely. Dead in its tracks. Bleed, no way to push their way through. Hey, BlazKing, oh, that's dangerous from both sides, but they will both stay alive, and he's even drawn out more utility from Bleed. It's just going to be allowed to come in as the Barrier Orb is trying to buy time here for Bleed Esports, but Berserks comes out from Evan and gets triple right in a row as that allows timing for Shiro to come out and clean up the site. 9-4 lead here for Boom. Multiple parts of the map has been blocked off and controlled, right? And we first of all, you got the C side. Yes, they got a little bit of a damage dealt towards Famous, but all that was information to prepare BlazKing to counter Juicy's Tailwind. And as soon as Bleed tries to rotate back around, you have Berserks who was just waiting on the B side for that perfect trap. Now, they're of course going to buy up, but Bleed with the force. Now that is interesting. Yeah, without the plant either. I mean, perhaps feeling the pressure because it is on the attacker side. They should still be able to snowball this if they can get the round win.
and they're not stopping at anything. And that's what you need if you're going to force buy like this. Now, a bit of a mishap there with the fault lines. Juicy gets stunned just a tad bit, but he will help clear the site for the time being. The barrier orb just soaking up a lot of those sprays coming out from the Spectre. Juicy, can he get the kill? He gets the spray down through the smoke. And now position to exit back, takes out the Trailblazer, slow orb buying time. Bleed, they might want to push out a waterfall here just to try to expand. 1-for-1 trade, but it's not going to be enough information as Boom Esports still has crossfire in both sides of the retake. All down to Darian. One stinger. Now he can't even get the kill onto Blaze King. It was so low. 4 HP left. Even swapped over onto a Ghost, just holding some of these angles with the way that Bleed tried to fend them off. The slow orb first, just deeper in towards defender spawn, right? But after it dissipates, Boom can just simply overwhelm them with numbers. Of course, Bleed kind of anticipated it, but then again, you have to think about firepower. Those Spectres, those Stingers, they weren't quite able to hold out against this full might from Boom. Well, surely we slow things down in this next round, because I would also like to catch my breath. But no timeout, though, but just going to slow things down. I mean, we're just looking at Sheriffs and Marshals here on the side of Bleed, not even half armor across the board. Can't quite afford it if they want to look long-term into map 1. It's still not map point for Boom Esports. You have to remember that there's always such a massive difference between 10, 11, and then potentially 12 to get to map point. Aggression not being shown from either side. Just some far back Trailblazers and guiding lights on the side of Boom Esports. But Berserks, yeah, he has to continue with his jump piece because he used that utility so early. Still, though, now he hears those sounds, and his team is rotating over. A very careful default hold from Boom because it's up to Bleed to actually press this issue, right? They're the ones with a slightly weaker buy, and they're trying to rush through. Yeah, the paranoia is perfect into the vault line as well. That opens up for Scary. He gets 2, and now the weapon pick up the Spectre. And Severine still hiding out, though. He's in drop with the Bulldog. He gets 1, isolating 1v1s. And the jump right click coming out from Crazy Guy. 1v1, Blaze King at full health, though. And Crazy Guy had no idea where to look. Blaze King saving what could have been a disastrous round for Boom Esports. A bit of a forward leap, and yes, Crazy Guy did manage to, turn the tide just for a second. But then again, with the weapons that they had, with the positioning from Blaze King coming up from behind, I don't think they really anticipated that. So it just went through to how, I guess, Boom kind of funneled Bleed towards this site. Yes, Scary got an incredible shot. But once again, numbers overwhelming. Boom Esports kind of reading them and just preparing for their site push. It comes down to this round. Yeah, Boom Esports, if they can get to map point on the head-to-head buy round here. All right, just an old door being picked up here by Bleed. They're trying to look long-term, playing the macro game. However, they gave up space on Mound. They know this. They want to fight back, and they will succeed. Juicy takes down Famous. Territory regained here for Bleed. Yeah, Boom kind of just has to control themselves, right? Because, again, this is how Bleed operates on their attacking side. All 5 together, they were waiting for a bit of a potential push, and it worked out great. Now the rotations have been bought over onto the C site, and guess what? Bleed now has a free site. It's that perfect wall orb just to block off stairs. All they have to worry about now is perhaps Heaven, maybe drop, maybe the rotating door if you want to look behind. Yeah, I mean, that, of course, you still have the alarm bot available as well. Should come back online as we see Darian kind of stepping back towards Tree. Now the fault line coming in just to try to open it up, and Severine's actually going to be able to sneak right in. He's in the middle of the site, and the Aftershock should lock them up with the stun. Crazy Guy gets hit, but he stays alive with 35 health, continuing to heal himself back up, and it's just going to be Blaze King. He's done some crazy moments before. Oh, man. Crazy Guy was very low, so Blaze King gets the kill, but Scary was in rubble already. Yeah, and that whole retake scenario, yes, they fought fire with fire, just dropping off from Heaven, trying to find whatever they could. Blaze King slowly making his way through Tiny Door. Scary had already pushed so far deep into rubble that they could always count on that last contingency plan. And you look at how some of these duels go out, right? It's just this positioning, the post-plant position coming out from Bleed. They always do this, hiding on the site, a bit of a one-and-done positioning. And you have someone to bank him out, holding out from Tree as well.
Well, Rolling Thunder available here for Neff on Bleed, but of course Shiro 1 point away as well. But a bit of a half by, and Boom Esports trying to capitalize an amazing flash, but there's just way too many targets. Severine can't pick and choose, he only gets one. Shiro, only one for himself as well. And Boom Esports down to 2 members with Sheriffs only in hand. Famous can't get the first shot. Juicy answers right back, and BlazKing, I mean, this time, surely, with the Sheriff, it looks very difficult. And worst case, Darion's got his lockdown, if it really comes to that. I'm sure he doesn't want to use it, but hey, you're 6 rounds behind. You got to do what you need to do if push comes to shove. I am keeping my eye on those ultimates, though, because the next few rounds will be very, very important. That said, still on to BlazKing, and looking at how Bleed are holding this, it's a triple stack. As soon as he peeks out, they might rush into him. If he goes in to check them in, he's basically dead. So he doesn't want to give away any more ultimate points. He's probably looking to die to the spike. And that's going to be the whole round. Yeah, and I love the setup there from Bleed as we hear shrieks of joy in the audience as Bleed tries to climb back into Lotus, but there's still a little ways to go. And that's what I want to keep my eye on. As soon as the screen comes back, you can see 4 ultimates on Bleed's side versus the 3 coming out from Boom. I mean, this was a save round from Boom, and they were just looking to get whatever they could. And what they got was a couple of ultimates, Shiro's Rolling Thunder, which is very useful for retakes. And that's the game plan that I want to see coming out from these guys. So far, they've been trying to go for active map control outside of C and A, and then they get punished because Bleed are just waiting for it. Now that Bleed has this many ultimates, though, they can go in for some setups, some executes of their own, and then it's just going to be a whole back and forth gameplay. All right, so Boom, they go for the heavy commitment over on the A side. That allows him to get the ult for the Seekers as well. And Bleed actually just going to happily use their own Rolling Thunder. Boom Esports is fine with this one as long as BlazKing stays alive and he gets the headshot. Oh, Bleed, they're starting to reconsider why they use that Rolling Thunder early. They do not have control of the back of sight. The Seekers are coming in from behind as well. The choke and then the choke on both sides of Rolling Thunder used from the defense. Spike does get planted, but Bleed Esports, they have to push out one way or the other. They're kind of stuck in the middle of nowhere, trying to defend the spike. Ooh, crazy guy holding on to Mound. There's another one. Meanwhile, in the side, BlazKing tries to open it up. With the spray for 2, but Berserk and Severine, they even things out. Berserk has to come back to join. No, it's too late. Down to a 1v2. The pop flash. No, he's just going to send it deep, but he does not check his left side. A 4K for Neff. And now it's 7 points. Getting real close, Quack. Very, very close. I mean, it forced out ultimates from both sides. However, with Darren just playing it a little bit safer, he managed to hold on to it for that retake scenario. It kept Boom at bay. And of course, with Neff actually playing and pivoting around the site, the way that he positions himself, it's great for the way that he duels off the Vandal. Okay, yeah, we do have the lockdown still available for BlazKing. And all right, it's going to be a timeout. I was wondering when it was going to happen because both teams, I mean, you got to imagine, when you look at pro games, I think one of the things that's hard to grasp is just how much pressure is on the players in the server, right? Especially when tempo's this fast. Even for us who get to watch the minimap, it's hard to keep track of everything that happened. But if you're the IGL, or if maybe you don't really have a dedicated IGL, but you're calming all the time, you need to have players who are keeping track of all of this despite the chaos. And that's what the coach does. They can see, that's what the coaches do. They can see everything from that third person's perspective. So sometimes shedding a little bit of light on how you're playing, how your opponents are playing, you could find ways to work off of it. However, just a bit of a camera shot onto Scary, and the entire crowd is rumbling Will, the last shining star of Thailand, and everyone wants Bleed to succeed. I mean, he's already made a name for himself globally, right? That just speaks miles to what he's accomplished. And now he is that last hope for Thailand to continue to gain some extra representation, trying to claim his spot once again, taking his place. That's the goal here for Bleed Esports and Scary. They want to get into VCT Pacific. Of course, they would still have to go through Scars, either one of these teams, in fact. And just a quick hit onto C-Mount. Once again, it's just an ult orb play. They've been doing this time and time again, waiting for the aggression on the other side of the map, and now they will regroup for that 5-man movement.
pesky 5-man movement. It's so tough to work your way around that unless you somehow read where they are on the map and have some beautiful stuns or something to crowd control them. However, that's not very likely. Boom, they have to spread themselves thin. Yeah, and you know, they're just going for mostly kind of long-range fights with the Sheriffs and Guardians. So get picks where you can seems to be the name of the game. Okay, we do see the Blaze Storms from Famous. He's gonna try to walk through this on a tempo. He can't get the first kill though, and Juicy's already taken out Berserks. Famous, he's stuck in the site. He hides in, okay, he hides in the enemy's Cloudburst for just a bit. Bleed. They're going back and forth, they're flip-flopping just a bit, but now with the Barrier Orb, they should be able to peek through. Crazy guy with a nice peek out, gets him through the wall. Shiro trying to stay alive, but he's only good for one. The Guardian, you can't spray that one. All single fire for you. Blaze King didn't spot him down below. He was way too focused on his own crosshair. Severine, I mean, the Stinger, you can get one, but you kind of have to isolate these 1v1s somehow. Okay. Just mind games? Well, Crazy Guy says, just in case. Insurance policy with the Phantom gets the headshot. I mean, his teammates around the sides as well. Scary just watching the other dark cover. Of course, Crazy Guy with the spam is the one who got that final bit, but such an incredible fast play. It's almost a little bit weird how Famous wanted to peek out with that such an aggressive play, trying to tailwind back. He wasn't able to find anything. And it begs the question, like, what was that timeout called for? Was this the exact setup, or is it for the next round? It has to be for this one, right? The way they were set up earlier, just long-range peeks, trying to get one pick or two. Now you've got the operator on Famous. He's been planted in Mound, and they just all leave. It's just the operator holding down C site. He repositions for a potential exit plan into site. Meanwhile, Nano Swarms to buy time over on B. Shiro on standby with the fault line, potential aftershock as well. Guiding lights being used on the other side on A. So Boom Esports, they're starving for information, but this also means all guiding lights now on cooldown. They only really have that Triller, so they're even going to use it just before the 1 minute mark to try to gain some information. Does buy a bit of time though. Oh, rotating door. But that spots the operator. So now they know, okay, let's not rush into C for sure. Let's go into A. Meanwhile, Juicy was hidden during that rotating door. Here's to see how that works out. Severin with the Judge in the dark cover. They suspect it, they jump in, but the Judge does not stop for anything. Spike down, Severin, getting a bonus for his troubles. Oh. The Nano Swarm just to shove him out. They know he was tagged. He runs away, he stays alive. Now B side, the Nano Swarms were used up to try to block off Juicy. They got contact earlier, but the operator's here. Oh no, Famous does not realize Juicy's already in. 30 seconds. 30 seconds on the clock. Blaze King trying to stop it as best as he can. Cannot reset for the kill onto Crazy Guy. Shiro, he brings out his rifle just in time, but the res. Juicy gets out with a sliver of his life. Bleed, they want to run even further. They want to get to safety, and that allows the timing for Scary to find unsuspecting members rushing for the rotate. 1v3, Shiro, can he bring Boom Esports to match point? Now, everyone on Bleed Esports also not full health. Does have a Phantom, the best weapon for the job in this moment, but look at the plan, look at these angles. Oh, there's just too many to care for, and Scary whips out from elbow. Just peeking off contact from each other. Such a classic textbook play, and it works a treat. 9-11. Will, this is now 5 or maybe even 6 rounds, 1 in a row from Bleed Esports. The way that they're working around this, some of the aggression coming through, some of the trust in their teammates, despite how low the timer gets. This is a team that does it all. Boom, on the other hand, you think about that timeout being called by Coach Meow a couple rounds ago, and it was meant for this moment. They spread themselves thin, and again, you talked about that Sky Utility being thrown out. They do the same thing again. Yeah, here's the thing. They know that they can't hold on to rubble in a guaranteed way, right? At the end of the day, it's peak for peak. Hold that thought, though. Rolling Thunder comes in. Neither team wants to slow down on this map. Bleed, they flood the site. They know it should be clear with the Rolling Thunder, but they do not overextend. Drop not quite cleared. A slow orb just buying time on Heaven. They have the better weaponry. Now, they're not quite sure of the half-buy coming out from Boom Esports, but they have a suspecting idea. Juicy, he's going to wait for another peek coming out. Oh, he saw the legs, but he cannot find the crosshair, and Juicy's going to have to run away after getting tagged up quite a few bits. Does buy up a bit of space. Now they'll be able to push up front, but Bleed still right around the corner. And Juicy walks back into the smoke just in time to take out Severine. Neff on the other side, but the defuse, oh no!
They hear it and they suspect it right away off of the cloudburst. And Bleed now catching up to 10 rounds. 1 round difference, and Boom Esports is not yet at map point. What is this crazy comeback from this team? Just plays on top of plays. Boom, we're trying to funnel them through. Boom, we're trying to get a little bit proactive with some of these pushes, but then here comes Bleed just rushing onto the A site. They block things off. They hold out the post-plant positions, and despite Severine trying to go off of drop, it's just Juicy and the way that he works around the map. Yeah, Boom needs an answer for this A side, right? They've been using so much utility to basically not be able to keep control. Singh, that was a bit of a wide jump, but he gets out with full health. Only that half armor was bought here for this round. Now Bleed, they creep up. They want to clear out this Killjoy utility. Oh, but BlazKing says, well, you'll pay for your troubles. The Champions Vandal lighting up as BlazKing tries to make sure that Boom Esports crosses that finish line. Turret on contact, Berserks. He peeked out. He finds information that Juicy has made it in. BlazKing's just holding through on the paranoia. He gets one. Just allows Juicy to live with his life. But Neff, meanwhile, gets 1 kill for the trade as well. And now Shiro holding and pivoting around the B site. If they peek off of him, he needs to be able to keep them off. Well, the Rolling Thunder set up for Severine here, but scary. Oh, the hops. Yeah, he just silently hops across, and the paranoia. The Rolling Thunder should lock him up in place. Shiro gets that kill. Severine peeks off of it as well. Boom Esports returning the favor on these trades on contact. They had no idea Darion was there, but now they do. Spike stranded in the site. He's fault lined. And Boom Esports, quite frankly, no reason to peek out. Over, under, and right side triangulated setup here. There's going to be way too many targets for Darion to pick up. Oh, BlazKing's like, just in case he's rotated over. Oh, whoa. Darion. He's just going to run away, try to fake that out, see if they chase through. He's trying to capitalize on that impatience, but Boom. I mean, this time it's BlazKing still alive. Oh no, Darion gets a kill, but no time. And this was the setup. Shiro had already been running away to make sure that the round was secured. A little bit messy, but guess what? A win's a win. A win is a win. It's not just any win. It brings them to match point, but still, you have to think how crazy smart that was coming out from Darion. Breaking the door, try to sell a fake, and then also jiggling back and forth. So safe, so careful. This is what you have in the making of a great player. At the same time, though, with the way that Boom are working their way around the map, it's kind of smart with how they were trying to hold. You have to think the past couple rounds, just so much mental conditioning onto the A site just to set up on C. Well, Boom Esports, you've got the Seekers this time around. Can that come to... Oh, BlazKing! 5 HP. He's going to get healed up by the regen coming out from Berserk's Sky, and that'll top him off for now, but of course no armor left, only 100 hit points. And also, I mean, just given how Boom's economy looks right now, if they lose this one, we could very well be going into overtime famous. It all comes down to him. He gets the shot, he tailwinds away. And he's trying to fake out that he hasn't left yet. He actually gets a second through the smoke while he does go down. Enough damage done. Severine, if you can just hold time, it should be map for Boom Esports. But Bleed, they're opening up their options. They're creeping towards Tiny Door. They still have a minute. They understand this. They're not going to rush it. This is why Bleed is considered the favorites for a lot of people. They will not get impatient when it matters most. They cut noise once again. Slow creep in. Boom Esports. Everyone spread out apart, just waiting for contact, waiting to peek out when it's needed. The guiding light gets the tag, and there's the paranoia, but they all dodge it, and Darion will get the reverse peek. Only 30 seconds left. Berserks is just trying to delay the plant because they have B control. Oh, but this lockdown being used on stairs. Bleed, they know how desperate they need this round, and Boom says, okay, let's just give that up. No reason to rush in. Bleed wants us to come into the site. It's not impossible for a retake, though. They still have some pieces of utility to work off of. Shiro with the flashpoints. Now he's going in for it. Look at how far back Bleed are, though, and scary again towards Rubble. Yeah, he's going all the way back around in case they try to come at a different angle. But here we go, another flashpoint still left. Juicy gets one kill. Darion gets another, and Darion with 3 for the round. Boom Esports will not finish map point just yet. Bleed says we still have more Lewis to play tonight. Such an extensive setup on the A side. You watch it happen every single round that they go to this spot.
You have players watching out from tree. You have another one from the other side of the stairs. And then scary layers on top of layers. Despite such a good hold coming out from Famous, that one lockdown earned from the previous round that Darian had changed it all. The tides have turned. And again, this is that mental conditioning, right? That lockdown's used, and Boom says, well, they might be baiting us in. Let's not do this. Let's just, you know, reset, make sure we can group up. And quite frankly, textbook-wise, that was the right play. That was the right play, but they couldn't win the initial duels. Now, Bleed. They want to slow things down. And you mentioned this earlier. They don't call timeouts for nothing. This is how much it means to them to try to get that set point lead. As they try to push this into overtime, they don't want to waste this opportunity. However, at the same time, this timeout is one that Boom can use. Meow is communicating at the same time. The only thing is, they don't have the best buys in this final round, Will. It's overtime or bust. And Bleed can very well take us through. Well, let's take a look. What does the shopping result look like here for Boom Esports? Oh, just continuing on with a back-to-back timeout here. Of course, that can happen, so we'll have to wait and see what the eventual result is. But, you know, these are the situations where you're like, well, hold up. Like, what did we just talk about? Do we reverse that? Because, like, they were thinking the same thing. And you can see the players just kind of chuckling as well. I mean, we saw how heated Blaze King was getting. He wants nothing more than to serve the same dish once again to Bleed, to deny that opportunity. It would mean so much for him to continue on carrying his team forward into the grand finals here at VCT Ascension Pacific. Just think about it, right? Next year, if either one of these teams make it through, yes, we still have Scars on the other side, but what if you got Scary playing up against Talent Esports? What if you got Boom Esports playing up against RQ? There's so many storylines that we could write, and it all starts with this series, this round. Yeah, I mean, there's definitely a lot of personal history. And Scar's kind of the odd one out, right? They're kind of the new kid on the block in terms of entering this Tier 1 scene or even having a chance to do so. But of course, they're the ones who made it to the grand finals first. So we're still a couple steps away looking at the buys. Well, at least my favorite weapon is there, the Bucky, here for Blaze King. Wouldn't want it on any other player today. हेलो क्या अटका भैया स्ट्रीम अटका हेलो नेट अटका नहीं नेट से यूट्यूब The Guardian for Shiro, but his aim's been good, but again, doesn't look good. The Guardian for Shiro, his aim's been good, but again, when Bleed come in as 5, it's not going to be as useful. And Neff has a Rolling Thunder. Coach Meow, what did you say? What does Boom have in their bags? Can they pull it out right now? Because Bleed are coming to them with full force. Oh, well, Blaze King, he did get hit, but he's holding close. Meanwhile, you have Berserks pushing forward, trying to get contact with the Stinger initially. Blaze King is trying to stay alive. He's taking damage, but the Bucky just needs one hit close quarters. And Bleed says, hold on, we're seeing a lot of opposition. We know they can't do full buys. Let's not rush into this. Bleed, they're thinking 2 steps ahead. Oh, hold that. Famous is going in for it. He doesn't get the kill, but he's done a lot of damage. He can't quite get it afterwards either, but a lot of damage done over onto Neff, Crazy Guy, and Scary. They're now trapped in B. Meanwhile, Juicy, he gets the kill onto Berserks. He hears the rotating door. He's waiting for Severine, and he gets the kill off screen as well. Now it's just down to 3 members of Guardian, a Bucky, and Spectre. What can they do? On the side, Bucky with 1 kill, but Famous can take it down, and now it's all down to Blaze King. We are going to overtime between Boom Esports and Bleed Esports. Second series of the day. Such a big match. And you just have the coaches kind of fighting at each other as well. Bleed pushing us into overtime off of the timeouts. They knew they had the Rolling Thunder. They executed onto A just to rotate quickly on towards B. They pulled those rotations away from Boom. Yeah, Bleed just had the upper hand across the front here, right? And it all started with that econ management. Of course, they kind of had a good read on what the setup would be. Now we go into overtime. No operators to be seen this time around. But ladies and gentlemen, I mean, just to put this into perspective, it was 11-4 for Boom Esports.
Komodo's been standing by for the past 20 minutes to try to break down a round. He thought the game was over, but no, it's far from it. And once again, we start at full speed. Juicy, he hasn't been able to hold it, and once again, he cannot. The push from Boom is just too strong as Famous gets the spray transfer, clears out the site. He even goes all the way into heaven. He knows what the mission is. He is feeling it. Famous with 3 in the round already. The spike goes down. And Blaze King, he's returned. The alarm bot spots him, and he will clean it up. A flawless as we kick off overtime. Just stand up, you know, put your hand to your ear. What are you listening for? And it's those footsteps. I mean, as soon as Bleed tries to go in for their patented A-side push on the defense, it doesn't quite work out because you got Famous feeling awoken, fearless, pushing out deeper in. Now, can he do the same on defense? We saw him do it time and time again on the attacking half, but listen, that wasn't where Boom had problems. It was the second half. Meanwhile, this is also where Bleed felt rejuvenated, and Bleed says, all right, it's Odin time. Odin's on both sides, in fact. Now, this should give a bit of an opening for Severine, and this is why we see Boom. They're actually playing a little bit further off contact from Rubble. They say we don't need to rush it because we have Severine waiting in A link. The turret's still watching the entrance from B main as well. Oh, if you hear that tap. Oh, and he just goes for it, gets so much damage in. Avoids the Odin again, and he finds the tracers. Oh my goodness, Bleed. They're the ones bleeding right now in this overtime. Crazy guy down to 10 HP. Neff also quite scratched up. Juicy, no armor left. You're just feeling that pressure. You fought so hard for this moment, but then you got tagged up. A tiny mistake and you could just lose it. Darian trying to keep it together, pushing through, trying to eliminate some of these Killjoy utility presence. And they have to fall back. They're cutting noise again. Yeah, but this means Boom, they now know the game plan. They know that they could rotate, so they've already sent Famous. He's already cleared out Mount. He's already pushed all the way in. They still have Severine watching B as well. They know it has to be A site. The Nano Swarm now planted next to the rotating door. It's all about drawing out time. Severine, he creeps 45 and he sprays out for 2. You've still got 68 rounds left, and he goes for another, not hit by the paranoia. There are just too many bullets as Boom Esports clears the site, and they will be able to take the first map win. What is a reload? Just hold on to that Gatling gun, and it keeps Bleed at bay, keeps them bleeding. No recovery today. They almost made it through. They almost made such a big comeback, pushing us into overtime. But when it came down to that final round, oh, Achilleos is gonna have a field day with this one because you have 2 Odins sounding off, but then Boom are the ones getting the first wall bang. But we saw it right there. You have to have a game plan even if you buy the Odin. Severine had the angle ready, and he was ready for the counter spray through the wall as well. He followed the tracers, did so much damage, and then they sent Famous out to push out. This just showed us that after, when they were going into overtime, Boom had finally recollected what had happened in the second half. Where were we failing? Oh, we had no idea if they would rotate or not. So let's stop them in A, then check on a timing on C, and Boom Esports will close things out on Lotus. And that's precisely right, Will. The way that's precisely what that Odin was bought up for. That's precisely why we saw Famous pushing outside of C. And Severine's so smart as well. After losing that first bit of contact, rotating back just to watch in case anyone did push up in towards B. Such a match. What a series. And this is just the first match. Yeah, that's the crazy part. I feel like it's been an eternity. Yeah, I can. Well, only map 1 in a best of 3, but I mean, this is what it takes. If you want to ascend, if you want to take your place, you got to be able to persevere through matches like these. And neither of these teams are strangers to this kind of scenario, but that's what makes it an even better match. That's the thing, right? Both teams kind of battling their demons. You have to face against your past demons. You have to overcome them in order to ascend, and that's exactly what we're watching right now. But this is only map 1. We talked about it. There's still map 2. Before we go to that, though, we're going to toss it over to Komodo, who's been waiting up there to break down a couple rounds for us. Komodo, please take it away. Thanks very much, guys. Yeah, been waiting a little bit longer for that one, but a good game, of course. And now with this one, I want to show you guys at home the immense teamwork and communication to come out from Boom to utilize Famous
positionary on the Jet, but most importantly, Berserks with the Sky. So starting this one off here, what we're going to be able to see is on the round number 6, the light buy to come through from Boom with the blades that Famous is going to pop and the Seekers later for Berserks. But most importantly, as I zoom in towards the radar, what we're going to be seeing is where the guiding lights actually go with the smoke. So we're going to see a cloud burst go out here from Famous, and immediately that guiding light is just going to pop through the smoke to allow Famous to quickly get out towards rubble and take space towards the rotating door at tree. Meanwhile, as I play out this clip, we're going to see the first duel happen over in towards mid pillars, and we are actually going to see a trade come out removing Crazy Guy. So for Boom, they do not have to worry about his walls any longer in this round. Now, just quickly back onto the radar, as I mentioned, look who it is, Famous, already by himself, getting a very forward position. Moving on to a little bit later into the round, and we are going to see all of the Boom guys group up over towards the A side of the map. A fault line is going to rip on through to provide entry in towards tree, but what I want to highlight here is going to be up towards the tower. A start cover to go down, but just before that, we're going to see a guiding light be commed to go on through and pop just before the smoke blooms. Again, really great timing to come through on that one, and what that's actually going to do is force out the lockdown from Darion. On the back of that as well, Famous to just completely get in towards the site, take full control, and he's going to count 3 players on the side of Bleed over at this A site, and that is going to be one of the pivotal moments in this round for Boom, because that's going to, they're going to call the audible. They're going to realize that 1, 2, 3 players just spotted out. You see Neff is going to die, Darion's here because of the lockdown, and then Juicy was spotted on that updraft. And what that is going to entail is the kill for Famous, and now things shift for Boom. They respect the lockdown, they're going to maneuver over towards the C side of the map, but they're going to leave Famous here at A to shift onto a lurk for himself. So now over to the later stage of the round, where we get an open C site. Here's Famous playing lurk. Here is a guiding light once again from Berserks to go into the site. This one's actually going to go to Waterfall. A dark cover into the site. It's completely clear. And this is one of the differences that we do see when you're running an agent that can get some information as opposed to Scary Guy and the roster that Bleed are running with their agents here, who can't really get information unless they're putting bodies to the fights. Again, the flank from Famous is something that we're going to be seeing here come in. They're going to be very crucial. But as I zoom back in towards the radar, look who's flanking on the other side. This doesn't really matter in the grand scheme of things, because with the spike going down on towards default, we're going to have a paranoia and an aftershock extremely at the ready for Boom to protect the spike from going on the defuse from Bleed. Again, just really, really concise communication to come through from Boom in this round. And without the utilization of Berserk's flashes essentially in this round, times to perfection, I might add, they wouldn't have been able to get this round done on the eco variety. Everyone, thanks once again for joining me on the breakdown. I hope you learned something new here. But for now, we're going to look to go to a break, and when we return, more Valorant. At the world from the eye of the horse. If you Alexander the Great, then I am the Porus. Coming straight from the mud like I am a lotus. So हाथियों का बल कैसे सकेगा तू मुझे रोका? देख तू कैसे मैं लड़ूं, तुम लोगों से ऐसे ना डरूं. करूं मैं जिससे मैं तरुण, पानी पे चलूं मैं जिससे मैं वरुण. चाहे मैं जीऊं या मरूं, जो करना चाहूं मैं वही तो करूं. आता है तू ना करीब, तू बेटी चीप, जब तक कटे ना तेरी ये जीप. Better believe you're gonna bleed. Pick up a seat, get your team. I'm the king of kings. Mother and arms in a battle. You all gonna die if you act like a vandal. Bring the realms to reality from every angle. This is the public service announcement from Mumbai to the rest of the world. I am a Raja. I am the Raja. भिड़ेगा तो उठेगा जनाजा ना. तू मेरी तरफ आना. आ गया तो होगा फिर तनाजा ना. ये भारतीय भाषा फिर दुनिया सुनेगी ये तराना ना. 'Cause I am the Raja. 'Cause I am the Raja.
in my eyes, what do you see? I'm more than average, man. I'm a maverick, I can grow flowers on a barren land. Break a mountain with my bare hands and step back and cause a literal avalanche. Should've won about it traveling. Welcome back to VCT Ascension Pacific, and we are kickstarting today's series with an overtime. Honestly, it looked like it was out of Boom's control, especially on their defense, but they brought it back, taking the first map win. Now, gentlemen, I mean, we were kind of clutching our seats at certain moments during this game. Yeah. Wow, what a reaction. Yeah. To say the least. He's playing it cool. Because, I mean, it really looked like that they had absolutely screwed themselves and that they were just throwing, just choking as hard as humanly possible. It ends up going to overtime, but they clean it out, they close it out cleanly from there, is what I mean to say, by winning those initial 2 overtime rounds, not allowing for a reset. But that was a bit of a scary streak for a very long time there. It seemed like Boom, after getting to 11, just weren't going to be able to get over that finish line. Yeah, it just seemed like Bleed needed to warm up a little bit. The defender side was kind of lackluster. I really got to highlight Blaze King here, who was absolutely nuts on that on that attacker side for the side of Boom. He had 3 rounds in a row where he had the first kill. He was 8-1 on first kills total. Just absolutely disgusting what he was able to do on these just solo holds. I mean, a lot of times it was just at long C, but in other directions as well. Just absolutely phenomenal there. You know, as a killjoy, but really it didn't matter what agent he was playing there. It was just incredible the way that he was able to really give Boom those early openings, those early round wins that allowed them to snowball that first half. I do want to point out something that you raised in the green room at the halftime mark, Achilleos. What was that? It was the first time that we've seen Bleed being pushed. Yeah, this was the worst performance that they've had at a starting half ever on Lotus. They had never been pushed to that 4 and 8 kind of score line. Previously, the worst was a 5 and 7, but it only happened once. Every other time that they played this map, which is quite a many few times, it's always been a 6-6 or them in the lead. So this was a very surprising performance here from them to kick things off, to put themselves in that really big deficit. I mean, good effort to run it back, but as you can see, you know, some of their 4v5 conversions pretty decent considering there's 17 first kills for the side of Boom, and still Bleed managed to pick up 12-round wins here. So decent 4v5, but so consistently are they playing without a player, and that is not good. Right, exactly. That's what's concerning me here for Boom going into the next map, a map that nobody wants to play Bleed on, that Bleed all-time is like 91% on. They've only lost it once in 2023, and that was to Scars in overtime in this event. So certainly this is concerning, but the only thing that concerns me about Bleed is the fact that they went for that force buy on the second half. I think that actually is what pushed this into overtime and allowed Boom to get the win. If they don't do that, who knows? You know, the butterfly effect and all that, we don't know for sure what could have come through, but I think that Bleed might have been able to take that map and therefore gone into Pearl with that extra wind in their sails, and then maybe you don't even have to go to map 3. I mean, for Boom as well, I think that them finally being able to lock down at Lotus saves the series for them, because if Bleed come away with Lotus, just given the win record that we have been seeing from Bleed, their dominance on the map overall, you would suspect that this now becomes a 2-0. But now I think that the hype, the expectations of going to 3 is very much alive, so we could see that final map come through at the very end. Could be a very long day for us, but given the excitement levels that we've been experiencing in the green room, that the crowd has been experiencing out here, because good lord, they've been losing their minds. Oh God. It was insane. It's so worth it for us to go to 3, and it would be a great way to go ahead and cap off these semifinals. It's been absolutely infectious. We can hear it all the way backstage, how hyped the crowd is right now for these games. Look, I'm glad that Famous finally stepped up on defense. He was not looking too good, but in that overtime, that very last match, last 2 rounds. Yeah, crazy performance from him. I mean, that dash in, spray down 2, updraft, dash again to get himself situated all the way back around towards the defender spawn. Great mobility and just great reactions being shown there from Famous, who in his own right also had just a stellar performance. 5 and 2 over when it came down to those first kills, first deaths. So he himself also having an incredibly strong performance. That impact was felt from pretty much the outset. Even at the beginning of the map, it was already a really good showing from him as a Jet, and it took Juicy a very long time to catch up.
Yeah, it was a beautiful play, and honestly, a great way to end out that first map. And look, they're going to need that confidence, that momentum going into Pearl. Like you said, this is Bleed's map. Like, no one has defeated them on this except the one time by Scar. So what's it going to take for Boom to, you know, take it away? You can't be throwing these rounds where you get the first kills. I mean, you absolutely cannot have that happen on any side of the coin, no matter what the situation is. You know, especially with Blaze King being as dialed in, as fired up as he is, you cannot be faltering in those situations. So the protocol's got to stay in place. You know, a lot of times you were giving the opportunities for those multi-kills. Now, granted, again, once Bleed kind of started to come together, the utility started to flow together and all those other things, they played really well. So I don't think there's anything out of the ordinary here with the agent selection, except, oh wait, no, there is. Boom is grabbing the Harbor and the Killjoy here, but anyway. They have been showing it to us. So they have some reps with this Harbor in the composition, so this isn't the first time that we have seen this from the side of Boom. But the question is it going to be good enough to take down Bleed, who have been so very consistent on this map? They have their work cut out for them, but Bleed have been shown to now bleed. They have been defeated on this map. It's now known that they are not immortal. They can be defeated. The question is, has Boom studied that tape and seen what Scars was able to achieve on this map to then try to take them down? Because remember, Scars, obviously, you know, you have a very different composition coming out from those guys when they play on this map. They have that Phoenix from Crystal. Right. We're not seeing that here from Boom, so some different tools to work with to still try to get the same results. Yeah, I mean, again, it's kind of the new meta, you know, comp for the Pearl, for the side of Boom versus sort of this very unique Reyna, Brimstone, and the Sova that comes in. So it is very unusual for Bleed, but that's part of what makes them so successful. And Juicy's Reyna is something to be feared, no doubt about it. The Brimstone gives you a lot of that post-plant presence, kind of similar in a lot of ways to like if you have a Phoenix with some of those mollies and those kind of things, but it's the extra layer of smokes as well that he brings in, you know, instead of an Astra maybe, right, for that post-plant kind of situation, you're giving yourself a slightly different variation of it. You know, no gravity wells, but you have the molly and the orbital strike then for the ult to really give you a lot of presence in those post-plant scenarios. So really, really excited to see Bleed once again on this map. I think, you know, this should, I would assume, bring us to map 3, but you never know. Boom was, you know, really coming out the gate swinging and managed to kind of resolve their issues at the end, right when it mattered most in overtime. Yeah. I think at this point, especially going into Pearl, it's going to be down to the coaches if they've done their homework, if over watching both, you know, the opponents, their strategies, weaknesses, and what Bleed has been doing with their double duelist strat. But with that, I believe we are ready to go. We're going to go over to our casters, Quack and Will. And because it's so hype right now, we're gonna stay at the desk. Yeah, we gotta wait a little bit here. Just a little bit of a tech thing going on here, guys. So we're getting into it. We're get everything fixed here quick. Sorry about all this. Hold with us for just a moment, everybody, as we get ready for this match. But man, so much pressure here for Bleed now. I mean, to think that, you know, the one time that Boom beat them, again, was LCQ last year. I mean, when it mattered the most, would Bleed crumble. You know, that sure, they've been defeating them in some third-party tournaments and other moments, but now, once again, Bleed is on that precipice of potentially being knocked out by this Boom team, who just seems to be able to come over the line when it matters most. I mean, when it comes down to just denying them access to Tier 1, it seems like that's when Boom is able to rally up, but we'll see if they're going to be able to get it done. This is going to be the big test. They barely managed to get their victory on their map pick of Lotus. If they can do it on Pearl, they absolutely deserve that spot in the Grand Finals. That's right. This is the make or break moment. If Bleed does not step up, take this Pearl map, that is it. End of the road for them. But we are going to go into map 2 now between Boom and Bleed. Let's go over to our casters, Quack and William. Boom, they close it out in map 1. Can they continue the momentum? And guess what? I know everyone says casters start game, but we can only do so if the desk gives it to us. So now that we've been given, you know, the authority, we should be able to jump right into Pearl here on map 2. Are you pressing the right button? Because we want to get in. The fans here want to get in. Yes. Everyone watching from home wants to get in. Because
this map alone is hype, right? This whole weird Reyna comp, Bleed's been so successful with it. Yeah, the fans really love to watch the double duelist composition coming out from Bleed Esports, right? You have Juicy on the Reyna, Darian on the, of course, the Jet, and there's just so much that they're doing. And it's precisely because of how Scary supports them with his Brimstone, the Stim Beacon, they rush down B-Long, and it works out so well. However, now that we've got Boom Esports coming into the fray with their own double controller setup, it's the one that we've seen so much throughout Pacific. You got the Harbor, you got the Viper, it works out well. I wonder if either team is ready for this, because first of all, while the whole, you know, Boom versus Bonkers game was going on yesterday, where they did play Pearl, I must remind you, yeah, Bleed was in the crowd. They were watching. They were watching. It was Darion's birthday, and he was still here watching. Because he loves Valorant. Because he loves Valorant. He said it so himself in that pre-interview today with Mac, but let's wait and see. Did watching that game really bring Bleed prepared here? Now, I mean, this is one of those compositions where, you know, you can say you studied it, but you don't really know what that tempo feels like until you face off against it yourself. I'm curious to see what Boom's ideas are here. Now it looks like we do have the toxic screen, as we often do, over on B, ready for that retake and to deter a little bit from Boom and the Harbor to potentially push back out of A main if they see some aggression. And that's what they're kind of positioned for. Bleed, on the other hand, though, we've seen their attacking side. Oftentimes it would be the B-Long, but now they're in towards B main, just taking it slow, gathering information. The air is tense, Will. Yeah, and the drone gets the tag right away onto Shiro. This actually draws Famous away from B for a split second. Boom, they react a little bit haphazardly, but they say, okay, well, we haven't heard any further utility. We haven't heard any footsteps. They actually push back out with a guiding light, and this gives Boom Esports the information they need that it is very likely either an ARC push or B. Well, BlazeKing just got contact. Oh, the toxic screen on top of the snake bite. I like this adjustment, right? They say, okay, well, they could always just rush in with the Reyna. So let's make sure we buy time 100%. Now just waiting around the corner, but Bleed are tagged up. Oh yeah, Juicy's way too weak, and it's a clean shot. Another shot coming in with the right click from BlazeKing. He does have to reload, but the mission right now is to stay alive. The heals coming in over from Berserks, and Crazy Guy, he cannot get, oh, okay, he's able to adjust, but Berserks whips out his own classic right away. The spike never entering the site for a second here from Bleed Esports, and Boom. The answer so far looking quite promising here in the pistol round. And just with 30 seconds left, again, they cut noise, then they go back in. Boom are quick to jump peek to gather information for this hit. Yeah, Neff, he does creep back in, but there's way too many angles. The flash is good as well, and Berserks peeks off of his own pop flash. He's a little weak, but Famous with the Sheriff picks off Scary, and Boom once again leads with the very first pistol of this map. And it all starts once more when you have how the map is being controlled. A bit of presence towards A main, and then just Bleed going back to their old B-Long default, right? They rush down this one spot, but this is precisely why you have players holding up close with the classic coming up from Boom. They were waiting for that push to go through, and then they struck just as soon as they tried to go close. Well, we do see that Marshall buy coming up from Darian, trying to see if he can make anything happen at long range over here by B. Now it is just going to be Severine, so if he gets picked off, it would spell a little bit of trouble, but he is just going to run away. He says, I do not want to get contact when I'm left alone, potentially give over that Spectre. Calls BlazeKing for support. The turret's still watching B-Link, so Boom Esports, once again, really nice coverage of the map. They just cleared Art as well with mid, with the guiding light. And now we just see all that utility once again being piled on, so they cannot try to rush through the toxic screen. They now hear the Marshal just firing off on all cylinders, but it's not finding its targets. There was a bit of a guiding light from Berserk just to clear out Art as well. And Bleed is nowhere to be found, right? So I believe that Boom Esports can confirm that these guys are still somewhere around the B-Long area, maybe rotating back and forth. And as time passes, your information goes bad, and that is why it comes down to how Famous holds down on the A site along with Shiro. You gotta jiggle peek for this, you gotta hold the angle. In fact, the angle that Famous is holding is one that Juicy has held before. Yeah, now here's the thing is that Shiro can't just watch A main for him, right? He is afraid of that sewers mid push because they don't have a range anymore. And that's exactly the timing that Darian finds.
No coverage for Famous. Bulldog now dropped. Shiro, he's trying to hold on to the site as best as he can, but he's already way too weak. He's been tagged up. Severine does come up in time, though. So no weapons being given over onto the side of Bleed. Berserk's finding the kill as well. Boom Esports, they still have a decent chance to recover. Oh, a nice shot scratches him up, but it's not a headshot. And oh, that one is scary with the classic. 1v2, he picks up a Spectre. The molly has landed, bought him time, but he's not quite sure where Blaze King is. Just trying to draw them out, waiting for the peek. The pop flash is good. Scary hides away. Oh, and he cannot find the tag. Blaze King with a nice angle will pick up the headshot, get another point towards his Viper's Pit. All right, not a bad start. Oh, never mind. Yeah, gives it over to Berserk's. Yes, because he is closer to his ultimate. I guess the Viper Spit is something that, oh well, no, the Seekers is a little bit easier to obtain, but that is not the cleanest of rounds, right? You know, you're starting off round 2, it's a good win, but you lost 3 players in the process. Should have been cleaner, and that comes down to the positioning that Famous had. You were talking about it, Will, and it was a little bit too far out in the open. You leave a main way too out, and it's left unchecked. So moving forward, Boom needs to correct some of these mistakes, or Bleed just continues to overrun them, given how they have the full guns this time. Yeah, I mean, this is something that we've seen in the last map as well, but we'll break that down when the action dies out, because already Boom wants control of this ult orb on A main. Once again, they cannot secure it. The early drone constantly being used over from Bleed. They don't mind investing the 400 credits right off the bat to push Boom back, to pick up that ult orb themselves. Lear potentially at the ready to break into the site. The ISOs come down. There's the Lear, there's the recon. Both the site has been cleared out. Boom not taking any chances. And Darien just sprays right down from the roof of the site. And that's an early kill. First kill going over to Bleed. Boom already on the back foot with the weaponry. Darien now has already pushed down into Secret. Holds a close angle. And it's something that the double duelists are so capable of as well. But a sudden swing out from Blaze King. He finds one, gets traded by Juicy. Yeah, I mean, this round, again, for Boom, it's just about doing damage. If they can get one more, and they do, in fact, they'll be able to do some more damage. Of course, Spike was planted, so Boom just wants to get whatever more they can, and Shiro's going to go down to that shot bone, and here comes the molly. So Famous, he knows he can't do anything. No, you can't shoot that one. That's not a molly you can shoot out. Oh, no! Steps on the molly once again. All his shoes have been burned down. He wants an exit frag. Oh, the turret! Okay, that's going to have to push him away. He does get that Vandal, though, right? So he's going to be able to carry that over. Sure. But still, I mean, you could see in this round the confidence from Bleed just to rush down the A site and then to go even deeper in towards Secret. We've seen this hole before. It works out very well because of how they can, you know, watch each other's backs. Derek can tail in away. Juicy can always hold. And if he gets a frag, then he'll be able to dismiss. There's so much that they can do, and it comes down to how Boom really plays around it. Now that they have the buys, this is where we start to see the game get real. Yeah, and it's an early buy for this operator on Famous. So, Boom, this opens things up a lot more, right? You can now hold on to B long with that operator. Draw out this drone early. They've been doing it constantly. Shiro does have to back out, but this time, hopefully, Boom Esports has a better idea of how to hold on to the site. You've got that Nano Swarm to stop the Reyna. Sure, the Jet can jump over it, but now a Nano Swarm right next to Default Plant as well to stop the Jet of Darien. Still, though, it's just that tiny bit of a moment that Bleed can capitalize on to rush in. Yeah, it's trying to scan them out and tags 2, but doesn't quite find the kill. Darien, meanwhile, trying to push him out of bunker. Berserk's right hidden in the back. The vulnerable. Okay. Berserk's good for 2. Severine's still alive. He's avoiding a lot of the spray. Just gets scratched up just a bit through the wall. They're not quite sure if he's still there. And oh no, that's gonna actually do a lot more damage to Darien. So Scary, as he's trying to fish for the kill, puts his teammate in danger. Now he's left all alone. 1v3, Blaze King, the only one with full health on the side of Boom Esports. We have to remember, Orbital Strike currently available. If Scary can get another kill, there is a very good chance he erases one side with his ultimate and can isolate that extra 1v1. He's just trying to buy time. He's trying to see if he... अबे ये तो टच यूट्यूब जैसा स्लो तो नहीं होता, आगे सीधा स्किप होके देखने मिलेगा. Why bro, why? Another kill. There is a very good chance he erases one side with his ultimate and can isolate that extra 1v1. He's just trying to buy time. He's trying to see if he hears any movement, you know, about the potential rotate. But Boom, they say, well, we've
We've covered all our angles. No reason to rotate early. If he goes all the way around, so be it. And this is the evolution from Boom as well. A team that's known to be so explosive, a little bit unhinged sometimes. They found this control. They're playing disciplined, and I love that from them. Scary still trying to fight against all odds, but now that the timer's burned down, he just sticks in for the plant. And he does it right at, oh no, it's not going to be enough. And Blaze उसको लगा rotate कर लेंगे यार. 4.0. He's just a millisecond off. And he's already late on the plant and even gives over the kill to Blaze King. So not quite working out the way Scary wanted. I like the idea of the mind game, but really it's sorry Berserk's getting that double kill. Yeah, just anchoring down the site, right? You send out that hawk into its A main, you get so much information off of it, even breaking the drone as it pushes through. And you're just prepared to mow down anyone who dares peek out of A main. Yes, it was a good hit. Yes, there was a Hunter's Fury. But if you don't get tagged up by it, then you're good. Now it's just going to be a cascade, actually, instead of the high tide, and they want to keep that on the cooldown. They know this drone keeps coming out, and they just bait it out. Boom is starting to evolve off of the defaults coming out from Bleed. Now, of course, just a bit of a half buy here. 3 rifles, but Bladestorm available, so that's 4, quite frankly, available. Oh, he falls down. He goes way too far forward on his own. No backup. Right in the middle of the map. Gets surrounded. And he does fall down, so now that should be weapons in everyone's hand. Well, actually, Crazy Guy is the only one that's left over on A main, so he can't pick that up. But his mission right now is just hold to that space. Yes, and that gives them the A split push, right? I mean, this is Bleed adjusting as well. They weren't anticipating that it's going to be that lurk coming out. Still, though, pushing through. It's going to be Darren now going in for the right click. Oh, the right click's good, right? As you saw where the Seekers were coming from. Once again, they're trying to take site control. Severine, though, he's been troublesome for them, but Juicy's already hidden in the Sky Smoke. Dismisses out to safety once again. No. Oh, but the timing on the Empress Juicy had his arms held up high as Shiro said hello. Gets the double kill around the smoke. Oh, Famous with a pick off at long range. Now the orbital strike will deny the first attempt at the defuse, but still a decent amount of time available. The Molly going to be shot out early. Scary, he just wants to get the 1v1 and he cannot do it. And more than enough time for them to climb right back in at the end of this Molly. It's going to go over to Shiro, who will be able to get the reckoning online. An expensive round for Bleed, and one that kind of turns the tides because now Boom gets to bring off a bit of a reckoning of their own. Shiro now earning that ultimate, like you mentioned, Will. It's the way that they play around it, and of course Shiro just being able to come up with those 2 big double kills. Famous with the angle as he tries the entry around the road, the retake. Bleed, they know how to take sites, they know how to go in aggressive, but still, now that Boom are trying to play a little bit faster with how they come in, I don't know if Bleed are prepared for it. Quite frankly, they haven't found the answer, and now they're going to try to switch things up, maybe put a little bit of emphasis over on B. Now we do notice just a Guardian in the hands of Juicy, but sometimes on the arena, all you need is that first kill. Now we'll have to keep a note of the fact that the operator now being held on Art by Famous. So a bit of a setup switch here for Boom. Guiding Light being supported there. That allows Berserks to rotate over to add a little bit more weight on the B side. Which is why there are players heading over to reinforce. Famous having to anchor down Art. Anyone walks his way, he has to land that shot. Otherwise, they're going to lose this one entrance and potentially connectors through to B-Link as well. He also has to consider which way he's going to exit. Is he going to join a main? He does get the first kill, but that should give him a little bit more breathing room to hold on site for another shot. And the cascade actually just completely denies any possibility of an A split. I love the heads-up decision here from Shiro. Now that pushes him over. The turret gets contact on B-Link. But Boom, yeah, they just say back off. All we need to do is buy time. We have all these ultimates. You've got the lockdown. You've got the reckoning. The lockdown, in fact, to deny the plant. Can Bleed get rid of it? I don't think so, but they will just go for an early plant right in the middle of the site. It will complete, but they have to exit and not in time. Severine says hello from behind. And the Reckoning chasing them forward as well. Crazy Guy, he wants to try to deny the defuse, but he's sticking its way past half. Severine, he's just gonna stick with it. No, Scary denies it just in the last second, but already half done. 4 members still alive for Boom Esports. Scary, I don't know, you might be the hometown hero. Okay, the Molly evens it out to 1v3. He finds 1, he finds 2, can he get the ace? Famous, he lets go, he thinks he's gonna peek again.
Oh, and the jump, it's keeping Famous on his Ish. toes. Scary with the mind games, just playing for time. Famous, you have to. नहीं but clutch नहीं. Does he have enough time? Woo! In the 2 seconds, he will secure it. Mind games on top of mind games. A way that he kind of just, you know, tried to stick onto it on and off. Scary getting in a couple of good shots. जब wide चला जाता भाई तो. But then in the final moment, just crouched down, lands the shot onto Scary, denying any joy from Bleed. I have to think about it. Is Lagina going to call timeout anytime soon? You have to. Because here's the thing. I mean, Scary did the impossible. He gets the kill with the molly. He already threw it down, and he's able to get the jiggle peeks to isolate the 1v1s, but Bleed says no. No, we're going to keep going. Now, of course, not a full buy round for them, so maybe it'll come around the next time. That orbital strike in the hands of Scary off of those extra kills. Darion can't find the first kill for Berserk. He's trying to escape. Okay, okay. भाई highlight चल रहा है ऐसा लगा है. 4K, 3K. Not in time, but Famous will lock down A main as well as Spike stranded. Juicy, only one leer and a sheriff to his name. Is it gonna be enough? Severine's just trying to cut noise. Juicy has no idea. There's the headshot. Quack, Bleed is crumbling right now. Wait, चालू हुआ क्या वापस? On Pearl. One tap, one kill, one round, one more for Boom. And yes, it is crumbling, Will. Our family has been through a lot together, but I can still feel something following. ये लोग कब साइड देने लग गए भाई? Our family has been through a lot together, but I can. Our family has been through a lot together. Boom Esports, they seem a lot more relaxed. They're like, okay, our prep is working out. Meanwhile, Bleed's like, where do we go to find this answer? That's the thing that they have to think about. I mean, so far we've seen insane performances coming out from Scary. Yes, a little bit of Darian and Juicy as well. It's very clear that Bleed, once they get the spike down, Juicy as well. It's very clear that Bleed, once they get the spike down, it's a lot of post-plant maneuvers, but it needs to be a little bit more than that too. With the way that they make their way around the map, it's a little bit slow, it's a little bit careful. It works out good, but when Boom are that much prepared, you're gonna have to find something different. Okay, so quite a different setup here coming out from Boom. Now they're prepared for this potential lockdown from Neff if he picks up the ult orb. We see the nanoswarm being set up off the map here. It got shot. Yeah, it gets cleared out, and Blaze King says, okay, well, we'll put up the pit. Now, can he keep the toxins up long enough, though? There's quite a distance for him to exit away from this lockdown. He's been sprayed down as well. I don't know if he's gonna have the timing because they can already enter early on enough. The spray down is pretty good, but Darion barely escaping the toxins in time. Now a lot of his health will come back. Okay, the site being taken over by Bleed. Neff, he just goes for the check. He doesn't want to commit too much. Orbital strike is Scary with a double up in heaven. They didn't have an idea of where that was landing in time. The sky smoke was just too strong to deny that vision. And now just down to 2 members on the side of Boom. Operator in hand, he does have the Blade Storm, but I don't know if you use it right now. You're quite far ahead. Perhaps it's just better to make sure you can continue this Operator forward. Lead already has a really good post-plant setup. Shiro's trying to, okay, Famous good for one. Opens up the timing for Shiro. Sprays. Picks up another gun. Currently for Shiro, if he can just even take the weapons away from them, that alone will be damage enough. He's gonna find the first kill. Scary's weak. He's gonna try to stick it, but it's, oh, the molly lasts for a little bit too long. Shiro takes too much damage. He's just trying to draw him in for the extra kill, yeah. Otherwise, Shiro will just go भी नहीं ले पाया. pick up the operator. Link जाता तो ऑफ ले लेता. Of course, enough credits in the bank for Boom Esports, though. And with that, just maybe a bit of a lifeline. They get to go on through in this first half for a couple more rounds. Boom has already secured their 6, so they're looking pretty comfortable, but you want as many as possible. And that's why I feel that this setup, this play with the Viper's Pit might have been a little bit too
overly hungry. You know that lockdown was coming through. You know that you heard the shot onto the nanoswarm, so why stay in it a little bit longer? They managed to decay them, get a couple of shots in, but that was about it. And again, those post-plant positions, so darn good when they play so far back, so safe. Yeah, well, now they say, okay, well, let's go back to what's worked. Put the operator over on B long, push out of A, the deep cascade, the Trailblazers to follow through, and Boom Esports does have full control of A and Art. So A split push, not quite the option. Guiding Light, no tag just yet, but Bleed was also purposely hanging back. They're waiting to see if that, lurk comes in a little early from Blaze King like last time. Yeah, and then he got punished. This time, though, cutting noise, going slowly towards A. It comes down to Sheer on how well he jiggles, how well he stays alive. And then a little bit of presence towards B. Oh, the drone slowly fake out. making their way through. Yeah, they always use the drone on A main, but this time they save it. They come back to B. They use the drone. Now, of course, they don't spot Famous, but that draws a lot of that weight away from Boom. However, as Bleed likes to do, they cut audio, and that bought a lot of time for Boom Esports to be aware. Bleed, do you understand that there are 4 members of Boom, including an operator, waiting here on the site? There's the Cloudburst and the first kill onto Darian. The entry will be slowed down. In fact, it will be stopped. The Reckoning to stop them in their tracks. Scary tries to creep in, but he's already been tagged up. He goes down to Shiro. That's already 2. And Crazy Guy, he pops. Oh, Hunter's Fury. Okay, he gets a kill, but it's already a little too late. Yeah, he has to check that. Yeah, he's not sure if they already pushed forward. He checks Severine. He's going for the spike, but Severine's just trying to draw it. Oh, no! Severine gets it a bit too far, but Shiro, good for the headshot. I got a little bit worried. There was a crossfire setup, but then Severin peeked out. Thankfully, playing off of contact, they still managed to secure the final frag. Such a good round from Boom. I mean, you talked about the cutting of noise. It is silent, and silence sometimes is deafening, Will. Boom, they make presence, they recognize the rotation off of that, and as soon as this operator was put in place on the A site, it was pulled in for full effect. Every single shot just kept Bleed a little bit further apart. The Reckoning as well just made it such that they have to keep moving around on their toes. I mean, I love the commitment, right, just to secure the rounds here from Boom Esports, and now a little bit of a switch up for the operator. However, okay, well, that's a nice kill. Okay, I was going to say the Killjoy and Viper still double stacked on B, so it's not like B was kind of an open site. There's that snake bite again, and Darian, you can get over it, but your teammates can't. Of course, right now they're not quite grouped up either, so the Jet just Seekers. gain some information. Seekers comes out. Late. And they know, Yeah, उसने clear किया उसके बाद ही went there. One still lonesome one going all the way to B. Although this is a lot of information off of the ultimate, what they can confirm is that Bleed are indeed playing so far back, they haven't quite committed to a site. Of course, Darian, cutting noise, still around B long. Comes down to Severine. They have players in place for this. Boom are ready. Yeah, no, they did draw out the early snake bite, so that's why they think they have an opening, but the alarm bot buys enough time. There's a nano swarm in B hall, though. Oh, Darian with a nice early kill. However, they haven't checked the left corner on the screens. Severine gets 2. Darian finally realizes his mistake, turns around, but Nev deep into the site towards enemy spawn. And that will be the spike planted. 2v2. Blade still in the hands of Darian. He also picks up a Vandal. Both of them hiding. Oh, Darian just going for an early peek off of that turret. The high tide cuts off B hall. Boom Esports, do you start to creep forward? Do you go for a pinch? The pop flash doesn't get the tag. Berserk, he goes one hard swing after the jiggle. What? He gets the second as well. And Berserk keeps Boom Esports way far forward with an 8-2 scoreline here in the first half. Such movement. I have to see that from his POV. Berserks. Just a tiny bit of a guiding light just to bait them out too. I mean, if he got the flash, that would have been great, but if he didn't, just jiggle back and forth around it. And then the white swing, a full commit. And he makes sure that he gets the perfect shot. A great retake, a little bit scary, a little bit overheating from Famous perhaps, but Bleed still. That insane shot with the Blade Storm from Darian opens up the site. Man, Juicy आज ये मैच पे Juicy so indomitable with this composition. Juicy मारेगा तो जीत जाएंगे. They need Juicy to pop off. भाई OG के सामने Juicy ने अकेले पेला था भाई. Make sure that this composition is retired because currently it's looking like it.
It just doesn't have the utility to break down. The counter utility coming out. The snake bite once again. Darian's the only one who's able to make it in safely. Juicy will just walk across. He does pop the Empress so that if he gets a kill, he'll heal right back up. The lockdown, it's gonna shove them out once again. Darian just wants to wait as long as possible. And then they just play post-plant. Yeah, they will all make it out safely this time around. Okay, early Nanoswarm draw out though. Darian! 2 taps, 2 kills. Shock boats, damage already being done. The Molly still in the hands of Scary. Oh, Severine does get the counter kill though through the smokes. Molly's on its way down. Oh, Severine, he's come through. He gets the spot and he gets the kill. Can they stick it to the half? Severine goes down, the Empress to push forward. But the COVID just goes down as Shiro gets 1 kill. Once again, Shiro versus Scary. Shiro, he's just gonna try to stick the second half. No! He cannot do it. Scary with the mind games once again in the 1v1. And Bleed gets a 3rd round. It's that surmounting pressure, Will. You feel the spike timer beeping, beeping, beeping in your ear. And you just think, do I stick onto it? Do I let go? Because I know I have my opponent staring right in front of me. And when that opponent is scary, you think twice. Such a good execute coming out from Bleed. A sudden change in pace. They take the side in full. You might think that, yes, it's a bit of composition diff, but also just how well Bleed actually truly plays off of their individual firepower sometimes. Yeah, if Darian can always be good for the first kill, Juicy, he can start to creep around these snake bites over on B. So they're trying to force some default changes here from Boom, and Boom will respond in kind. Oh, a nice tag early on, though. Okay, May's been taken. Yep. Severin. Okay, Severin, he's hiding inside the smoke. They're trying to check for it. Oh, he gets 1. He ideally would have liked more. Oh, but Blaze King with another judge. He gets the 5 down. Okay, never mind. Juicy. Net finally getting the trade, but no, it's Berserk's already here for backup. Blaze King bought so much time. The Reckoning will deny the spike away from Crazy Guy. There's just too many angles. And Boom Esports, they will clean up the first half 9-3. That's the second 9-3 that we've seen today. Maybe even a little bit more, but still, I mean, given the last thing that Bleed expected would have been the judge. I mean, you start things off with the guiding light, you get information, and then rotating the way around it. They had no idea that this was about to happen. They had no idea that Blaze King would have been at the end of that alleyway. Man, and just getting the flying jet right away first, right, buys him a bit of extra time to reset for the second kill onto Juicy, and that meant all duelists down. The rest of Bleed had to rush to try to go for the plant. We shall see if Boom Esports can continue on with this momentum to take down Bleed 2-0 potentially. The Wolves, Boom, they've devoured Bleed once before. We talked about this on the desk. This is a bit of a grudge match between the two orgs. Last year, it was that team. They beat Bleed, they knocked them out of LCQ, and then secured their spot in towards Champions Istanbul. And this time, just when Bleed thought they were safe enough, they beat Bonkers. They beat their way through on towards playoffs. They secured the top seed from their group stage. Are they truly gonna get knocked out in this moment? On their strongest map as well, with a composition that only they've been able to master. And now the cracks are starting to show. Boom Esports, they're not only saying we don't want to meet you again, Bleed, but they're also saying your comps, it's not good enough for this stage. We'll see if it holds true in the second half. We've had fans on both sides just cheering their hearts out, but of course, currently all the energy over on the Boom Esports side of this arena here in Bangkok, Thailand. Boom Esports only a couple rounds away from making it to the grand finals to face Scars for that shot to take their place in VCT Pacific. Second half will begin. The Pistols as Boom Esports rushes forward on that attacking side. Yeah, moving a lot faster. The Wolf Pack, they continue to stride down B alley. And then, of course, you got Crazy Guy just trying to bait them in. We've seen this before when their game against Bonkers, because they know how these spike plants are set up and they just wait for it. The counter arrow is way too good, and Bleed just get easy pickets as Boom Esports cannot
make their way into the site. Oh, yeah. King, the only one left alive. His shots are still clean, but there's still 3 more. Now just waiting for the sky smoke timing. And Bleed, they have, oh, they should have had the timing advantage. Oh no, they're trying to peek out one by one. Blaze King waits, he's trying to bait them in. Trying to create the 1v1s. Bleed, they calm things down. They realize that they were trying to rush into this. They do not have to, they have the spike down, in fact, towards their own spawn. Toxin screen down. Bleed just trying to double up. They are not, they're not at full health. The recon bolt does get shot down, so they know Blaze King is still here. He did not rotate. Time-wise, he has to commit. They're trying to go for the double swing, and Crazy with the jiggle will get the headshot onto Blaze King. Try to climb back as they get their 4th win. Just came down to reactions. I mean, great attempt from Blaze King, getting a couple of frags, but then it's the exact setup that I was talking about from Bleed. Just getting the contact and then running all the way through. Your teammates are already there. It's just rolling out the red carpet out from Boom Esports. They played this specific setup kind of against Bonkers as well. There's so much that they can do with Crazy Guy's recon bolts. Yeah, exactly. The counter timing there with the recon, just to gain information on that dash in. That is indeed a shark. That org does not play in Pacific. But now, Bleed versus Boom Esports. Continuing on as Boom, they're back on pistols. Just trying to creep forward. They'll try to do whatever damage they can. They seem to feel confident with the round lead they have. And the site not quite giving up as Juicy gets the first kill. He will dismiss out the Lear. He realizes Famous is now trapped in the site. Second Lear waiting for the timing for his teammates to show up. Okay, it's used to reposition because Darian now able to hold the same position Juicy was earlier. Oh, that's an Ares! I mean, the Sheriff's got some decent wall penetration, but the Ares will do one better. And Crazy Guy's waiting for the flank as well. I mean, I've seen this setup from before from Scary on the squad. But just thinking about it, is it a bit of revenge again from the Lotus map that they just played? Wall bangs. It is good, especially in this spot on the A site. I mean, that's the thing about Boom. You mentioned how they looked confident just to go in for it. They have those round leads, but if you think about it, these guys need to be careful not to overheat. Any single round going Bleed's way counts one more towards their comeback. Absolutely. I mean, sure, Boom won the first map, but it wasn't exactly pretty and clean. So Boom Esports gonna have to calm things down just a bit. An early tailwind from Famous to make sure that there's no contest for that A main orb. Shiro and Blaze King both 4 points on towards their ults. Of course, Shiro gonna get it one step earlier, and the Reckoning will help clear out the sites for any type of execute. Yeah, wanting to make this full buy count. But look at all that Killjoy presence too, right? They have to clear it and then maybe cause some questions, some rotations out from Bleed. But they have to be so careful about this as well. They hear that turret, they flash it, now going to take it out. Neff is already rotating, calling his team as well off of this. Oh, but now they're going to be concerned about Crazy Guy, which should set up Darian for a potential kill. He's waiting. The Trailblazer passes him by. Ooh. It's just going to run right on by, and Boom Esports says, we don't want to deal with this. Let's fake them out. We have mid control. We are holding our spawn as well. There is no deep flank. They make it all the way through ours, and this should be an easy plan. However, Juicy, he's just waiting. He's making sure he keeps control of that site. Clear to buy time for his teammates to come in through flowers. They will be able to flood the site once more. The Lear to continue pushing forward. Juicy's holding the close aim. Panic कर रही है इस time. But no, he has to turn away. And Famous gets the first kill, half done on the defuse. Darian trying to answer back with his own kills, but Boom Esports stays one step ahead. Darian, he's only got the op 1v2, but he's coming from behind. Severin has set up this flank a long time हो ago. जाता भाई देखना वो थोड़ा सा ज़्यादा aggressive push कर गए Boom Esports with 2 ही तो 10 बचे थे rounds, ऑफ भी 3 5-round के बाद lead here on map 2. Double digits earned. वो थोड़ा ज़्यादा push कर गया उन्हें लगा वो fake करके हट रहा है Carried weapons over from the second. Now they get to buy up in full. And you have to watch out because I think I saw an nice Odin. try though. And thinking about Juicy's positioning, he didn't really make मगर ये his defensive presence known side because में it was a Spectre, no wall bangs there.
but the Lear came in support for the team. Of course, Boom answered perfectly with the way that they held around Art Famous up on top of the boxes. But it's such a good angle, such a good position from Juicy when he can make it work. Be over on the B side of this map. They also set up Darien way up on B with that Guardian. Now, Blaze King suspects this. Double controller. No, I'm not dealing with that. I just want to deny information away from you. Boom Esports, they will regroup. Now they're continuing to Severine on the other side as well. So they're not giving up on either side just yet. Darren is on the Guardian too. Maybe not really giving it up, but they are still here. It's creeping forward. And the Altorp looking to be denied, but Famous. Ooh. Yeah, clean shot from Famous. And Darren, he just wanted to take one extra step off of that tailwind. Couldn't get there in time. Now with that pressure, Boom, they want to try to rotate back over, but Bleed has a decent read on this, right? They don't get shaken up on that entry kill. They say, okay, just hold your ground. Let's just leave Crazy Guy on his own over by B. You've still got that turret. We still have control of mid. Now here comes the Reckoning, though, so the site will have to be given up. Bleed, they're going to have to wait their turn. Sprays. Maybe it catches someone, maybe it doesn't, but the tags up are good. Yeah, Famous quite low. Sure, also, okay, Famous eventually gets finished, and now the Odin's gonna start to shine. Spike not quite planted, it actually gets dropped. Only 15 seconds on the clock, it's counting down towards the 10. And Berserks, he has picked it back up, but he is not safe. Blaze King has to protect him. Berserks will get the kill. 6 seconds on the clock. Blaze King, he's just watching for the beat. No! The spike will not get planted, and an instant double kill from Bleed as they get their 6th round win. Such an unbelievable hold. You mentioned how they weren't shaken up, Will. And they definitely weren't scary, just holding down that one spot. And then, of course, Neff hopping up on top as well, snapping onto him. Juicy, and there's one pick of position, it brings so much value to the team. And think about those sprays. Yes, kind of worked off of an assumption that they would safely be able to make their way through onto the site. Yeah. Guessed wrong. For me, I guess कौन Phantom का head variant और Reaver Vandal का glitch pop के साथ सबसे अच्छा लगता है राइट बॉडी Black Reaver के साथ और कभी देखियो this map on Pearl now. Darker को देखा A little bit of early aggression, but that alarm bot will get the information. However, we should point out, Neff's not really in a position to capitalize. वो मैं देख रहा हूँ जो तू देख रहा है मगर gives up mid. Now just gonna have to worry about the potential flank. Juicy. Oh, he tries to dodge the blade. Oh my god. Reset. Tries to buy enough time, but Neff is there to support. Double kills for both Neff and Scary. हक दिया. The aggression is shut down, and once again, it's all Blaze King left alone. वो round अगर तूने वाला round miss किया है, जिसको फोड़ के निकाला Scary और मेरी हाँ थोड़ा बॉडी पेन हो रहा था तो मैं आज स्ट्रीम भी नहीं कर रहा नहीं तो तेरे साथ ही कर लेता. He's good at that. एक वाला जो सीन था ना, एक could have almost 1v5 में बचा था, 1v4 में, मॉली से खिलाया, फिर 2 1v1 निकाल दिए, चिकल पी, लास्ट में आखिरी बंदा 5 HP और डिफ्यूज पता है कितने पे हुआ, 1 सेकंड. But yeah, your first, oh, Crazy Guy, he tried to wait, but the juggle was too fast from Blaze King. Scary says, don't worry, it's okay. Darren will pick up the Odin free, he only had a judge, not a big deal. Starting to become a comeback. 4 rounds won in this second half for Bleed. But if you think about it, a lot of these rounds come through because of A hits coming out from Boom Esports. And so many times you see Juicy and the rest of the squad, especially with Scary, with his Sky Smokes at the ready, all the way from the back of the site. It works out great. But the one round where Boom actually won was when they had that mid presence, pull Neff away, and then pull the rotation over back onto the A site. And then that's when Juicy is isolated. Yeah, they got to remember that. Yeah, they have to force the shuffle away from the defender's side. And it sounds like that's what you're trying to get at here, Quack, that they need to force them to shift their weight. However, we should also know that Bleed's been pretty good about not getting flustered too early, right? They still are able to keep those positions. They say, especially on A side, the idea is simply hold on to bunker. Just keep Juicy or, you know, someone else there, just safe and sound, just stay alive, and then we'll rotate through flowers. As long as the site is not given over, we can always go for a fast retake. It's worked out well for them. See if Boom Esports has recognized that. रेस्ट ले लो ना 5 मिनट. Starting to roll through here.
Support for that last shining star of Thailand. Scary. Hello, welcome. I mean, his presence has been felt throughout the entire series. First on Lotus, right now, top fragging for his team. Yeah, and he has that orbital strike once again, so another opportunity for him. The operator being bought out by Scary as well for Darian. So Darian now set up. We're gonna have Crazy Guy help support him get into a good position, the deep recon bolt, and that means Darian, he's not only waiting for the push from B-Long, but he says, if you even dare to peek, I will get the kill. Very tiny gap that allows Boom to actually sneak on through the connector. Yeah, takes out that turret, so that kind of forces Crazy Guy to say, okay, I gotta calm down. We don't know how deep they've gotten. Now, Boom, you have to realize that if you've pushed in this far and you haven't gotten contact on that Killjoy, that it's always just been the turret alone, that they have to worry about the flank. But guess what? It's an alarm bot in sewers this time. They're not worried, and so they say, let's go back potentially to that one area we haven't poked at this round. B-Long. Oh no. Are they ready? Do they understand that this could happen? They saw the deep recon bolt earlier coming out. I've got your trail. They and should, it's going to be the Seekers used right away, but they quite don't know yet. But the Cascade just for safety, and Darian says, okay, I gotta get out of here. I have too much distance to cover on the exit. He's good for one. Does he peek out for another? Oh, a nice hide into Cubby. Do they expect it? No! He gets a second one as well. Off drop, but Crazy Guy is able to shut down the site. Blaze King finds where the origins of the Tracers are. Oh, the orbital strike, it's gonna deny the plant. That means you have to hold on the Viper's Pit as well, and now gets used more so as a smoke, but Neff already inside with the shorty. Oh, and Shiro was even trying to prepare for it, but it's not enough. One shot from the shorty and Scary from behind. Bleed. They're making another comeback. They want to run it all the way back to the third map of Haven. And that is a map that, although they haven't really shown throughout Ascension Pacific, they were great in MYSG Challengers. I mean, this is a perfect setup. You have Darian landing his shots. Yes, Boom were aware of it, but they weren't quite prepared for it to be an operator. At the same time, Crazy Guy's Odin, he's been holding on to that for the past, I don't know, 4 rounds now. Well, Saboom says, okay, let's go back to Hello, welcome. but it hasn't looked good so far. Only one round in the second half for Boom Esports. But let's see if they can even at least get close into the site. Of course, a couple stingers in hand, as well as the economy does not sit too healthy for Boom. High Tide comes out. Oh, no tag on the guiding light, and Juicy's able to heal back up, but the Leer isn't gonna do, oh, actually it's gonna do enough good, because Scary will capitalize on it, even though Juicy goes down. Once again, backside not entirely in Boom's control. Neff is just waiting for the waves to go down. Blaze King once again all alone. Spike in hand though, 50 seconds. There's enough time to play some mind games, to draw out some 1v1s. Tries to sneak by, he gets tagged by the shock bolt. He's trying to spray through the wall, trying to draw out at least one of these members. And he can't do it. Darren at full health, peeks out aggressively. Gets the kill. 1 round difference. We saw this before, Will. It happened on Lotus. It's happening again. 4 rounds in a row so far for Bleed. And although they just spent their ultimates, it's starting to cycle back up again. The crowd is loving this. Boom, on the other hand, you know, they tried that B-side approach. It has been stopped by just a couple of players. Darian, Crazy Guy. Every time they go back towards A, it's Juicy, it's Scary, it's Neff. They haven't found an answer to this apart from that 1 round. We should know, 2 points away for Shiro from his reckoning. Do they try to go for double orbs or even just an orb and a plant if they can manage to do so? But the plant themselves have not been clean for Boom Esports. We have to recognize that. The default continue to be the same for Bleed as Neff holds on to mid. Just the alarm bot on the turret is just for there for info. It's not there for contact. And Boom, they have to clear it early, but they also have to keep control of this area if they want to capitalize on this setup from Bleed. That's why they're just sending Blaze King in. Eliminate some of that info gathering tool.
Okay, waiting on a bit of a longer timing, but I mean, just oh man, the discipline from Bleed is so good. They still waited. Juicy once again, same spot, same story, deja vu, kill into Lear, backup arrives, Neff just sprays it down, and we're not gonna see the spike planted. The reload has to come through at the worst timing for Berserk. Neff pops out as well, Severine, his shoes have all been melted, down to 2 HP. The story not quite stranded in the side, but Boom Esports only 30 seconds. The spikes in A main, it cannot rotate. And even if they did, they would have to walk across the scopes of Darien over on by B. This has to be a save from Boom Esports. The stakes are that high, yes. Economy not looking great. The river has run dry now for Boom. So the save has to be the option. And Bleed once more, they question them. They question Boom, and there's no answer, Will. They tried to send their forces through, but Juicy, being such a pesky thorn, just hiding inside of dugout, repeatedly every single round. They have yet to eliminate him. The Nanoswarm was in a tent, but he still lands a shot anyway. Yeah, and this time, of course, because of the Nanoswarm, he actually peeks out further ahead. And that's what throws him off, right? Famous was trying to clear backside first before he turns his head. But maybe, Boom Esports didn't quite think that through, and the fact that the Nanoswarm would push him out earlier, and Famous a little bit too far forward on that timing. Either way, they don't have much time to discuss what's going on, because you got to jump right into the next round. Shiro is 1 point away from his ultimate. Maybe they pick up that ult, or maybe they use that to execute onto the B side, but Darien has his operator still. Yeah. Oh my. Well, maybe you don't need it if you just turn on the blender as they try to cross forward towards that ult orb. But this is exactly what you mentioned, Quack. Bleed thinking the same thing. There's very large likelihood that they go for the orb. And they're pushing out of A main as well. They know where they're positioned, but such a shot from Shiro. And you don't need to pick up an ult orb if you get a kill. Yeah, I mean, the timing's amazing. The Cloudburst flies forward and Shiro gets the kill. Now Juicy, he's already coming through, but Severine, oh no, he cannot win it. And this means Juicy free to continue pushing forward. And they realize the entry hasn't happened into B, so Scary, he hangs back. Just trying to buy time, just trying to listen for information. But the smoke. I don't like this. Yeah, I mean, they have to spend so much time to even, they go in double, that's great. But now you have to come in into top mid. And you can only come in one by one. That's 1, 2, and the third, Scary! 3 headshots in a row, 4 kills for the round. Puts Bleed in the lead for the first time here on Pearl. I've seen it one too many times. It's in these specific moments. You have Scary and his smoke, and when he's left undetected, he comes out huge. He haunts your nightmares. Man, and just the angle he holds, right? That narrow entry point, they have to come in one by one. And they did their best. The second member, I believe it was Berserk, he tries to swing wide. Tried to trade. Yeah, but even that, Scary just says, well, I'm not spraying. All I need is headshots. And a desperate timeout comes out from Boom. They do not, this time, they don't want to let it get to map point. But I can't imagine that their economy is in a great place. Definitely isn't. The crowd loving this. Huge tie flag waving out around. I mean, you would think there's a tie team on stage, but no, it's all for Scary and Bleed, right? It's all for him and his teammates. The last hope here in Ascension Pacific to gain a little bit more tie representation potentially in VCT Pacific. But let's be honest, Scary, it's not just Thai fans that are cheering for him. People have been starving to see him once again on the big stages. Ever since he was up with Sersha last year, now that team kind of being picked up by Talent Esports, surely, Scary is one of those guys who would love to rejoin, but on the opposite side. Still though, back to the game. It is now Bleed in that lead by 1 round. 6 rounds won from past 6 rounds, and they've managed to put up walls everywhere. Will, it's Darien again and his operator. Okay, but the Cascade pushes him out. They get the tags on the recon as well. Darien, he just wants 1 kill. He gets it, and he's able to tailwind and updraft that. And Crazy Guys there for the extra kill. They finally clear out backside. They take down the Odin.
but that just means Scary's already arrived. The operator's watching B-Link. Blaze King tries to find the timing. He cannot. Only 2 members left alive for Boom, and they are quite frankly stranded in B-Long. They have no information from the middle of the map. The pop flash doesn't tag anybody. Severine creeps forward, but they know they still have so many angles they haven't cleared. Severine, he's trying to check for his teammates, and his crosshairs were shaken up as Scary peeks out for a clean headshot. Berserks, he wants the 1v1s, but Bleed's not giving it to him. Another Sky Smoke comes down, and I mean, if you walk backwards, Neff's waiting for you. Only 40 seconds left on the clock. I mean, that's exactly what Berserks is doing. He's just trying to keep calm. There's not too many options, right? I mean, you just have to wait for these 1v1s. There's no way you just walk into your death. And quite frankly, Berserk's probably thinking worst case, I guess I'm saving because we don't have credits. But it looks like it's going to be an over under Darion with another headshot from his operator. Map point for Bleed, one step away from extending this match into map 3 of Haven. And with all of those wins too, Will, it is now a Boom Esports with a crumpled economy, light shields, maybe some budget rifles. That's the best they can hope for. You got the Bulldog being bought up, and then the ultimates on the side of Bleed Esports once again. Everything standing in the way with Boom. Hey, welcome. किधर गया करो? अभी आया तो तेरे भाई ने पूछा. He's got that lockdown. Shiro's got that regulation. They need to make it happen now. I mean, the operator's showing up again. They're trying to play Mavis in deep, but they don't find him right away. Darion gets the kill on the kill. Semi-final है क्या? Semi-final BO3 का है. With a quick trade. As well, it will be used to bleed. Semi-final भी BO5 ही चाहिए. तो बड़ा टूर्नामेंट ही है ना यहाँ क्वालिफायर्स है ना ये kind of. On the other side of the तो map, क्या हो गया है? he's lurking. He's trying to find another kill because they haven't quite planted the spike just yet. नहीं उठा रहा Crazy guy takes down Famous, and Blaze King, he thinks A side is clear. He's trying to come for support. Juicy will be able to get behind him at some point. Oh, a little bit of a twist of fate as Nev hides behind the high tide. Finds the kill. Once again, 2 members only left alive for Boom. It's all up to Blaze King, quite frankly. Shiro, he's at half health. He's trying to find a timing. He can't get the kill. He's just trying to stay alive until Blaze comes to support him. He's waiting for Crazy Guy, but Crazy Guy just sprays as he runs around the corner. They now know where Blaze is. And ladies and gentlemen, we are going to a map 3 as Bleed keep their hopes alive for a shot to get to the grand finals and ascend from challengers to nicely down the They keep their dreams alive. A bit of a stare. Last game 8-4 था. Last game 8-4 से होती है और ये game 9-3 से The heralded story continues. I mean, just thinking about it, that final round, the way that they've been playing, that Odin, that operator from Darion, he pulls out the plays at the last moment too. It's just a little bit too slow to react. Boom Esports, they lose their grip. Again, it's little things like that, right? Bringing out the blades. You've been pushing out with the op and then always backing off. And this time you say, no, I'm going to continue to press the issue. Go for that kill. I mean, we've seen some crazy teams do it before, always to great success, and Bleed will continue that trend. And they say, you know, it's not as clean as it used to be, but this composition with the Reign of the Duelist, it's still got legs. It still carries us forward to try to get to a map 3 in this single elimination best of 3. I mean, maybe not on the attacking side, which was ended in a 9-3, but on the defensive half, oh my God, Bleed, with the way that they control the map, with the way that they put up roadblocks everywhere, it was just that much more difficult for Boom. And you have to think, just feeling, being able to smell victory right on the other side. You almost reached it. It injects adrenaline, cortisol into your veins, and these guys are starting to shake. They're starting to let their nerves get to them. Boom, it comes down to the final map, Bleed as well. And that's all that stands between them and that grand finals spot. Yeah, and this is a map that both of them fairly confident in. Of course, I mean, also a map that's been around since the very beginning of Valorant, so everyone's quite used to it. Curious to see how that pans out, but I'm just impressed at what's going on here in this venue, right? We're past 10 p.m. The crowd is still all here packing the venue because we still have another map to go. Ladies and gentlemen, before we get to that, we do have Komodo standing by to break down Pearl, and then we'll see you on Haven.
Oh boy, what a finishing that one was. And it kind of softens the round I'm about to show you all at home just a little bit for Bleed. We'll get started right in towards this one. It is, in fact, going to be round at number 6 early on. We already do see a opening kill actually in this round with Darion losing his life over towards R. But what I want to more so highlight is how the retake plays out for Boom and how close this round shouldn't have actually gotten. So what we're going to see is eventually a lockdown placed over at the top of tower. But more importantly, it's what time and impact these two nano swarms and the alarm bot, I guess you could argue as well, actually pose on this round when you combine them with the toxic screen that cuts across the site. So what I'm going to do is zoom on out and play for just a little bit whilst we wait for Bleed to get on into the site. So all of the back halls are going to be cleared out by a dart that was thrown earlier on, but here is where I want to highlight that utility. So with this Nano Swarm going up and this one going up as well, it's actually going to buy time for Boom to get in and capitalize on the time that this lockdown does provide. Neff is going to have to wait for this Nano Swarm time to expire, and with this wall going up as well, it's actually going to play a little bit of decay on towards Juicy as he intends to cross back over to a little bit of safety. A split second longer and he would have actually lost his life to this Nano Swarm. So I'm going to clear this and I'm going to play and keep an eye on this. So there's Juicy in the Nano Swarm, he takes the decay, and he's actually taken down with that to 2 points of health. Meanwhile, the plant still goes down for Scary, and that Nano Swarm that I highlighted a little bit earlier here over in the corner is the one that actually has to get weighted out by Neff. So with that time, as Bleed starts to fall on back, there's the drop down by Severine. And one of the biggest things that Bleed would have been hoping for in this part of the round is their post-plant utility, because if they can get behind that toxic screen, avoid the reckoning that's about to come, they'd be able to use the incendiary, the nano swarms, and the shock darts in this post-plant, but they're not able to. With this kill that Severine gets on Neff, that eliminates one of those, and here is the reckoning. Now keep an eye on the circles that come on up, because with the tap on the spike, Crazy Guy wants to use these shock darts to be able to get it, but his position is actually revealed whilst he's blinded there by that guiding light. And with the shock dart going through the wall, he gets taken out. So now we're in a 2 versus 5 situation. This should never go the way of Bleed whatsoever. And what I want to highlight here is the incendiary that Scary's about to throw in the picture-in-picture is actually going to cordon off majority of the spike when it gets on to the 1 versus 4. So I'll play this one here, and you can just see there's the incendiary. Now this is the 1 versus 4. This is where this round should not go the way of Boom, but it comes down to Scary. And unfortunately for Blaze King, he walks into that incendiary. Bit of a blunder there, he dies. The shots are going to come out from Scary here to make everything extremely close in the round. Should never have happened. He will indeed tag Famous down to 5 points of health in these Jiggle Peaks. But my oh my, the round that got away from Bleed, they still get the victory in the end on this one. There's that. Thanks once again for joining me here on the breakdown. Now we have another map to get to see where this series is going to close out. Who's going to get into that grand final? We're going to go to a break first, of course. See you soon.
Welcome back to VCT Ascension Pacific. We just completed map 2 on Pearl, and by golly, I thought we were gonna go into another overtime at the pace that we were going at. Now that was an incredible game. That first half, it really looked like Boom was gonna take it home. We had incredible fragging power by Berserk's, Blaze King, and Famous, but I'm sure there's much more to it. And again, we're gonna go to our analysts or experts. Guys, what happened in that first half? With Boom, with Bleed, rather. This was their map pick. We know they do so well on Pearl, but something was going wrong. Scary was left standing alone many times. Everybody seemed really off in the first half from the side of Bleed. We were seeing some uncharacteristic misses. Scary, he was still putting up decent numbers for the team comparatively, but in the grand scheme of things, even that was a bit of a weaker performance for him. Yeah. But then as soon as they got over onto that defending side, they just had an absolute chokehold on the map. Yeah, there were a lot of really good moments, like Severine's Killjoy is doing a great job. The Viper, like a lot of those vulnerables were actually really impactful with that utility from the side of Boom. But Bleed, man, like once they get over that defending side, they were just incredible. And frankly, a lot of it to me comes down to the op of Darion and the Odin of Crazy Guy. Like the op of Darion, he's doing a really good job with his awareness, keeping himself alive for the most part, except for round 3 when he bought an op and died in the site. But anyway, other than that one tilted me a bit. But other than that, they were great. And again, I think Crazy Guy here showing really why that Odin is such a great investment against the Harbor. You're able to spam through those smokes, you're able to spam through the coves, all these things. So really putting that gun to great use was Crazy Guy. Yeah, I mean, time and time again, you see the pushes coming out of B, out over at B main, and then he's just spamming away, and then come running right into it, headshot, gets a catch onto somebody like Famous, and after that, Boom just don't really know what to do. They lose that entry power. They're running just the jet here for the entries. And it all just comes falling apart. We see time and time again, they're drifting towards the opposite side of the map, but then it's like, oh no, at the end we have to just go back over to B. And it just felt like there was so much miscommunication happening back and forth in every single round here on this attacking half. I mean, they get one attacking round in that second half. That's it. They win the bonus, and then they lose everything else. It's 8 consecutive for Bleed to just go ahead and take the map 13-10. A huge run back for him, and I think that Boom, I'm concerned that as we get ready to go into Haven, a map that Bleed has not shown yet at this tournament, I'm concerned that Boom has boomed themselves. I think that after you have a map to get away from you like that, where you have that 9-3, and you can only put up a single round win in the second half, that could shatter you moving forward. Do you agree with that, Paper Thin? Yeah, absolutely. I mean, even though Boom was really good hello, तुम लोग ट्रैक किए क्या मुझे वहाँ पे स्लिपा का मैसेज आया तू कहाँ चला गया? Since May 26th from the side of Bleed. So really no idea if they're going to run their normal comp, which is typically the exact same comp that Boom runs, which is the the Sova Jet Killjoy, literally the same thing everybody runs. Omen instead of Astra is like the one thing that sometimes people change. So if it is going to be the same comp, sure, but you don't know exactly how they want to approach the map. With what their ideas are, which sites they're going to be leaning towards, those kind of things. Yeah, you don't have tape on this, so it's really hard to judge whether or not Boom have cooked up something. Have they been hiding this map for a reason and not really, picking into it and not, wanting to go to it? Or are they going to be running the same thing? So I'm also curious in the same regard. I want to see if they have something a little bit different. We have seen some experimentation on Haven. We've seen people, bringing out Viper Harbors as well. So I'm curious if they do have something like that in their back pocket that they can pull out here at a moment's notice now that they get into this third map situation. But this is going to be a big test, a big testament to Boom's mentality if they're able to come back after dropping that Pearl, because we were talking about it, how this has been such a staple map, 91% win rate going into that one right there for Bleed. They managed to bring it back. Boom, can they persevere? Can they turn this around? Yeah, I mean, Bleed, you got to feel like they've got pretty good presence of mind here. So, mirror comps. Yeah, it is the mirror comp. So nothing out of the ordinary here in terms of the compositions. Boom just really, really solid on this map yesterday, just really pushing the pace. I mean, it was go, go, go for Boom, and they had bonkers on the ropes the entire time. So I don't know if you're going to be able to get that momentum, get that confidence against Bleed. Maybe in the first half, because that seems to be the way that these maps are going, that Bleed kind of comes out slow and then figures it out once they switch sides, no matter which direction that may be. With Bleed being on the attack side, you would expect them to do some damage here off the rip, but generally teams are pretty... Hello. Hello guys. Chingu Pingu. Hello.
एक घंटे से ओके स्लेयर आ गया वैसे स्लेयर तो आ गया क्लोर नहीं आया तो अपन ट्राई करते हैं क्लोर आया तो देखते हैं स्पाइडर भी इसी में बैठा हुआ है Because anybody there, leave. तो कैसे बंद करते हैं वो तो क्या Yes. Not just that, Darien and Blaze King as well. Darien, you know, secondary duelist. I think on this map, apart from being such a great anchor with the Killjoy utility,